अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे नेशनल बैंक स्टेडियम कराची से, जहां पे एयर सियाल प्रेजेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर प्रेसिडेंट्स वनडे कप टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स का सिलसिला जारी है। आज मुकाबला होगा SNGPL और KRL के दरमियान, लेकिन उन दोनों ही टीम्स के बारे में गुफ्तगू करेंगे, पिच पे जिक्र करेंगे, टॉस का तबसरा करेंगे। लेकिन लेट्स टेक अ क्विक रीकैप ऑफ व्हाट हैपेंड येस्टरडे। आई हैव गॉट द एक्सपर्ट फॉर्मर क्रिकेटर सिकंदर बफ विद मी। सिकंदर, कल हमने देखा पहले सेमीफाइनल में PTV ने एक बड़ी टीम को एक आसानी से शिकस्त दी। बिल्कुल, वो बहुत बहुत बड़ी टीम थी। ऑयल एंड गैस की जो टीम थी वो सबसे अनबीटन थी और इन्होंने पहले भी हरा चुके थे उनको, मगर बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने स्ट्रेटजी के साथ खेले। उन्होंने टॉस जीता था। मैंने पहले ही कहा था कि इस पर पहले बॉलिंग नहीं करें, बैटिंग करें। तो खैर एनीवे आज देखते हैं कि क्या फ़ैसला हुआ है, मगर फ़िलहाल जो यही हुआ तो कल उन्होंने पहले उनको बैटिंग करवाई और उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की। जो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी थी, मैं समझता हूँ कल का जो मैन ऑफ द मैच जो जहांदाद को मिला है, बिल्कुल सही मिला। उस वक्त जब वो बैटिंग करना है, तकरीबन 25, 26, 30 ओवर बाकी थे और को मैं बार बार टीवी पे बैठ के कह रहा था पूरे ओवर खेलें। ये एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम चल रही है इस वक्त नौजवानों के साथ, वो बहुत तेज़ी के साथ खेलना चाहते हैं, तो टाइम लेकर खेलें। और उन्होंने टाइम लेकर खेला, 50 किए और टीम का स्कोर 248 तक पहुंचाया, जिसके जवाब में वो नहीं ठहर सके। उनकी बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त थी। मैंने कहा था कि स्पिनर्स यहाँ पे काम आएंगे। कल फैसल अकरम ने भी बड़ी अच्छी बॉल की। उनको एक ऑफ स्पिनर था, उनका कप्तान क्या नाम था उसका, वो भी उसने भी आदिल अमीन उसने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो ओवरऑल बड़ा अच्छा उनका पैकेज था और सबसे ज़्यादा जो अच्छी बॉलिंग की वो अमाद भट्ट थे, जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त लाइन लेंथ पे स्ट्रेट 10 ओवर्स करा के उन्होंने मैच जिताया। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस थी कल की PTV की टीम की तरफ से, जो वो कल मैच जीते। सिकंदर, अब आज के मैच पे हम एक बार फिर नज़र डालते हैं। KRL का मुकाबला है SNGPL से। SNGPL के अगर हम पहले जिक्र करें, उनके पास तजुर्बा भी बहुत है। शान मसूद उनकी कप्तानी कर रहे हैं, कामरान गुलाम उनके पास मौजूद है, आमिर जमाल भी उनके स्क्वाड का हिस्सा है। और हमने देखा है कि पिछले इस टूर्नामेंट में कुछ मैच, इनफैक्ट पिछले 3 मैचेस अपने इसी ग्राउंड में खेले हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि कंडीशंस का उनको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है? टॉस हो गया है क्या उनको? अभी फैसला होना है? होना है। अच्छा, अभी टॉस नहीं हुआ ना, तो अभी टॉस के बाद देखते हैं वो क्या होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, शान मसूद ने बड़े अच्छे 255 रन किए हुए हैं। उनके उवैस जफ़र भी, उन्होंने भी 244 रन किए हुए हैं। कामरान गुलाम ने 179 रन किए हुए हैं। तो उनकी बैटिंग लाइनअप और साद खान 293। तो ये वो सारे बच्चे हैं जिन्होंने बड़ी हैवी स्कोरिंग की हुई है। बाकी दूसरे उवैस, अजान उवैस, वेरी टैलेंटेड प्लेयर, आजकल उनका बड़ा नाम चल रहा है, बड़े डोमेस्टिक क्रिकेट में वो रन्स करते हैं, उनके भी बड़ा अच्छा यहाँ पे स्कोर है। शहजाद ने भी 126 रन किए हैं। तो ये सारे वो लड़के हैं और उनकी बॉलिंग में भी जो है मुबशिर खान और साजिद खान ने 11 आउट किए हैं। मुबशिर दोनों ऑफ स्पिनर्स हैं। इनके पास फास्ट बॉलर्स में भी शाहनवाज दानी है, इसके पास ना दानी है, उन्होंने भी 7 आउट किए। तो इनके पास बॉलिंग अटैक अच्छा है। तो देखते हैं कि वो टॉस जीत के क्या करेंगे, बैटिंग करेंगे, बॉलिंग करेंगे। मेरी एडवाइस तो ये होगी कि वो कोशिश करें कि पहले बैटिंग करें, इसलिए कि यहाँ पे अगर अच्छा आप स्कोर कर देते हैं तो बाद में स्पिनर्स वगैरह, उनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं तो बाद में बहुत तंग कर सकते हैं वो। सिकंदर, अब दूसरी तरफ अगर हम KRL की टीम का जिक्र करें, तो पिछला मुकाबला जब हुआ था दोनों टीम्स के दरमियान 140 का हदफ दिया था, 141 का SNGPL ने, और सिर्फ 40 रन पे ढेर हो गई थी। SNGPL की शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। लेकिन KRL के टॉप ऑर्डर का हम जिक्र करें, 7 बैग इनके पास हैं। शाहजेब खान काफ़ी अच्छी फॉर्म में और इफ्तिखार अहमद, जिनके पास भरपूर तजुर्बा है, उन्होंने बॉलिंग और बैटिंग दोनों से मुतासर किया है इस टूर्नामेंट में। इनकी टीम भी तगड़ी लगती है। जो आप 40 रन का जो जिक्र कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि प्लेइंग कंडीशंस क्या थे, टर्निंग विकेट थी, बारिश हुई थी, पिच गीला था, क्या हुआ था। मैं इसलिए कि जब तक आप वहाँ मौजूद ना हो, अपनी आंखों से ना देखें, तो यू कैन नॉट कमेंट अबाउट इट। इनके पास भी बड़ी ज़बरदस्त है। शाहजेब खान है ये, जिन्होंने इंडिया के खिलाफ पहले 150 रन किए थे, आज ये भूल गए। इस दफ़ा कौन, समीर मिन्हास था ना, जिसने कि आई होप कि उनको भी ना भुलाया जाए। अभी तक तो बड़ी फूफा हो रही है, उनकी बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं, मगर शाहजेब खान वही लड़का था जिसने वहाँ पे किए। तो उसके 422 रन है। इफ्तिखार अहमद बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, 210 उनके रन हैं। 7 बेग इस वक्त अपकमिंग स्टार हैं। इन्होंने हाईएस्ट रन्स किए हैं क़ायद आज़म ट्रॉफी में, उनके 211 रन हैं। तो इनके पास भी बड़ी टीम ज़बरदस्त किस्म की। सुफियान मुकीम ने सबसे ज़्यादा आउट किए हुए इनके पास, जो कि 17 विकेटें उनके पास हैं। अरशद इकबाल भी हैं इनके पास। इफ्तिखार अहमद खुद ने 12 आउट किए हुए और साकिब खान, इनके पास बॉलिंग अटैक भी बड़ा अच्छा है। तो देखते हैं कि टॉस जीत के वो क्या करते हैं, तो फिर हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए सिकंदर, गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे। पहले चलते हैं खुर्रम मंजूर की तरफ, जो कि मौजूद थे पिच पे, और देखते हैं उनकी नज़र में आज की पिच कैसा बिहेव करती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं खुर्रम मंजूर खान, और जहां मुझे खड़ा देख रहे हैं, इस पिच के ऊपर दूसरा सेमीफाइनल होने लगा है, KRL वर्सेस SNGPL। दोनों बड़ी टीमें हैं, बेहतरीन मैच की उम्मीद है। और जिस पिच पे होगा, आइए हम देखते हैं कि पिच कैसा खेलेगा पूरे मैच में। दिखने में तो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है और ड्राई पिच लग रहा है। और जिस तरह का ये पिच में मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा लो बाउंस पिच होगा और पहले बैटिंग में
एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि दूसरी बारी में जब रोल होगा और 50 ओवर हो चुके होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि दूसरी बारी में शायद थोड़ा सा और लो बाउंस हो। तो बाज़ाहिर दिखने में बड़ा अच्छा ड्राई विकेट है और थ्रू द लाइन शॉट्स लगेंगे। जिस तरह का कल मैच था उसमें ड्राइव इतने इजीली नहीं लग रहे थे, तो आज जिस तरह का पिच है, हाई स्कोरिंग गेम की उम्मीद है। और मैं एक्सपेक्ट भी करता हूँ, क्योंकि मैं खुद बैट्समैन रहा हूँ, कि हाई स्कोरिंग गेम हो और सब इंटरटेन हो। थैंक यू। तो आपने पिच की सूरत हाल जानी खुर्रम मंजूर से। अब देखते हैं व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द टॉस। Assalamu alaikum and welcome once again from National Bank Stadium here in Karachi. It's time for the box office end of the tournament. We are talking about AirSeal presents the University of Lahore President's Cup one-day tournament. The second semi-final, and we are all set for the toss where KRL are going to take on SNGPL. I've got the KRL skipper, Iftikhar Ahmed, with me. Shan Masood will be leading SNGPL and our match referee, Mr. Ali Naqvi. Iftikhar, I believe you're going to flip the coin? Heads. Heads was the call. And that's a head. So Shan Masood winning the toss. Shan, टॉस जीते हैं, क्या करना चाहेंगे? बॉलिंग करेंगे। शान, आपकी टीम के पास काफ़ी तजुर्बा है, ख़ास तौर पे इस टूर्नामेंट का जिक्र करें, 3 मैचेस खेलते हुए आ रहे हैं, तो कैसा देखते हैं आज की पिच को? देखें, आई थिंक आज की पिच, इसके एडवांटेजेस पहली बैटिंग के भी हैं, पहली बॉलिंग के भी हैं, लेकिन कभी कभार अच्छा होता है कि आपको पता होता है कि आप चेस कर रहे हो, किन कंडीशंस में आप चेस कर रहे हो, तो वो आपको अलाउ करता है 50 ओवर के बाद सिचुएशन असेस करना, क्योंकि एक नॉकआउट गेम है ये। सारे डिपार्टमेंट में आपकी टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, टॉप ऑर्डर में रन्स कर रहे हैं, स्पिनर्स विकेट ले रहे हैं, तो किस हिकमत अमली के साथ जाएंगे? देखिए, आई थिंक स्टैंडर्ड बहुत अच्छा रहा है इस टूर्नामेंट का। आई थिंक सारी टीमें बहुत अच्छा खेली हैं। अगर आप नई टीम भी देखें, साहिर की, उन्होंने भी बहुत अच्छा एक टूर्नामेंट खेला है। तो इधर आप किसी को भी, हम एक टॉप की टीम से खेल रहे हैं, उसी टीम से खेल रहे हैं जो हमारे बराबर है, बट हमारी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, हर डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रीब्यूशंस आई हैं, और हमारा यही मैसेज है कि हमें बहुत बड़ी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज नहीं चाहिए, हमें कॉन्ट्रीब्यूशंस चाहिए जो मैच जिताएं। शान, आई नो दैट यू हैव गॉट अ वेरी गुड मेमोरी। आज क्या चेंजेस किए प्लेइंग 11 में? कोई चेंज नहीं किया, इसलिए अच्छी मेमोरी है। ऑल द बेस्ट शान। इफ्तिखार, आप टॉस नहीं जीते, लेकिन क्या करते अगर टॉस जीते? जी, हम टॉस जीत के हमने बैटिंग करनी थी, क्योंकि विकेट बहुत ड्राई है, और हम यही सोच है कि हम टारगेट दें, क्योंकि बाद में थोड़ा हल्का सीम स्विंग हो रहा है, तो अंडर लाइटिंग थोड़ा मेरे ख्याल में मुश्किल हो जाता है। इफ्तिखार, आपकी भी फॉर्म काफ़ी अच्छी है, बैटिंग का जिक्र करें या बॉलिंग का जिक्र करें, और टॉप ऑर्डर में आपके बैटर्स रन बना रहे हैं, स्पिन डिपार्टमेंट आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो पिच को देखते हुए क्या लगेगा कि किस टोटल को हासिल करने में कामयाब होगी आपकी टीम? जी, जिस तरह हमारा टीम परफॉर्म कर रही है, ऊपर से लेके नीचे तक, फिर हमारी स्पिन, और जिस तरह अर्शद इकबाल बॉलिंग कर रहा है, अहमद बशीर बॉलिंग कर रहा है, तो मेरे ख्याल में हमारी टीम बिल्कुल बैलेंस है, और हम कोशिश करेंगे 300 प्लस रन्स करें और इसको डिफेंड करें। इफ्तिखार, आखिरी और मुश्किल सवाल, क्या चेंज किया आज प्लेइंग 11 में? नहीं, सेम टीम है, क्योंकि आप सेमी फाइनल और फाइनल एक ऐसा स्टेज होता है, वहाँ पे चेंजेस मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं होती। जिस कम्बिनेशन के साथ आप जीतते आ रहे हो, तो उसी कम्बिनेशन के साथ खेलना चाहिए। ऑल द बेस्ट इफ्तिखार फॉर टुडेस गेम। थैंक यू सर, थैंक यू। So that's the news from the center. The SNGPL skipper Shan Masood winning the toss and choosing to bowl first in the second semi-final. Alright, तो आपने सुना पिच कैसा बिहेव करेगी, टॉस में क्या हुआ। सबसे पहले पिच का जिक्र करते हैं। सिकंदर खुर्रम मौजूद थे पिच पे, और उनके मुताबिक थोड़ा सा ड्राई पिच है, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी रन्स मौजूद हैं आज की पिच पे। देखें, मुझे तो वैसी लगी, मैंने खुद जाके पिच देखी है, वैसी जैसे कि कल थी। मैं हल्का सा थोड़ा सा मॉइस्चर नज़र आया, तो मैं हैरान हूँ। खैर, हैरान नहीं, वो उनकी चॉइस है। शान मसूद इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस कैप्टन, और कल मैंने ये कहा था कि पहले बैटिंग करें, कामयाब होंगे, तो वो मेरी बात सही थी। जिन्होंने बैटिंग की वो कामयाब हो गए। आज भी मैं समझता हूँ कि पहले बैटिंग होनी चाहिए, मगर हर कोच का, हर कप्तान का अपना एक आइडिया होता है, अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, तो उनके हिसाब से उन्होंने पहले फील्डिंग की है। लेट्स सी कि उनका ये फैसला कितना कामयाब होता है, मगर मेरे हिसाब से पिच वैसी ही है। ब्रेक ज़रूर लेगा आखिरी के अंदर, जो स्पिनर्स होंगे दूसरी तरफ के, वो उनको ज़रूर तंग करेंगे। और सिकंदर, आज टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया है शान मसूद ने, तो देखते हैं कि शान मसूद कितने टोटल तक रिस्क करने में कामयाब होगी आज केआरएल की टीम को इस सेकंड सेमीफाइनल में। एंड वी आर होपिंग दैट वी गेट एन एक्साइटिंग मैच टू वॉच बिटवीन एसएनजीपीएल एंड केआरएल टुडे। Umpires making their way to the centre for the second semi-final.
Let's have a look at the teams. KRL, Waqar Ahmed at the top with Shazib Khan, Iftikhar Ahmed, Sarmad Bhatti, Saad Beg, Hamza Nazar, Sufyan Bukim, Ahmed Hassan, Arshid Iqbal, Ahmed Bashir, Sayyid Aqib Shah. And SNGPL, Shan Masood, Hasibullah, Kamran Ghulam, Umair bin Yusuf, Saad Khan, Muhammad Shehzad, Awais Zafar, Sajid Khan, Shahnawaz Dani, Attar Mahmood and Muhammad Salman. SNGPL won the toss and have opted to bowl here at National Bank Stadium. So Saad Beg will open, left-handed batter in superb form in the Qaid-e-Azam Trophy. And at the non-striker's end, we have Shazib Khan, also a left-handed batter. Both young, talented players. And Shahnawaz Dani will take the new ball for SNGPL, right arm, medium fast bowler. Will be steaming in here at National Bank Stadium for the second semi-final. PTV awaits the winner of this. Faisal Afridi, one of the on-field umpires. Play is the call. Good start by Shahnawaz Dani. Playing a miss there from Saad Beg. And I say good afternoon to Ayman Anwar. Yeah, especially after they won the toss. Captain will be looking for them to start well in this first 10 overs of this second semi-final. On the money again, Shahnawaz Dani. He started very well here for his team. A bit fuller on that occasion. Well dug out by Saad Beg. Well struck through the infield. Looks like it might go all the way to the fence for the first boundary of the second semi-final. Saad Beg drives on the up, just in front of square. And he'll be feeling much better for that. That will settle the nerves in this semi-final encounter. Back again.
Batters will get through for a quick single. Good start by Saad Beg. He moves on to 5. Certainly good channel setting by Shahnawaz Dani, but on the other hand, Saad Beg has been vigilant of this new ball. He has done supremely well in the Quaid-e-Azam Trophy. Got the boundary of his first over and then rotated a strike with that 1 run, and we saw some misfield here at the cover position. There you go, you don't want to see those in the ring. Second on-field umpire, Abdul Muqeet. Good finish to the over there by Shahnawaz Dani. KRL 5 without loss. Oh, we still have 1 ball left. Thank you for reminding me, Eamon. Lovely view from the National Bank Stadium, Karachi. Surely one of the most good-looking stadiums in Karachi, the National Bank Stadium. Maybe in the world as well, Eamon. And a good finish to the over for Shahnawaz Dani. Steady start also for KRL. 5 without loss after 1 over. Eamon, nice to have you in the commentary box with us. Same here, Qasim. Wonderful being here once again in the comm box with you, and that too in the second semi-final of the President Cup. A very thrilling contest we are about to witness, and we have Mohammad Salman coming in, a right-arm medium-fast bowler for SNGPL. On the onside, well fielded at fine leg. Just the 1 run. That's what you want early doors from your fielders, putting the body on the line, making sure no early errors, and just the single there. Salman kept it short, but it was way down the leg stump. Easy run on his first ball. Have a look at this wonderful fielding at the boundary, saving those 3 runs certainly for his team. That's what you want when you miss your line or length a little bit, but when the fielders support you, it's really helping the bowler to come in and hit those right areas. A little bit of shape there for Mohammad Salman. That's where you want him to bowl early doors, making the batter play, looking to shape the ball back in towards that off stump. It came back into him and he wanted to go after this ball, but it was a very good length. Lucky there, Shahzeb didn't hit it too hard. Worked onto the onside there, but no run. Good start by Mohammad Salman. He's hitting good lengths here, which is going to be crucial, I think, on this wicket. Any width on offer or any sort of over pitching, I think the batters will get full value for their shots. So crucial for SNGPL to hit their areas first up, and Shan Masood, who won the toss, will be wanting to see that from his bowlers.
Yet again on the money there, Mohammed Salman. Really, really good start by him. Not offering any sort of width, bowling a good length. And I welcome Zishan Khalid to the commentary box. Thank you so much, Qasim. Thank you so much, Ayman, for filling in for a few minutes. And yeah, these two batters will be very key for KRL today. They have done the bulk of the scoring for KRL throughout this tournament, talking about Saad Beg and Shahzeb. Saad was in magnificent form during the Qadi-Azam Trophy as well, the only batter who could have gone past 1,000 runs in that tournament. But that just stayed low. Well, we saw what Khurram Manzoor was talking about during the pitch report. The ball might stay low a bit early on, and you can expect that to see more often in the second innings. Now, wicketkeeper might have hurt himself. I think he's holding his wrists. Yeah, that ball did keep a little bit low. Let's have a look here again. Nasty one for the wicketkeeper. Never nice as a wicketkeeper. But he made sure that the ball did not get through, but he seems to have taken a blow in the process. Why would anyone want to be a wicketkeeper, Zishan? Tough job. Absolutely. He got to stand for 50 overs, and then Hasibullah usually bats at the top of the order as well. He's getting some treatment now, and once again that spray. The magic spray. Yeah, coming to the rescue once again. We saw that happening yesterday as well when Mas Sadakat was struck in his left ribs, I guess. And Israr was bowling. Well, what a contest that was. Mas Sadakat going all guns blazing at the other end, and the two fast bowlers trying their best to stop him, and eventually it took a wonderful catch from Israr to get rid of him. Often takes a great catch to get rid of the top players, but don't drop them. That's the key. Yeah, we saw a few catches being put down as well yesterday when they put down Yasir Khan early on. Luckily for them, it didn't cost them a lot. But a decent start this from Salman. If he bowls another dot, it's going to be a maiden. But good field setting. I like this from Shan Masood. He's putting the pressure on the new batter. First slip in place. On the middle stump. Just tucked away towards mid-on. He'll get an easy single to get up the mark, Shahzeb. 2 overs done. It's 7 for no loss. Nicely driven, gets it in the gap, just Shahzeb. That's going to run away for 4. First boundary of the innings. Second boundary of the innings. I'm here, we'll look after each other, Zishan. But that was a beautiful shot. What was really good about that shot was he wasn't quite at all to the pitch of the ball, but it was just the sheer hands. Lovely hands through that ball, allowed the ball to come onto him as far as he could, played it late as possible, and got it just in front of point for a beautifully timed boundary. Yep. Since he's in very good form, that's why he was able to time it well. Otherwise, usually the coaches don't really ask you to play that much away from your body. Down the leg side, flicked away. Fine leg will have no chance of cutting that one. Back-to-back boundaries for Shahzeb. Beautifully worked off the pads. Over pitched by Shahnawaz Dani. Left-handers dream normally. They love to play off their legs, but the timing of Shahzeb on that shot, fine leg, didn't even get to move, and it was all the way to the boundary for 4. And the confidence of both these batters is clear to see in these first couple of overs. If you over-pitch or you give any width, they're going to go after you. Yeah, he's definitely looking for that early movement, Shahnawaz. The first delivery was a little outside the awesome. This time he just overcompensated, and it was going towards the leg side. That was beautifully clipped away by Shahzeb. Good comeback. These two left-handers complement each other very well. Yes, both have already played attractive-looking shots through the offside for boundaries.
So they'll be feeling really confident for that. Any nerves that they had certainly are not showing. Both have settled well at the top of the order. Shan Masood has put them into bat. Will he live to regret that? It looks like a very, very flat pitch. Yeah, we saw that happening yesterday as well when Adil Amin won the toss and chose to bowl first, and we all know what happened. Better delivery. Now he's looking to target the stumps a lot more, and the length is much better. Bit of a fumble down there at third man, but it will be just a run for Shahzeb. Better areas by Shahnawaz Dani. But again, the confidence and the soft hands on that were clear to see as Shahzeb ran it down to third man for one, brings Saad Beg back onto strike, also in fine form. Shahnawaz Dhani, quite a character, loves to run in and loves picking up wickets with the new ball. Another dot. Yeah, I arrived this morning. I was making my way onto the turf just to go out and have a look at the wicket, and Shahnawaz Dani was doing laps at a good pace as well as his warm-up for a big semi-final ahead, so just a sign of his energy. He looked extremely fit, but it's not easy to be a fast bowler. Absolutely, especially talking about these conditions and this weather. Shahnawaz Dhani represented Pakistan as well. We saw him playing for Pakistan in Asia Cup back in 2022. Smashed it. Oh, a bit of a misfield. And that has gone for 4. That was not 4, it was just a little bit of a mishap there. Fielder did make the stop, slight fumble, but did not go for 4. 20 without loss after 3 overs, that was a dot ball. Just a little outside the off stump. Now you compare these two new ball bowlers to Amir and Arshad, whom we saw yesterday bowling for OGDCL. Both had express pace, and Amir was being able to swing the ball both ways, because of which he was able to trouble Shamil and Yasir. Yeah, from already I'm assessing that there was more swing yesterday. I think both bowlers today, Mohammad Salman certainly is looking to hit the pitch. He's quite a tall bowler, so he's looking to try and extract some bounce out of this pitch. Oh, that's a lovely delivery. A bit of an edge and taken. Exactly the sort of start that Shan Masood and SNGPL wanted. And it gets a big fish because Shahzeb has been dismissed. That's a beautiful bit of bowling. Salman has started his second over just as he bowled in the first over, bowling those tight lines and asking the question of the batter. And he has found the outside edge, and KRL have taken their first wicket to break this formidable opening partnership. Let's have another look at this. Front foot is all good. And yeah, just a lovely area. Made the batter play and found the outside edge. Shahzeb Khan goes for 10 off 13 after looking good. Caught Hasibullah, bowled Mohammad Salman. Slightly forward. Yes, one leg.
new batsman is Waqar Ahmed for KRL, right-handed batter, so we'll now have a right-hander and a left-hander at the crease. Yep, it has been a decent tournament for Waqar as well, and he's out a little early than he would have expected, because KRL were expecting Shahzeb and Saad to go big today. Once again, the ball just keeping a little low. These are dangerous signs for the side batting second, Qasim. Yeah, Khura Manzoor spoke to me about this, as he did you as well when we were down at on the ground, and he said that this would be tough to chase on because the ball is going to keep low and it'll only get worse as the game goes on. That's how Shahzeb lost his wicket. Lovely Lionel, and you can't afford to leave that. You have to play at it. And just a little tickle, and Hasibullah knew it straight away. Well, all the pain that he was suffering when he got the blow while looking to stop that ball, that went over as he was jubilant while taking that catch. Well done, the magic spray. Just good lengths again here by Mohammed Salman. Batter plays it towards point for no run. But really impressed with just the consistency he's showing so far. No width, no over pitching, just consistent line and lengths. He's pretty tall, talking about Salman, and we have seen tall fast bowler getting that extra bounce on this track, and he's trying to do the same thing which we saw Arshadullah doing yesterday, hitting the deck hard and that too at good length. A little down towards the leg side, but they have got protection out there in the deep. Yeah, just slightly slanting it in towards the batter's thigh, allowing him to work it away down to fine leg and get himself off the mark in the process. Waqar, always nice to get that first run, settles the nerves, brings Saad Beg back onto strike. Tons of experience talking about SNGPL squad. They've got Kamran Ghulam, they've got Shan Masood, who is scoring runs. He's been scoring runs, Shan Masood, in recent times. Missed a few matches, obviously, for SNGPL, but made sure that he came back strongly. Lovely character, Shan Masood. Yeah, he's a gentleman, always comes across very, very well. Proper cricketer as well. Oh, he smashes that one hard. This time he finds the gap, just Saad Beg, and that will fly away to the boundary for 4. Yeah, that wasn't that bad a ball. It was not that much width offered, but just a sign of the pitch as well. It does when it comes onto the bat. It allows the batters to play through the line, and he picked that length up well. And as you can see, just leant back on it and smashed it just behind square on the offside for a welcome boundary. It's turning out to be a very decent over until that point. So 4 overs done, KRL 21 for 1. Very strong offside feel for Shahnawaz Dhani. Oh, that just once again stayed low a bit. Wanted to cut it, but getting an inside edge on that occasion. Quite a strong offside field SNGPL have opted for. 6-3, so asking the bowler to bowl one side of the wicket. Running it down towards third man now. He has taken a 6-3 offside field, as you mentioned, Qasim, and they haven't really taken a fielder at square leg to the right-hander, at least when Waqar was on strike. Let's see what he's going to do against Saad Beg. And Shahnawaz Dhani, well, we have seen it in the past as well. His seam is very upright when he's delivering that ball, and if you land the ball on the seam, you get some lateral movement of the pitch. Yeah, I think the captain is obviously backing him to keep tight lines on that off stump at the moment and not stray into the pads. Hence the mid wicket and no square leg, because any sort of
Slant into the pads is going to make it very easy for the batters to play it through square leg. Changing his angle now, looking to come around the wicket. Playing it off the back foot, just couldn't get it in the gap. He looks in good touch, Saad Beg. Yeah, Saad Beg, it's clear to see that he's feeling very confident at the crease. Clearly has come into this game with plenty of runs under his belt. You can just see that he's looking for anything on offer, and he's going to go hard at the ball. He's not going to hold back, and seems like he wants to play the ball through the offside. He's already struck a couple of boundaries so far, and he looks like he's searching for more. Definitely fielding restrictions are in place till the 10 overs, so you can expect him to find those gaps and look for those boundaries. Looking to come around the wicket now. Usually when the right arm seamer comes around the wicket, they rely on the ball seaming away from the left-handers, because the angle is usually bringing the ball back in, but if the ball seams away, it becomes a very difficult delivery to negotiate. Well, you just mentioned that Shahnawaz Dani bowls with a very upright seam, looks to hit the seam, so his plans here will be to try and put the ball in a good area, on or just outside off stump, and look to try and hit that seam, attract the batter to go for the drive and look for an edge. I would think that would be his plans. Slightly short, pulls that one away, does Saad Beg. There is no one at square leg, that's going to run away for 4 as well. Yeah, I don't think that was the plan. Short of a length on this pitch, it's just sat up, and Saad Beg is not going to miss out on that. You can just see the confidence that he has. Anything that's going to be offered to him, he's going to take it on, and he was very quick onto that short ball and put it away beautifully well in front of square for 4. That was a good pickup shot from Saad Beg. Not that short, but he picked the length very early on that occasion. That's what you can afford to do when you've got fielding restrictions in place. You know that you're going to be having more gaps, less fielders on the boundary ropes. And as a result of that stroke, now they have made a slight adjustment in the field. Fine leg has been brought in. Deep square leg goes back. No one at mid-wicket now. He pulls that one, finds the vacant mid-wicket region. Long distance to cover for the fielder at deep square leg. He does well. They just picked up a single. Yeah, I think they were a little bit light there, but that brings us to the end of the over. KRL 27 for 1 off 5. Over pitched, beautifully driven. It's a partial stop. The fielder will definitely come around, but the way he timed that, he deserved a boundary to say the least. Yeah, beautiful shot. Fielder did well to get a hand to it, prevented it from going to the boundary. But yet again, Saad Beg, 20 off 13 now. He means business. He's looking to get his team a strong start in this second semi-final of the President's Cup. Slightly disappointed there with his effort. Kamran Ghulam, who was standing at extra cover, dived towards his right, but just couldn't stop it completely. Better length once again from Mohammad Salman. Now, Saad Beg needs to be a little cautious right now, because we saw that yesterday as well when Mas Sadakat, who's in the form of his life, if we talk about his recent performances, but when he started off brilliantly, he should have stayed, he should have prolonged his innings, and he couldn't do so. And now Saad Beg has got off to a pretty decent start, talking about his strike rate, which is well over 140 right now. So he needs to make sure that he stays out there for longer for KRL. Yeah, you want him to go on and score 100. That'll set his team nicely towards setting a target of around 300 or 300 plus. But you're right. If you get 20, 30 and give your wicket away, you put pressure on the rest of your batting lineup. So important that he stays at the crease. Yep, it's important that Saad Beg score runs.
for his team today. Now that's how KRL progressed in this tournament. They won the first match very comfortably by 7 wickets. They lost the second match by 100 runs. Now this was the match we were talking about when they were bundled out for just 40 runs. Then they had a very close game against OGDCL when they just lost by 3 while chasing 254. They had a wonderful outing against State Bank of Pakistan, winning by 9 wickets. A wonderful outing against PTB as well when they won by 71. Yet again, good areas here by Mohammed Salman. He's 1 for 8 off 2.4 overs right now. He started the better of the 2 opening bowlers. They also played few matches during the day-night. PTB, they unfortunately lost that game by 21 when they were chasing a big score of 322 here at National Bank Stadium, Karachi. This is SNGPL we are talking about. They started off brilliantly in the first 3 matches. If you look at the pattern in which they won their first 3, then they lost a bit of momentum, losing the next 3, and they had to win their last match against Higher Associates, which they were able to do in the end, courtesy of that wonderful knock from Shan Masood. Yet again, right on the money from Mohammed Salman. He's really doing a good job for his captain at the moment, bowling consistent areas, not allowing the batter to find any width or drive. It's important that they maintain the pressure from both ends, because you can see Salman is bowling at a very tight line and then targeting their stumps and making it difficult for the batters to find those gaps, whereas Shahnawaz Dani has been just slightly a little expensive, you could say. He hasn't really been that consistent in that corridor where you can trouble the batter. Punches that one off the back foot, finds a gap, just Saad Beg. There's a chase going on between the fielder and the ball. Eventually, the slide comes to the rescue. Umair bin Yusuf making sure that he pulls the ball back before the boundary ropes. Couple of runs taken, 6 done. KRL are 31 for 1. Into his 4th over now, Shahnawaz Dani with this new ball. Nicely cut away. Beautiful timing once again by Waqar. He gets his first boundary now on the offside. Yeah, Shahnawaz Dani is struggling here a little bit. 0 for 24 now off his 3.1 overs. Mohammed Salman has started fantastically well, his partner from the other end, but Shahnawaz Dani has been inconsistent. And yet again, short outside off stump. And the batter is not going to miss out. Lovely shot through the point region all the way to the boundary for 4. Still early days, you could say, about Shahnawaz Dani in his career, but when he was representing Pakistan a couple of years ago, I think he was bowling much quicker than what he's bowling right now. So the pace has gone down a bit. That's where he needs to bowl a lot more. Just target those stumps and make sure that the new ball does its trick early on. Yeah, the margin for error is not much on this pitch with the new ball. And Waqar has also started very confidently. He's looking a little bit more relaxed. He's playing the ball on its merit. Anything that's offered to him, he's taken it on. However, when the bowlers are bowling tighter lines, he's quite happy to be defensive and watchful. And I think it's important that they build on this good start and don't give any wickets at this stage. Oh, lovely delivery. Was there an edge? Bit of an appeal, and Hasibullah, well, that's how he usually does. Much better second and third delivery of this over by Shahnawaz Dani. He's hit much better areas, and that was very close to the outside edge. Let's have another look at that one. Very close to the outside edge. Squared the batter up. The keeper showed a bit of excitement. Keepers always do, as you say. Yeah, they're always involved in this game. It's going to be a big challenge for KRL because of the fact that it's their first match of this tournament here at this venue. SNGPL have been playing their previous 3 matches here at
National Bank Stadium, so they've got more idea of how the conditions are going to be. Lovely delivery again. Back-to-back unplayable deliveries from Shahnawaz Dhani. Yeah, Shahnawaz Dhani seems to have found his rhythm now. Much better lines and getting that bit of seam movement that you talked about. He looks to hit the seam, but that's only effective if you put the ball in the right area, and he's managed to do that in the previous 3 deliveries. A decent comeback this from Shahnawaz Dhani. That's the first delivery that completely squared the batter up, and that's the other one, almost identical. And Hasibullah, well, he was looking to have another one. What a wicket keeper he is, Hasibullah. Oh my goodness, 3 in a row from Shahnawaz Dhani. Just needs some luck to go in his favor right now. If he keeps bowling like that, he'll make his own luck. This has been a far better over from Shahnawaz Dhani. After going for a boundary in the first delivery, he's really putting some pressure on Waqar here now, beating the outside edge quite a few times in this over, and he'll be looking to finish this over well. Yep, the length has been perfect, the line has been immaculate. Rightly pointed out, he'll be looking to finish this over well. On the other hand, Waqar shouldn't really be that discouraged by the fact that he has faced 3 dot deliveries on the trot. Well negotiated. Dot delivery to end the over. 7 overs done. KRL while batting first are 35 for 1. And with that, it's going to be a time in the change in the commentary box where Farooq Riaz and Khurram Manzoor are going to join for the next 7 overs. बहुत बहुत शुक्रिया ज़िशान खालिद और कासिम शेख। 35 बगैर किसी नुकसान, 1 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर्स के बाद 7 पे 18 और वकार 6 रन से बैटिंग कर रहे हैं और उनको दावत दी गई बैटिंग करने के लिए जब शान मसूद ने टॉस जीता आज दोपहर में। अच्छी कंडीशन थी लेकिन उनकी हिकमत अमली के चेस की तरफ जाना पसंद किया। सलमान, अच्छा शॉट और वापस बॉल के मिड ऑफ पे। और इन द कमेंट्री बॉक्स मुझे ज्वाइन किया है खुर्रम मजदूर ने। खुशामदीद। खुशामदीद फरूक, आप कैसे हैं? ठीक हैं। और एक अच्छा डिसीजन, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं शान मसूद के जहन में है कि जो सेकंड बैटिंग है उसमें थोड़ा सा इजी होगा, ड्यू का फ़ायदा उठाने की जहन में सोच है। और जैसा कि मैंने पिच देखा था मुझे ऐसा लगा था थोड़ा स्लो बॉल आएगा, नीचे के रहेगा, और वो ऐसा दिखी। बहुत सारी बॉलें ऐसी थीं जो बॉल नीचे भी रही हैं, तो थोड़ा पिच में वेयर एंड टेयर तो है। अभी तक 7 बेद को बांधा हुआ है बॉलर्स ने, बहुत अच्छी टाइट लाइन और लेंथ पे बॉल कर रहे हैं। बाहरी किनारा, रन्स मिलेंगे। अवे खेले अपनी बॉडी से और शॉट थर्ड के काफी ऊपर से गई। सेफ शॉट इन दी एंड। प्लेसमेंट उनके मतलब की नहीं थी लेकिन 4 रनों के नाम। कोशिश की थी कि सर्किल के ऊपर से शॉट खेलने की साथ बेग ने, और लकीर है कि 2 फील्डरों के बीच में बॉल गया। ये देखें आप, स्क्रीन पे आ रहा होगा। और अच्छा शॉट खेलने की कोशिश की थी, ऊपर से खेलने की कोशिश की थी, बैट का फेस खुला और दोनों फील्डरों के बीच में लकीर है साथ, और 4 रन हासिल किए। साथ बेग वो वाहिद प्लेयर हैं जो इस दफ़ा कायज़म ट्रॉफी में 1000 रन रीच किए इन्होंने, और बड़ी फॉर्म में है और उस फॉर्म को ये कैश करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज इंपॉर्टेंट मैच में सेमीफाइनल एक ऐसा इवेंट, ऐसा मैच होता है जिसमें आप परफॉर्मेंस करते हैं तो आपकी टीम फाइनल रीच करती है। एक और अच्छा शॉट साथ बेग का, और साथ को अभी तक टाइट लाइन और लेंथ पे बॉल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं साथ को फ्री हिट मारने की, ना उनको आज़ादी दे कि ताकि वो जो उनका नेचुरल गेम है स्पेशली साथ बेग जो है शौकीन है थ्रू द लाइन शॉट खेलने के, और लूज़ बॉल को तो बिल्कुल नहीं वो बख्श रहे हैं। स्पेशली कवर्स एरिया में अगर उनको बॉल होती है तो कवर ड्राइव, अपर कट, और ये इनका फेवरेट एरिया है। पीछे गिरी हुई गेंद को स्मैश किया लेकिन फील्डर के हाथों में। अच्छा मौका था लेकिन प्लेसमेंट नहीं हासिल कर पाए साथ बेग।
सलमान ने कोशिश की थी थोड़ा बॉल को पीछे हैमर करने की, और ये पिच दिख रहा होगा, बड़ा ज़बरदस्त ड्राई पिच, टिपिकल कराची पिच है ये, और हाई स्कोरिंग गेम की प्रेडिक्शन है। और जिस तरह का अभी तक स्टार्ट लिया है 39 है उनका स्कोर, 7.4 बॉलें हुई हैं, तो दिखने में बज़ाहिर पिच में ऐसा कोई ख़ास वेरेंटियर दिख नहीं रहा, और अगर आप सेट हो गए तो इसमें बड़े रन दिख रहे हैं। अच्छा शॉट, दिल का शॉट और अच्छी फील्डिंग, दाएं जाने मुड़े शान मसूद कप्तान। अच्छी फील्डिंग थी शान की, और मुझे ऐसा लगता है ये सिंगल बनना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। 7 बेग समझ रहे थे कि बाउंड्री हो जाएगी, मगर शान की अच्छी फील्डिंग। शान भी काफ़ी रन्स ढूंढने के चक्कर में है, लंबी इनिंग्स खेलने के शौकीन है शान मसूद। ये देखें आप स्क्रीन पे, अच्छी बॉल को स्टॉप किया, और 7 बेग का एक कंफर्म 4 रन का शॉट जो था वो डॉट बॉल में बदल दिया शान मसूद की फील्डिंग ने। अच्छी बॉल और अच्छा ओवर, 4 रन के अलावा बड़ी उम्दा बॉलिंग की सलमान ने। ओवर मुकम्मल हुआ, 4 ओवर्स होगा सलमान के, 39 पर 1, 8 ओवर्स के बाद KRL। खुरम कल की पिच जो थी उसमें काफ़ी बाउंस हमें देखने को मिला, और तो टेक्सचर के हिसाब से, नेचर के हिसाब से आप कैसे कंपेयर करेंगे दोनों ट्रैक्स को? जी बिल्कुल फ़ारूक, ये कल का जो पिच था उस पर ऑफ द पिच बॉल निकल रहा था, बॉल आ रहा था, फास्ट बॉलर को हेल्प मिल रही थी, इवन बाउंस था। एक टाइम तो देखा जब उनका नाम क्या था, हमाद बट ने नॉन स्टॉप 10 ओवर का स्पेल किया, और उसमें तीसरे या चौथे ओवर के बाद उनका बॉल और कैरी करना शुरू हो गया था। अमूमन बॉलर्स जो हैं वो 3 या 4 ओवर के बाद उनके फटीक सी फील करते हैं, थक से जाते हैं, मगर हमाद बट ने जिस तरह कल बॉलिंग की है, नॉन स्टॉप 10 ओवर का स्पेल किया, और उसमें उन्होंने 2 से 3 कामयाबियाँ हासिल की हैं अपनी टीम के लिए। तो ये पिच टोटल डिफरेंट है, लो बाउंस विकेट दिख रहा है थोड़ा सा, और हाई स्कोरिंग गेम की उम्मीद दिख रही है यहाँ पे। शाहनवाज जहानी ने बहुत ही उम्दा लास्ट ओवर करवाया था, और बिल्कुल एक कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी जिसको हम कहते हैं, 4th और 5th स्टंप पे काफ़ी परेशान किया था। विकेट अब तक उनको नहीं मिली है, लेकिन बॉलिंग बहुत उम्दा की है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। शाहनवाज जहानी एक अच्छे एरिया को बॉल मुस्तकिल हिट कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि बैट्समैन कोई गलती करें और उस गलती का फ़ायदा SNGPL उठाए। बहुत कंसिस्टेंट एक एरिया को हिट कर रहे हैं, हार्ड हैंड पे वो कोशिश कर रहे हैं, इन स्विंग आउट स्विंग, वहीं से उसी एरिया में बैट्समैन की गलती का इंतज़ार, और जो दिख भी रहा है बैट्समैन स्ट्रगल करते हुए। वकार अभी तक अपने कंफर्ट जोन में नहीं आ पाए। हल्का सा बॉल नीचे रहा, जिसकी बात आपने पहले भी की थी। बॉल बिल्कुल ऑफ स्टंप पे था, लेकिन अच्छा खेलने में कामयाब हो इन दी एंड। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मेरे को, जो बॉलर बॉल हैमर करेगा उसका बॉल थोड़ा नीचे स्किट करके रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो शाहनवाज दानी की बॉलिंग में दिख रहा है पहले ओवर से। तो ये एडवांटेज है, और कोशिश कर रहे हैं कि राइट एरियाज़ में बॉल करें और बैट्समैन की गलती करें, क्योंकि अभी तक KRL बड़ी स्टेबल पोजीशन पे है, क्योंकि ऑलमोस्ट 40 रन और 8 ओवर हो चुके हैं, और एक आउट हुआ है। तो अच्छा स्टार्ट है, स्लो है मगर अच्छा स्टार्ट है। डॉट बॉल एक दफ़ा फिर बैट के फेस को ओपन करते हुए गैप निकालने की कोशिश की, लेकिन इतना आसान नहीं लग रहा कि शाहनवाज धानी के खिलाफ रन आए। शाहनवाज दानी की तारीफ़ करनी पड़ेगी, जिस तरह वो कंसिस्टेंट एक एरिया को हिट कर रहे हैं, कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखा रहे हैं, जिस तरह कल देखने में आ रही थी कि फील्ड जो है ऑफ स्टंप पे प्लेस हुई हुई, और सडन विदाउट स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग लिए बगैर शॉर्ट पिच बॉल की और उस पर बाउंड्री कंसीव की, ऐसा कुछ यहाँ दिख नहीं रहा।
और मुझे लग रहा है इफ्तिकार ने हमारी बात शान मसूद ने बात सुन ली और डीप स्क्वायर लेग कर दिया है फील्डर को और फाइन लेग को सर्कल में बुलाया है और कहीं ना कहीं शायद कोई प्लान डिस्कस हुआ है शाहनवाज धानी से शॉर्ट पिच बॉल से रिलेटेड। ये डबल ब्लफ भी हो सकता है। आउटसाइड एज स्मैश खेलने का चेस किया, इसको बाहरी किनारा लगते लगते रह गया शाहनवाज धानी। अब तक इंतजार में कि कब किस्मत उनका साथ दे। जी बिल्कुल, और आपने इस बॉल से पहले कहा था ब्लफ भी हो सकता है और वो हुआ। बैट्समैन की मूवमेंट ऐसी लग रही थी कि वो प्रिडिक्ट कर रहे थे कि शॉर्ट पिच बॉल होगी और वो बैकफुट पे रेडी थे और सडन हार्ड लाइन पे बॉल हुई। आउट स्विंग बॉल था और कंप्लीट वो मिस जज थे। ये बॉल देखें आप शाहनवाज धानी की, ना फुटवर्क गया, कट ना ड्राइव, बीच में रहे बैट्समैन क्योंकि वो प्रिडिक्ट कर रहे थे शॉर्ट पिच बॉल, क्योंकि बॉल से पहले शान मसूद ने डीप स्क्वायर लेग लिया था साजिद को। बहुत उम्दा बॉलिंग और वकार दिफाई अंदाज से खेला। काफ़ी स्ट्रगल करते हुए वकार 15 बॉलें अब तक कंज्यूम कर चुके हैं। 6 रन उसका स्कोर हुआ है और 5 लगातार डॉट बॉल। शाहनवाज धानी बिल्कुल ज़बरदस्त बॉलिंग एग्जीबिशन के साथ। जी बिल्कुल, शाहनवाज धानी बैट्समैन को टीज करते हुए कि आप कोई गलती करें मगर मैं इस एरिए से बॉल को नहीं हटूंगा। तो शाहनवाज धानी की कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी लग रही है कि बैट्समैन की गलती का इंतज़ार कर रहे हैं और इस ओवर की आखिरी बॉल है। लेट्स सी, देखते हैं कि बैट्समैन जीतता है ये बैटल या बॉलर। फिलहाल तो बॉलर ही लग रहे हैं डोमिनेट करते हुए और एक ही चैनल बॉल कर रहे हैं क्योंकि बैट्समैन भी कुछ अलग नहीं कर रहे। तो इंकरेजमेंट मिल रही है शाहनवाज धानी को कि उसी एरिया में बॉल करे बार बार। एक और डॉट बॉल, इस तरह मेडन ओवर और शानदार बॉलिंग का मुजाहरा शाहनवाज धानी का। 5 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं शाहनवाज धानी के। नन फॉर 24, 39 पर 1 KRL 9 ओवर्स के बाद। फैसल भाई, मैं ये वाली चीज नहीं अलाउ करूंगा, फिर आप मुझे अलाउंस ज्यादा देंगे। मैं अलाउंस दूंगा। नहीं, मैं हर ओवर में अलाउंस दूंगा। और बॉलिंग में चेंजिंग देखने में आई है। साजिद खान को लाए हैं शान मसूद। साजिद खान के बारे में काफ़ी एक्साइटेड क्रिकेटर हैं। इनका जोश वाला अलग ही दिखता है ग्राउंड के अंदर, बॉलिंग में भी, फील्डिंग में भी और बैटिंग में भी। साजिद खान, अच्छी बॉल विद इन स्टम्प। पहला बॉल था साजिद खान का। साद बेग ने बॉल को अच्छी तरीके से खेला। वाइड का इशारा हो सकता है, बिल्कुल काफ़ी करीब था पैड से, लेकिन जो नई गाइडलाइन है लेग स्टम्प की तरफ वो बॉलर्स के फेवर में बनाई गई है, लेकिन थोड़ा सा एतराज़ था कीपर को, लेकिन वाइड गिवन। जी बिल्कुल, ये तो लाइन के करीब भी नहीं थी। और साद बेग अब काफ़ी गौर से देखते हुए अब अच्छा स्टार्ट उनको मिल चुका है। वकार उनके पार्टनर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इनका स्टे करना और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी तौर पे वो रैश शॉट ना खेलें। साजिद खान के पास भरपूर एक्सपीरियंस है। एक और अच्छी बॉल साद बेग ने डिफेंसिव मूड में खेल रहे हैं, जज कर रहे हैं कि स्पिनर्स की बॉल कितना टर्न होगा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं अच्छा थोड़ा सेव लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं साजिद को। कैच इट की आवाज है, चांस हो सकता है, लेकिन बॉल चली गई मिड विकेट बाउंड्री की तरफ और 4 रन मिलेंगे। इतना कन्विंसिंग शॉट नहीं था, लेकिन प्लेसमेंट अच्छी। डीप स्क्वायर लेग के फील्डर ने काफी ग्राउंड कवर किया, नहीं पहुंच पाए और एक कीमती 4 रन जरूरत थी इस बात की KRL को चौके की। थोड़ा सा पीछे बॉल गिरा है और साद बेग ने इस बॉल का पूरा फायदा उठाया। देखें ज़्यादा पीछे बॉल नहीं था, मगर टाइमिंग थोड़ी सी मैच करी बॉल के साथ, जिसका फायदा हुआ 4 रन की सूरत में। अच्छा लिफ्ट किया। अगला बॉल सिंगल लेते हुए साद बेग सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे हैं। स्ट्राइक को रोटेट किया, मिस फील्डिंग, मगर रन ना बन पाया। जी, साजिद खान ने इससे पहले चौका कंसीड करने से पहले बिल्कुल थोड़ा तेज बॉल की थी, लेंथ अच्छी थी, लेकिन ज़रा सा लेंथ को उन्होंने पीछे किया और साद बेग अच्छी फॉर्म में, और यही साइन है कि किसी टैलेंटेड बैट्समैन का उन्होंने
एक हाफ स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट किया और प्लेसमेंट हासिल की। एलिवेशन अच्छा खासा था लेकिन एक गैप में खेलने में कामयाब हुआ। कार बिल्कुल डिफेंसिव मूड में लग रहे हैं। फास्ट बॉलर हो, स्पिनर्स हो, और 10वां ओवर कंप्लीट, 45 रन, 1 आउट, KRL। पैंतालीस पर 1, 10 ओवर्स के बाद साजिद खान ने अपना पहला ओवर मुकम्मल किया। और ये स्पिनर्स की खास बात होती है, साजिद खान भी उन बॉलर्स में जो जल्दी अपना ओवर फिनिश करते हैं। रनअप इतना बड़ा नहीं है और फौरन भाग के अपने मार्क पे जाते हैं, तो एक ओवर रेट के हिसाब से भी कप्तान को फ़ायदा होता है। जी बिल्कुल, इससे कप्तान एटलीस्ट डिस्टर्ब नहीं होता कि हमें टाइम की प्रॉब्लम हो सकती है इन दी एंड ऑफ द इनिंग। और बॉलिंग में एक और तब्दीली, और अत्थर महमूद लग रहे हैं मुझे ये, स्क्रीन पे नाम नहीं आया जी, और बड़े ज़बरदस्त बॉलर हैं। और इनकी बॉलिंग एक्शन के रिलेटेड मैं आपको थोड़ा बताते चलूं कि खूबसूरत बॉलिंग एक्शनों में इनका शुमार होता है, स्मूथ रनअप के साथ। थोड़ी सी वेट मिली थी लेकिन सही से कनेक्ट नहीं कर पाए साथ बेग। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, KRL की बैटिंग से, कि साथ बेग मैक्सिमम स्ट्राइक रखें, क्योंकि वकार दहानी के ओवर में भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर भी है, और इस तरह के प्रेशर में अक्सर जो सेट बैट्समैन होता है उनसे गलती भी हो जाती है। जी बिल्कुल, और जहाँ तक वकार को मैंने खेलते हुए देखा है, थोड़ा अटैकिंग बैटिंग के शौकीन है, और आज बिल्कुल नेचर से हट के बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। या तो ऊपर से इंस्ट्रक्शन है कि थोड़ा सा टाइम लेना है अपने विकेट पे। चांस हो सकता है, और फील्डर मौजूद दहानी, एक बाउंस के बाद बॉल गई और विट मिली थी इनको। एक दफ़ा फिर ओवर कवर्स खेलना चाह रहे थे लेकिन डीप थर्ड में बॉल गई, सेफ रहे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये साथ बेग ये शॉट खेलते हुए कोशिश किए, थ्रू द लाइन खेलें। हाईलाइट्स में आपको दिख रहा होगा, ये आउट हुए, ओपन हो गए थे, और गुड शॉट, बहुत ही आला शॉट। ये आपने देखा होगा, ये पुल किया शाहनवाज दानी को, ये कट लगा चौका। कहीं ना कहीं अभी तक वकार के बल्ले से वो चीज़ नहीं आ पा रही है जिसके बारे में उनके मशहूर है कि थोड़े शॉट्स खेलते हैं और सर्किल में ऊपर से खेलने के बहुत शौकीन है। पेशावर से ताल्लुक़ है इनका। रन्स मिलेंगे, टिकल के इसको फाइनल लाइन के जाने, कोई मौका नहीं कीपर के लिए, और अंपायर का इशारा ऑफ द बैट। अथर ऑफ लाइन होते हुए थोड़ा सा, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा, ये देखें आप, हल्का सा ग्लाइड किया है और चौका। ये इजी होता है ऐसे बैट्समैन को, ख़ास तौर आप मौका दे रहे हैं सेट होने का, जो ऑलरेडी स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। कंफर्ट जोन में आते हुए वकार, और बाउंड्री ढूंढ रहे थे काफ़ी देर से, और फाइनली उनको काफ़ी देर के बाद 18 बॉलों के बाद उनको बाउंड्री मिली है। कॉन्फिडेंस ज़रूर मिला होगा, इतना कोई भरपूर मिडिल नहीं हुआ, लेकिन डाउन द लेग साइड बॉल थी, लेकिन इस बार फिर लेग साइडिश रहे और रन्स मिलेंगे। जी हाँ, 4 रन हासिल कर दिए, एक और चौका। इस दफ़ा काफ़ी पुरएतमाद अंदाज से खेले अलोंग द ग्राउंड, ओवर हिटिंग की कोई कोशिश नहीं की, सिर्फ टाइमिंग थी। ये वही चीज़ हुई मैंने आपको कहा कि बैट्समैन को आपने कॉन्फिडेंस दिया एक गंदी बॉल करके, और नेक्स्ट जो बॉल थी वो इतनी बुरी बॉल नहीं थी, मगर उन्होंने शॉट बहुत अच्छा एग्जीक्यूट किया। ये देखें, प्योर टाइमिंग, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी थी, गैप में गया बॉल और 4 रन। और आपने देखा होगा खुर्रम दहानी ने कोई भी बॉल इस मिडिल और लेग स्टंप पे नहीं की थी, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप थे, वहाँ थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन जैसे पैरों पे बॉल आई और बड़े अच्छे अंदाज से उन्होंने कलाई की मदद से पहुंचा दिए बाउंड्री की जाने। विट मिली इस दफा फिर, और ऑफ साइड पे जो है इतना कमांडिंग तरीके से नहीं खेल पा रहे। देखिए, ये भी ऐसी बॉल थी कि इसको आप डिस्पैच करते। विट मिली थी इनको, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में। जी बिल्कुल, मगर मुझे ऐसा लगा थोड़ा बॉल बैट पे वैसे आया नहीं जैसा बैट्समैन एक्सपेक्ट कर रहे थे। टाइमिंग जो थी वो मिस हुई है, और चौके के बाद
डीप स्क्वायर लेग पे साजिद को कप्तान ने भेजा है। मुझे ऐसा लग रहा था इनको पहले से ही लेके रखना चाहिए था, क्योंकि इन स्विंग बॉल कर रहे हैं, डीप स्क्वायर लेग लेके थोड़ा पहला ओवर बॉलर अगर बॉल करता है या शॉर्ट विकेट मॉड विकेट, तो उसमें बॉलर को चांस होता है कि गंदे बॉल पे आप बच सकते हैं। एक और अच्छी बॉल, एक और अच्छी बॉल, छोटे कदम से खेले, सिंगल लिया, 7 बेग बच गए। अच्छी ट्राई की थी अतर महमूद ने, और ये 11वां ओवर इख्तिताम हुआ 54 फॉर 1, 55 फॉर 1, 11 ओवर। भाई इधर स्क्वायर पे उसको भी थोड़ा फायर कर दो। अंदर पचपन पर एक, और हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर मिसबाह उल हक, मेंटोर ऑफ SNGPL, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और कप्तान। और जी मिसबाह, आपको आवाज़ आ रही होगी इन कंडीशंस में? अभी स्लिप शॉट खेलने में कामयाब और रन्स मिलेंगे। अभी नहीं आ हाँ जी, मैं मिसबाह फ़ारूक खैर, कमेंट्री बॉक्स से। अच्छा, ये इस ट्रैक पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस नेचर को देखते हुए कितने रन्स आपको नज़र आ रहे हैं? KRL की टीम अभी ज़्यादा कोई फ्लाइंग स्टार्ट नहीं है, तो कितने रन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके बॉलर्स जो यहाँ पे इनको रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे? देखिए, आइडियली हमारी जो कोशिश है वो तो यही है कि हम जितने कम से कम रन्स पे रिस्ट्रिक्ट करें। बहुत अच्छा पिच है, जैसे हमें पता है कुछ ज़्यादा कोई हेल्प नहीं है, बट लेटर पार्ट में थोड़ा रिवर्स का यहाँ पे एलिमेंट होता है, वहाँ पे आप कोशिश करते हैं कि आप अभी रिस्ट्रिक्ट करें, इनको थोड़ा सा रोकें और बाद में इम्पैक्ट डालें। मुझे लगता है 240 250 तक अगर हम रोक लेते हैं तो दैट्स वेरी मच गेटेबल। अगर इससे ज़्यादा रन्स होते हैं तो फिर ये होता है कि थोड़ा सा सेमीफाइनल है, फिर पिच है, अंडर लाइट्स आपने खेलना, तो वो फिर चैलेंज हो सकता है। बट विकेट आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त पिच है। अच्छा मिसबाह, इस पे टॉस जीत के शान मसूद ने बॉलिंग का फैसला किया, और नॉर्मली नॉकआउट्स में देखते हैं कि टीम्स ऐसी कंडीशंस पे जब धूप निकली हुई हो, पिच भी बॉल अच्छा आ रहा हो, तो बैटिंग करती है ताकि स्कोर बोर्ड पर हो। तो ये टीम डिस्कशन में हो चुका था कि हम चेस की तरफ जाएंगे आपकी टीम? जी, मेनली उसकी रीज़न ये है, एक तो ड्यू फैक्टर का आपको नहीं पता, अगर मैच थोड़ा सा डीप जाता है तो शाम के टाइम वो ड्यू फैक्टर आता है, तो ना आपका रिवर्स होता है ना उस तरीके से स्पिन होता है। फर्स्ट इनिंग में ये है कि ठीक है अर्ली ऑन थोड़ा सा इजी टीम के लिए होता है, बट रिवर्स का फैक्टर होता है आपके बॉलर्स के लिए, स्पिनर्स के लिए थोड़ा सा लग्जरी होती है कि वो गेंद ड्राई बॉल उनको मिलता है तो वो उससे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो आई थिंक इस फैक्टर को देखते हुए डिसीजन था कि हमें, क्योंकि हम फास्ट बॉलिंग पे रिलाई करते हैं और हमारी फास्ट बॉलिंग नया बॉल भी फिर पुराना बॉल रिवर्स का फैक्टर अगर है तो उसको बेहतर से बेहतर यूटिलाइज़ करें, और अगर सेकंड टाइम पे ड्यू आ जाती है तो कोशिश करें कि हाँ हम उस तक टीम मैच में हों और उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। अच्छा मिसबाह, शाहनवाज दहानी ने बड़ी उम्दा बॉलिंग की, और जो चैनल ऑफ अनसर्टेनिटी वाला जो होता है 4th एंड 5th स्टंप पर, तो बड़ी अच्छी फॉर्म में वो लग रहे हैं और काफ़ी परेशान किया उन्होंने बैट्समैन को। इट्स अ गुड साइन फॉर योर साइड। जी मिसबाह, कैन यू हियर मी? हाँ मिसबाह, मैं कह रहा हूँ शाहनवाज दहानी की मैं बात कर रहा था कि बहुत ही
मिसबाह उल हक हमारे साथ मौजूद थे, मेंटोर SNGPL। बहुत बहुत शुक्रिया मिसबाह उल हक। और सात बेग यहाँ पे 33 से पहुंच चुके हैं चौके की मदद से। एक और शानदार शॉट सात बेग का। सात बेग ने अब सोच लिया है कि जो बैट बॉल मिलेगी उसको बाउंड्री में कन्वर्ट करना है। बेहतरीन बैक टू बैक बाउंड्रीज, ज़बरदस्त शॉट सिलेक्शन। थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल था, सात बेग तैयार थे इस बॉल के लिए। देखें, इतना कोई हाइट पे बॉल नहीं था, लेंथ पीछे था, अच्छी शॉट सिलेक्शन और 4 रन हासिल की। बहुत ही शानदार फॉर्म में, लेंथ बहुत अच्छा पिक कर रही है और ये तो काफ़ी पीछे गिरी हुई गेंद थी, तो काफ़ी वक्त है इनके पास और डिस्पैच किया। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा है अथर जब से आए हैं थोड़ा कंफर्ट जोन में नहीं है, और इस तरह के प्लेयर के आगे ख़ास तौर जो टॉप फॉर्म में हो, 1000 रन रीच किए हो और सारी टीम की जो वो निगाह सात बेग पे हो, उसके आगे एकदम बॉल करना थोड़ा मुश्किल में लग रहे हैं अथर इस टाइम। एक और शानदार शॉट, मिस फील्डिंग, 2 रन के लिए पुश किया है और 2 रन हो सकते थे। अच्छी फील्डिंग शाहनवाज दानी की। और अथर के आने के बाद देखा होगा थोड़ा सा जो है रिलैक्स हुई टीम, क्योंकि जो है रन्स आ रहे हैं और जो रन रेट है थोड़ा ऊपर की तरफ गया है, तो इसी तरह के ओवर की ज़रूरत थी कि ऐसे बॉलर को इसको टारगेट करें। देखें अब 2 ओवर तकरीबन उन्होंने किए और 19 रन कंसीड कर चुके हैं। ये देखें आउटसाइड दी ऑफ स्टंप फ्लैश किया उसको, और हाफ स्टॉप भी हम कह सकते हैं, थोड़ा तेज शॉट था। जी बिल्कुल, मगर जिस तरह के स्टेज का ये मैच है, इस पे ये चीज़ अवेल करनी पड़ेंगी, अच्छी बाउंड्री सेव करनी पड़ेंगी, कैचेस अवेल करने पड़ेंगे, राइट एरियाज़ में बॉल करनी पड़ेगी। एक प्रेशर बना हुआ था शाहनवाज दानी के बाद, वो प्रेशर थोड़ा सा ब्रेक हुआ है। एक और अच्छी बॉल, अच्छा प्ले, अच्छा खेला वकार ने। 13वां ओवर ख़त्म हुआ, 66 फॉर 1। माता हुआ सिकंदर बराबर का। तेरह ओवर्स मुकम्मल, 66 पर 1, और पिछले 2-3 ओवर से थोड़ा मोमेंटम हासिल करते हुए वापस KRL की टीम। सात बेग बहुत इंप्रेसिव, तकरीबन रन बॉल इनिंग्स के साथ 38 से पहुंच चुके हैं और एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है खुर्रम, और एक बड़ी इनिंग्स के लिए फाउंडेशन सेट है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी भी है कि अर्ली ऑन विकटें नहीं देनी है, थोड़ा सेफ खेलना है। और सात बेग को सबसे अच्छी चीज़ ये है, सात बेग जहां बॉल को देखते हैं बैट बॉल है उसको बाउंड्री में कन्वर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं स्ट्राइक रोटेट करें। ये देखें आप, सात बेग ने एक और कवर पे खेलने की कोशिश की। साजिद उनको ज़्यादा विड्थ नहीं दे रहे हैं, विद इन स्टंप बॉल कर रहे हैं, अगले पाँव पे कोशिश कर रहे हैं कि उनको एक अच्छे बॉलर की निशानी ये होती है कि फ्रंट फुट पे स्पेशली उस प्लेयर को जो सीजन प्लेयर है कि उसको टीज करे, कि ताकि वो गलती करे, वो स्टेप आउट करके खेले या मिड विकेट पे मारे। जिस तरह सात बेग ने पहले ओवर में साजिद को मारा था मिड विकेट के ऊपर से, वो बॉल भी बुरा नहीं था मगर शॉर्ट फॉर्म की वजह से कनेक्ट हुआ। अच्छा सिंगल मिड ऑन पे, अच्छा सिंगल खेलते हुए स्ट्राइक रोटेट किए, और कहीं ना कहीं थोड़ा रिलीफ मिलता है जब बाउंड्री मारते हैं सात बेग, क्योंकि वकार के बैट से अभी तक वो चीज़ दिखने में नहीं आई है। पिछले ओवर में उन्होंने 2 बाउंड्रीज मारी थी अथर को, मगर जिसके लिए वो मशहूर है बड़ी हिटों के लिए, और एक अच्छी ये स्ट्रेटजी का भी हिस्सा कह सकते हैं कि थोड़ा टाइम लेने को बोला हो कि ऐसे प्लेयर का विकेट पे रहना ज़रूरी है। अच्छा, क्या इंडिकेशन लग रही है खुर्रम के इस पे टर्न कितना मिलेगा, स्पेशली फर्स्ट इनिंग्स में? बहुत ज़्यादा स्पिन अमाउंट हमने अभी तक देखा नहीं है, ज़्यादातर जो है बैट्समैन ने आराम से रीड भी किया है और थ्रू द लाइन खेलने में कामयाब हुए, लेकिन फिंगर स्पिनर है, उतना अमाउंट हमने देखा नहीं स्पिन का। जी इतना कोई ख़ास ब्रेक होगा नहीं, और स्लो होगा, मैनेजेबल होगा। जैसा अभी तक आपने देखा कोई ख़ास ब्रेक हुआ नहीं है। साजिद कोशिश कर रहे हैं विद इन स्टंप, एक अच्छे बॉलर की निशानी होती है कि वो पिच को जल्दी रीड करता है और फिर उसके हिसाब से अपनी बॉलिंग को प्लान करता है। तो उन्होंने कोशिश ये किया विद इन स्टंप बॉल करें। एक और सिंगल आपने देखा होगा, मिड ऑन पे खेलते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ऑफ स्पिनर को, स्पेशली सात बेग को। 14वां ओवर इख्तिताम को हुआ, 69 रन फॉर 1। मेरा भाई ये क्या है यार, नहीं हुआ, देखो जरा, देखो दानी।
69 पर एक 14 ओवर्स के बाद 7 बेग 40 से पहुंच चुके हैं। और अभी हम स्पिन की बात कर रहे थे कि साजिद खान को इतना स्पिन अभी नहीं मिल रहा, लेकिन उतनी वॉचफुली और बड़े ध्यान से बैटिंग कर रहे हैं दोनों बैट्समैन और पार्टनरशिप बिल्ड होते हुए अथर कंटिन्यू करेंगे। और अथर का नया ओवर, इसके साथ ही कमेंट्री बॉक्स में तब्दीली। कमेंट्री बॉक्स में अब आपका साथ देंगे सिकंदर बख्त और ज़ीशान खालिद। Thank you, Farooq. Zishan is getting set, and good start by KRL, I think so. And Saad Beg is playing very well for 40. And as we have discussed yesterday, that the players should know that they have to play 50 overs. That's very, very important. Yeah, it is important that you understand the significance of the format, especially when you talk about youngsters, because you get to play a lot of T20 cricket throughout the year. But it's important that since it's a big tournament, talking about the President's Cup one-day tournament, it's the all-important semi-final. So I think he has rose to the occasion up till now, Saad Beg. I'm sure they must have seen the match yesterday, and they saw that Jahandad scored runs because he was just cooled down. He stayed there, played the. That was a good stroke and a wonderful effort from that fielder. And he played all the overs. That was very important yesterday for the PTV. And this is what they are going to. They are supposed to do that. Play all the overs. Take your time. In the last, if they have wickets, about 6 wickets in the last 10 overs, they can score 100 runs of the last 10 overs. So they just have to stay there. So Saad Beg is doing the same thing. Waqar is there. Both the batters are amongst runs in this tournament. Guides that one, but couldn't find the gap. Now they're doing the right thing as far as SNGPL are concerned, because they know that Saad is very strong on the offside. So they have placed 2 fielders very close to each other. They have got a fielder at backward point and a fielder very close to him, to his left. Well, Saad Beg had scored 211 runs in this President Cup of 6 matches, and his highest is 52. He has 2 50s, and his average is 35.16. But in the Qaid-e-Azam Trophy, he was the player of the tournament. He scored 1,000 runs. Highest runs in the Qaid-e-Azam Trophy, 1,000 runs, and he scored 400s and 350s, and his average was 55.55. He got the award of the best player of the tournament of Qaid-e-Azam Trophy. Playing and missing. The ball is keeping low. I'm really surprised why they have opted for bowling, because yesterday we have seen that in the second session the ball spins, and it spins a lot, and it was swinging. Ahmad Butt bowled excellently well in the last game. Outside edge, a third man in place. Good over from Athar. Well, almost turning out to be a maiden until that last ball that went towards third man. So 15 done, it's 70 for 1. This is the performance of KRL so far in the first 15 overs. Remember, Shan Masood won the toss, opted to field first. We saw once again Saad Beg and Shahzeb coming out to open the innings. The only wicket to fall, Shahzeb got a lovely delivery from Salman that he couldn't really get away with. Got a little tickle, and the rest of the job was done by Hasibullah behind the stumps. And since then, both these batters are looking very strong and very confident. Smart batting by the batsman. Saad Beg is doing the right thing, because he knows that there is a lot of overs left. Almost 35 overs left. So he's just taking a chance, changing the strike, taking singles, and whenever he gets a chance, he hitting the big ones. Off the backward, now they're running the first one hard. They'll just get that single. Yeah, rightly pointed out, Sikandar, because we saw that in the previous match as well when PTV were batting first, and there were a lot of dot deliveries being faced by their middle order batters. It was not until the 30th over when they start making sure that they need to rotate the strike and make sure that they get singles as well.
Well, I think I will give full marks to Jahandad yesterday because he was there. He was just stopping the ball. We were all surprised, but I was sure because he has the capacity of hitting the ball. So he did it in the last overs, and he scored 50 and took the score to 248. So that's what they should do. Just stay there. It's a lot of overs that there. Actually, because of the 2020 cricket, you know, the temperament is different nowadays. He looks a very solid player on the back foot as well, Saad Beg. Well played again. Best thing to do, because Sajid is a very experienced player. Sajid is a match winner for Pakistan in Test cricket. He's an outstanding off-spin bowler. I don't see any spin, but still. The last couple of years have been excellent for Sajid, to say the least. It's won a number of matches for Pakistan, especially in the longest format of the game. Single to win the over, 16 done, it's 74 for 1. Solid foundation being laid by these two batters. They've added 58 for the second wicket after the departure of Shahzeb. Very decent bowler, Athar. Got to see one match when SNGPL were up against Ghani Class and they were defending a very small total of 222. And he was bowling absolutely brilliantly with the older ball. Well, right now, there is nothing in the pitch for the seamers. Yesterday, we saw the new balls moving around, taking a little bit of bounce. It was going up. But now this pitch is typical of Pakistani pitch, where there is nothing for the fast bowlers. You just have to keep a good line of length. About Waqar also played the KRL Trophy. He scored 464 runs with 103 50s. Not bad, but obviously Saad Beg's 1,000 runs were the best in the tournament. So everybody's playing the domestic cricket. Everybody's performing a little bit somewhere. It's very important for all the cricketers playing for Pakistan or want to play for Pakistan. In Pakistan, they must play the domestic cricket, 4-day cricket. It's very, very important. You learn from the 4-day cricket. Bit of a misfield there from mid-wicket. That will allow them to get that single they were after. Yeah, nicely pointed out, Sikandar. All the top performers of the Quaid-e-Azam Trophy have performed well in this President's Cup as well. You were mentioning about Saad Beg, that he scored 1,000 runs in Quaid-e-Azam Trophy and he has scored more than 240 runs in this tournament. Shamil Hussain, who was leading PTV yesterday, he scored 899 during Quaid-e-Azam Trophy and he's one of the leading run getters of this tournament as well. So it's important that as a youngster you give importance to the longer format of the game, and the longer you're going to play domestic cricket, that is further going to polish your skills. Off the back foot, just manages to hit it towards the left side, and a misfield from Shahnawaz Dhani. Well, that wasn't needed, but nevertheless another boundary for Saad Beg. It's lucky 4 runs for Saad. He played very well, but the misfielding, it was straight into the hands. It's a normal kind of a fielding where Shahnawaz Dhani slipped and he could not stop the ball. But as you said, domestic cricket is very important. Everybody's contributing in it. Shahzeb Khan, who could not score runs today, he was the one who scored 150 something in against India in the under-19. Then he was gone, vanish. And that happened a couple of years back when Pakistan under-19 were up against Indian team.
I think that 150 that you're talking about came at Dubai Cricket Stadium. And afterwards, like Sumer Minhas, that's his name, right? He scored brilliantly, 172. Well, this is the fielding, best fielding, I think so. They're going to show it. What happened to... It was very simple. It went through his legs. He should slide on his knees. I think he was in two minds whether to dive forward or to just slide, and in the end he was just a little late, and the ball just going under his arms and touching the boundary ropes. And that's a beautiful try, but a wonderful stop in his follow through. And a bit of aggression. Too straight. Well, you're supposed to play straight, but not that straight. 79 for 1 of 17 overs. I'm not a burger family. Yeah, man. So drinks are done. Sajid Khan will continue from the com box end.
going at a very decent run rate up till now. KRL have got a solid partnership as well between Waqar and Saad. First slip comes in. Well bowled. Sajid is bowling on a very good tight line. He's not giving chance for to the batsman to, play big strokes. Keeping to a very tight length, which is a very good thing. Because he's a very senior cricketer, test cricketer. He's a match winner for Pakistan. He's played 5 matches in the Qaid-e-Azam Trophy. Took 30 wickets. With an average of 19.93. And his best bowling in the Qaid-e-Azam Trophy was 5 for 28. Man for all occasions, Sajid Khan. Paddles that one. They've got protection out there in the deep. Will just get a run. I will say well played, because you don't have to hit a big one. Just keep on rotating your strike. Keep on rotating the strike. And don't play the dot balls. So if you rotate the strike, the score gonna move. And they built this innings nicely up till now, KRL. Well bowled and well played. Again, in this President Cup, Sajid Khan played 7 matches for 11 wickets. And his economy is 3.65, which is very good. Living up to his reputation, Sajid. Just a single coming in that over. 18 overs done. It's 80 for 1. Change in the bowling attack. Athar being replaced. Left arm orthodox Saad. We've got other options too. Talking about SNGPL. We have seen Kamran Ghulam also bowling in this tournament. Off the back foot, gets it in the gap, just Saad. This will go away for a boundary, and a brilliant way to reach another half century. Top batting this from the youngster. Very well done, Saad. Keep on scoring runs. You still have more than 30 overs to play. And just take your time. And this is very important. He scored 1,000 runs in the Qaid-e-Azam Trophy. He was the best player of the tournament. And he's still scoring runs. A very good wicketkeeper batsman. And Pakistan needs these kind of a batsman. Very well played. Very smartly played. Not in a hurry. Why should you in a hurry? Still 31 overs are left. That's the way he got to his half century there, Saad Beg. It was short, it was outside the off stump. And he not only managed to find the gap, but managed to find a boundary as well. Now, Shan Masood, in fact, both the teams are unchanged from their previous match. Mubashir Khan played that match when they were up against KRL, and he picked up a fifer that day. Twice he came on a hat-trick. He was able to do it once. Well, that was a very difficult pitch to bat on, because even SNGPL with the likes of Shan Masood, Hazan Uwais were only able to score 140, and they bundle out KRL for just 40. They'll be disappointed not to put that one away for a boundary. 6 runs in that over from Saad, 19 done. It's 86 for 1.
Double bowling change from the skipper Shan Masood. We saw Saad coming from the far end, and now Mohammad Shehzad, another young all-rounder, will start his spell from the com box end. He's somehow called as a lucky charms. Mohammad Shehzad was a part of Pakistan team when they won the Emerging Asia Cup in Doha earlier this year, and then in the Hong Kong Sixes as well, although it's not considered professional cricket, but he was part of that team too, which was being led by Abbas Afridi. Well, yeah, that's very good because we won the Super Sixes at Hong Kong. We have the title. We have won the Emerging, another title, and then obviously the under-19. If he has been playing there, that must be very good. And not an ideal pitch for him to bowl because he's kind of a medium pacer like Abdul Razzaq, Mudassir Nazar, who can come and swing the ball, but there is nothing in the pitch for the seamers. Might be good for the spinners, not for the seamers. Very well played. I like the way Saad Beg is taking his batting, rotating the strike, and which is very good. Now, a few overs ago, we saw Shahnawaz Dhani not being able to stop that ball towards third man when he tried to slide and stop the ball, but unfortunately the ball went between his legs. He saw that replay on that giant screen, Shahnawaz Dhani, and there you go. Man full of expressions, Shahnawaz. Nicely driven, gets it in the gap. Beautiful timing from Waqar. Mid on and mid off are both up, and Waqar gets a boundary. Very good shot. This is a good batting shot. I like all those batsmen who play on the front foot, play straighter towards the long off, long on, towards the cover, extra cover, because nowadays the trend is to hit the baseball hitting. But this was a very good shot, good perfect timing, though the bowler could have stopped it, but it was very well timed. Nobody could stop, and another boundary for him. Sikandar, you have been mentioning about the pitch, that there is nothing in it for the fast bowlers. I'm pretty sure you must have played a lot of cricket at National Stadium, Karachi. So can you bring back those memories, how the conditions used to be, how the pitch used to behave at your time, during your time? Well, we used to have the same kind of pitch where they are playing on nothing, no swing, nothing. My test debut was here. I played against the New Zealand in 1976. When Glenn Turner, he used to open the innings. Well, I took 3 wickets in the first test match, in my first test match. Then I played against the India over here, and not a big performance for the Pakistan side over here. But I played a lot of club cricket and different kind of cricket over here. A lot of Wills Cup. We used to have Wills Cup, like now we have PSL. We used to have Wills Cup, and the pitches were like this. So that's why I said this is a typical Karachi pitch, where there is nothing for the seamers. Yes, you can spin if you are a good seamer, spinner, you can spin. But it's good to see this stadium, beautifully lush green, new stands are up there. We can continue that discussion during the next over. 20 overs meanwhile have been done. KRL are 91 for 1. Back foot gets another single. Yep, Sikandar, you've got another opportunity to tell us how the things used to be during your playing days. I still remember when I played my first test match, there was no stands over there. It was a journal stand without any shade, and
people used to sit over there, and against India especially, when we were chasing about 180 something in 20 overs, and we chased it. Nicely timed. Some work to do by the fielder at deep cover, and he does well. There was a funny joke. It's about the lady. Should I say or no? The lady cricketer sitting behind me. If you think now is the right time, then do the honors. I will tell you the joke. It's very funny. Once again, attempt of stopping that ball went in vain. Well, during those days, we didn't have the dressing rooms. We used to sit on the stands with the crowd. All right, so there was a lot of tension, and we were chasing runs. Oh, that's delicate. Had a good effort. Say few runs there. Salman, I guess. And then somebody bowled a white ball. So everybody shouted. The whole crowd was sitting there. We were sitting there. The crowd said, white ball, white ball, white ball. The lady who was sitting next to us said, white, it's a red ball. Yeah, we have shared that joke when you play table cricket. Punches that one off the back foot, but it's going to be a dot delivery. Good over from Saad comes to an end. 21 done. It's 95 for 1, and with that, it's going to be a time in the change in the com box where Farooq Riaz and Ayman Anwar will join you. बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर बख्त और ज़िशान खालिद। 95 पर 21 ओवर्स के बाद शहजाद दूसरा ओवर करेंगे अपना। वक्कार ने गैप निकाला और आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो इस इनिंग्स के मोमेंटम को बढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रेशर इनके ऊपर नहीं, क्योंकि साथ भी एक बहुत ही उम्दा बैटिंग कर रहे हैं। और कमेंट्री बॉक्स में मैं खुशामदीद कहूँगा एमन अनवर को। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया फ़ारूक। ये बॉल थी मोहम्मद शहजाद की, जिसको कट किया कवर की तरफ। बहुत अच्छी कोशिश थी फील्डर की तरफ से, लेकिन एक आसान एक रन बनाया। साद बेग की बात कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ये टूर्नामेंट रहा है उनका, और उससे पहले उन्होंने कायदे-आज़म ट्रॉफ़ी में भी बहुत अच्छे रन्स किए। तीसरी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की है इन्होंने इस टूर्नामेंट में। पुल करने में कामयाब हुए, रन्स मिलेंगे, चौका हासिल किया, बहुत ही उम्दा शॉट अलोंग द कार्पेट खेले और अच्छा बैलेंस परफेक्टली जो इन्होंने कैप ढूंढने में कामयाब हुए। बहुत ज़्यादा पीछे बॉल की है, बहुत आसान था साद बेग के लिए इसको पुल शॉट खेलना, और बहुत अच्छा खेलते हैं ये बैक फुट के ऊपर। कोई फील्डर वहाँ पे मौजूद नहीं था। 4 रन हासिल किए अपनी टीम के लिए। इस तरह 100 रन मुकम्मल किए हैं KRL की टीम ने सिर्फ 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। बहुत अच्छा माइलस्टोन, बहुत अच्छा शॉट, सर के ऊपर थी गेंद लेकिन इतना पेस नहीं था, लेकिन इन्होंने बॉल को मैनेज अच्छा किया अलोंग द कार्पेट के लिए। यही अच्छी खास बात होती है, इंडिकेशन होती है किसी भी इनफॉर्म प्रोफेशनल बैट्समैन के लिए कि ख़राब बॉल पे बड़े शॉट्स के टाइम में आप कोई गलती ना कर बैठे। बहुत मोहतात अंदाज में एमन अपनी इनिंग्स को बिल्डअप किया है। थोड़ा सा एजी ज़रूर है साथ एक शुरू के इनिंग्स में, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल को फ्लैश करने गए तो उसमें इनको थोड़ी सी लक भी इनके साथ थी। डीप थर्ड पे इनको चौके भी मिले, सिंगल्स भी मिले, लेकिन उसके अलावा ऑन मोस्ट ओकेजन्स इन्होंने बड़ी बहुत ही नीट इनिंग्स, बहुत साफ़ सुथरी इनिंग्स उन्होंने खेली है। मिडिल बड़ा अच्छा किया है और वकार जो हैं अब मौका है कि काफ़ी बॉल्स कंज्यूम कर चुके हैं कि अब जो है वो अपने कुछ अटैक करें। कट करने में कामयाब हुए लेकिन फील्डर वहाँ पे मौजूद, सिंगल्स आ रहे हैं। ये अच्छी बात है कि स्ट्राइक रोटेशन भी साथ साथ जारी है। काफ़ी बाहर बॉल किया था मोहम्मद शहजाद ने यहाँ पे, आसान 1 रन हासिल किया है वकार ने। बहुत अच्छा साथ निभा रहे हैं साथ का।
उम्दा तरीके से खेला है 1 रन के लिए। बॉल के ऊपर चढ़ के इस शॉट को खेला है। अगर उनका ज़रा सा भी वेट पीछे रहता तो थोड़ी मुश्किल हो सकती थी, लेकिन उनकी ओवरऑल पोजीशन बहुत ज़बरदस्त है इस शॉट को कंप्लीट करने के लिए। और सिंगल लेने की कोशिश, वापस भेजा वकार ने और ओवर मुकम्मल 102 पर 1। ये है SNGPL पेस वर्सेस स्पिन और 153 ओवर्स पेसर्स ने करा 31 विकेटें हासिल की। स्पिनर्स भी काफ़ी दूर नहीं, साथ साथ चल रहे हैं, 30 विकेटें हासिल की। एवरेज का इवन थोड़ा फ़र्क है, 25 का एवरेज है पेसर का, स्पिनर्स का एवरेज बहुत अच्छा है, लेकिन साथ साथ इकोनॉमी रेट थोड़ा सा ज़्यादा है। क्या कहेंगे आप? नहीं, बहुत ज़बरदस्त है। देखें अगर इस स्टेट्स को देख के तो यही लग रहा है कि कहीं भी ना पेसर पीछे है ना स्पिनर पीछे है, तो इससे जिस तरह से पिचेस का फ़ायदा उठाया जा रहा है, बॉलर्स ने बहुत उम्दा बॉलिंग की है। और फास्ट बॉलर जो कि पावर प्ले में ज़्यादातर स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे ज़रा बाउंड्रीज़ का रेशो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अंडर 6 कोई भी इकॉनमी हो बहुत ही ज़बरदस्त है दोनों के लिए। साथ बॉलिंग कर रहे हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर फ्रॉम द फार एंड, और वकार भी काफ़ी एग्रेसिव बैट्समैन है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोहतात हैं, इतना खुल के नहीं खेल पा रहे। अच्छा ड्राइव किया इसको अलाउंड द ग्राउंड, फील्डिंग की कोशिश, लेकिन फील्डर मौजूद लॉन्ग ऑफ पे, थोड़े वाइड खड़े हैं लॉन्ग ऑफ के फील्डर। काफ़ी ओवर पिच बॉल थी ये, बहुत आसान रन लिया है वकार ने, लेकिन उनकी हेड पोजीशन और जिस तरह से वो बॉल के ऊपर आए बहुत खूबसूरत लगा उनका ये अंदाज। नरा साथ बेग और बैकफुट पे बड़ा अच्छा पंच करते, लेकिन मिड विकेट के फील्डर के हाथों में बॉल चली गई। कैप दोनों तरफ मौजूद है, मिड विकेट के दाएं जाने भी और उनके बाएं जाने भी। पैडल करने गए थे इसको और वाइड का इशारा मिस उन्होंने जरूर किया, लेकिन एक्स्ट्रा की सूरत में रन मिलेगा यहाँ पर। अंदर लाने की कोशिश की यहाँ पे उन्होंने इस बॉल को, बहुत अच्छी लाइन और लेंथ थी इससे पहले जो इन्होंने किया, बिल्कुल रूम नहीं दिया था साद को। एक दफ़ा फिर फुल बॉल की और 1 रन लिया साद ने। तो हम देख रहे हैं कि साद बैक फुट पे बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं, जितनी भी हमने देखे उनके स्ट्रोक्स देखे, तो जहाँ पे उनको विद इन द स्टम्प्स थोड़ी सी लेग स्टम्प पे या गुड लेंथ बॉल होती है, वहाँ पे वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आए। तो यहाँ पे अगर विकेट लेनी है, रन्स रोकने हैं, तो थोड़ी ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी होगी इनको। और अच्छी चीज़ ये है कि सिंगल्स आ रहे हैं और जो पार्टनरशिप, जो मेहनत की उन्होंने, उस पार्टनरशिप को, उस मेहनत का फल मिल रहा है, और ये काफ़ी ख़तरनाक साबित होती हुई जा रही है। शान मसूद के लिए अब सोच रहे होंगे कि कौन सी स्ट्रेटजी लगाएं, किस बॉलर को लगाएं कि पार्टनरशिप को ब्रेक किया जाए। ऑफ द बैक फुट और रन्स मिलेंगे, 2 रन भी हो सकते हैं, लेकिन फील्डर काफ़ी तेज़, ज़्यादा दूर तक बॉल नहीं जाएगी। अच्छी गेंद नहीं थी आखिरी बॉल पे। ओवर का अख्ताम हुआ, 23 ओवर मुकम्मल हुए, 106 रन पे 1 आउट है। इक्यानवे रन की पार्टनरशिप हो चुकी है, दूसरे विकेट की शराकत 118 गेंदों पर, और सात बेग जो है ज़्यादा डोमिनेट किया उन्होंने और चार्ज लिया इस पार्टनरशिप में। खुशाइन बात है, वो प्रेशर नहीं लिया जब वकार थोड़े स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन साथ अपने तौर पे काफ़ी वॉचफुल रहे, मोहतात अंदाज से पार्टनरशिप बिल्ड की, और ज़ाहिर है 50 ओवर्स हैं, तो अब जो है काफ़ी अच्छी पोजीशन पे दोनों ने अपनी टीम को लाके खड़ा कर दिया। बिल्कुल, यहाँ पे मोहम्मद शहजाद को जिम्मेदारी दी है कि वो किसी तरह से ब्रेक थ्रू दिलाएं अपनी टीम को, SNGPL को। बहुत अच्छा स्टार्ट किया शहजाद ने, फील्डर दायरे में मौजूद हैं, कोई रन नहीं होगा। शहजाद को मैंने देखा है कि बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं, स्पेशली जब ये अंडर प्रेशर होते हैं। हमने लास्ट सीज़न भी देखा था, बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने खेला था, सेंचुरी भी की थी अपनी टीम के लिए, 5 आउट भी किए थे, फिर हांगकॉन्ग सिक्सेस में भी गए थे। वहाँ पे जो अंडर प्रेशर सिचुएशन थी, वहाँ पे कैच लेना, स्टंप आउट करना, तो एक मेंटली बड़ा ज़बरदस्त हैंडल करते हैं। और यहाँ पे दोबारा आए हैं इसी जिम्मेदारी को निभाने जहाँ पे ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है। फील्डर वहाँ पे मौजूद, ख़राब गेंद थी, साथ एक प्लेसमेंट हासिल नहीं कर पाए। गैप अगर हम देखें यहाँ से जो हमें नज़र आ रहा है, मिड ऑन से और डीप मिड विकेट के दरमियान काफ़ी बड़ा गैप है, तो पैड्स पे जो बॉल आएगी तो साथ के लिए बड़ा अच्छा हुआ कि वो गैप उनके पास अवेलेबल है।
आउटफील्ड भी बहुत अच्छी है। थोड़ी सी कंसिस्टेंसी देखना चाहेंगे हम बॉलर्स की तरफ से। बहुत आसानी हो रही है, एक बॉल लेग पे चली जाती है, एक बॉल ऑफ स्टंप पे चली जाती है, तो बहुत आसान हो जाता है बैटर के लिए रन लेना, स्पेशली अगर बॉल लेग स्टंप की तरफ हो। शॉर्ट बॉल की थोड़ी सी हल्की थी, उसको बहुत आहिस्ता से खेला थर्ड मैन की तरफ। फील्डर भाग कर आए इस दफ़ा, धानी ने कोई मिस फील्डिंग नहीं की। आज थोड़ा सा ऑफ डे लग रहा है उनका, लेकिन इस दफ़ा बड़ा ज़बरदस्त आए हैं। शाहनवाज धानी की आपने बात की, और पार्टनरशिप ब्रेक करने के लिए धानी को भी लाया जा सकता है, क्योंकि सबसे इम्प्रेसिव धानी लगे कि जो फोर्थ और फिफ्थ स्टंप पे कंसिस्टेंट बॉल करते हैं, जो हम टेस्ट मैच की लेंथ बोलते हैं, उस पर धानी पूरा उतरते हुए। तो शान मसूद को रिलैक्स नहीं होना चाहिए डेफिनेटली, उनकी ये चीज़ उनके जहन में होगी कि अगर पार्टनरशिप और लंबी चली गई तो फिर 300 और 300 प्लस का स्कोर जो है काफ़ी जो है अचीवेबल हो जाएगा। अच्छा शॉट, इसी गैप की मैं बात कर रहा था। चेस ऑन है, 2 फील्डर्स कन्वर्ज हो रहे हैं लेकिन रोकने में कामयाब हुए। बॉल की स्पीड बहुत ही स्लो थी, इसलिए बहुत आसानी से इसको साद बेग ने खेल दिया। मिड ऑन की जानिब बैकफुट पे खेला है और बहुत उम्दा चेस किया शान मसूद ने। 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। ये देखें ये बॉल किस तरह से उन्होंने बैकफुट पे जाके प्लेस किया इसको 2 रन के लिए। शान मसूद ने उम्दा चेस किया और अपने साथ ही जानिब बॉल को फेंका। अप एंड ओवर खेलने में कामयाब है, मिड ऑफ को क्लियर किया, ओवर पिच गेंद और 4 रन हासिल किए। खूबसूरत शॉट। फ्री हिट है यहाँ पे साद के लिए, क्योंकि फील्डर दायरे में मौजूद है और अगर आप ओवर पिच बॉल करेंगे तो उसका रिजल्ट यही होगा, क्योंकि साद बेग बहुत ज़्यादा सेटल है पिच के ऊपर, 59 रन कर चुके हैं। ये देखें बहुत ही ऑफ साइड ऑफ स्टंप बॉल था, आसानी से इसको फील्डर के ऊपर से 4 रन के लिए खेल दिया है। जी इतनी अच्छी बॉल नहीं थी फील्ड प्लेसमेंट के हिसाब से, ओवर पिच बॉल, और बड़े अच्छे अंदाज में इसको लॉफ्ट करने में कामयाब हुए। डॉट बॉल के साथ ओवर मुकम्मल। 8 रन आए इस ओवर में, 115 पर 1। आगे गाइस आगे। Makina Chaba Aru. फ्रंट फुट बड़ा अच्छा ड्राइव करते हैं वकार, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, अथॉरिटी के साथ, लेकिन कोई ख़ास उनको फिक्र की बात नहीं है कि बाउंड्रीज अगर नहीं भी आ रही, लेकिन स्ट्राइक रोटेशन है, 50 ओवर का गेम है तो टेम्परामेंट का भी गेम है और यहाँ पर रन्स मिलेंगे। बल्ला लगा दिया यहाँ पर साथ देखने, चेस ऑन है लेकिन बॉल इतना मोमेंटम नहीं हासिल कर पाई, 2 रन्स का इजाफा। लाइन को कम्प्लीटली मिस कर दिया यहाँ पे साद ने। मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि बॉल को अंदर लेकर आएँ, लेकिन बहुत ज़्यादा लेग स्टंप पे थी ये बॉल 2 रन के लिए। यहाँ पे देखिए बॉल अंदर आई है और कीपर भी इसको कलेक्ट नहीं कर सके, लेकिन शानदार फील्डिंग बाउंड्री पे। ओवरऑल बहुत ही सेफ क्रिकेट, मेरिट पे शॉट्स खेलें दोनों बैट्समैनों ने। कोई रिवर्स स्वीप या बहुत ज़्यादा कोई कदमों का इस्तेमाल या बहुत ज़्यादा कोई स्टम्प्स को छोड़ के रूम बना के कोई शॉट्स नहीं खेले, लेकिन अच्छी प्रोग्रेस जारी है इनिंग्स की। ये अच्छी बॉल की है साद ने, बहुत ज़बरदस्त लेंथ को हिट किया है। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने ट्रिकी किया है कि ब्रेक करने की कोशिश की है, मुश्किल हुई यहाँ पे बैटर के लिए थोड़ी सी जज करने के लिए, लेकिन इस दफ़ा मुंह पे बॉल थी जिसको बहुत उम्दा तरीके से खेल दिया वकार ने 4 रन के लिए। बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव वकार की तरफ से, जो कि बहुत कंफर्टेबल नज़र आ रहे हैं ओवर पिच डिलीवरीज पे।
2-3 मौकों पे हमने देखा था ड्राइव की थी उन्होंने, ऑफ ड्राइव सीधे फील्डर के हाथ में। इस दफ़ा उन्होंने एक्स्ट्रा कवर ड्राइव खेली, बहुत उम्दा शॉट, ब्लेड के फेस को ओपन किया अलोंग द ग्राउंड। प्लेसमेंट के लिए पूरे मार्क्स मिलेंगे इनको, कोई भी फील्डर नहीं हिला, हाई क्वालिटी शॉट। ब्रेक करने की कोशिश की थी यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा मुंह में चला गया बॉल। थोड़ी सी कंसिस्टेंसी शो करनी होगी, लेकिन ऑल क्रेडिट बैटर्स के लिए जिन्होंने बहुत अच्छा खेला। डॉट बॉल के साथ ओवर मुकम्मल, 123 पर 1। ये बॉलिंग कार्ड सलमान ने खिलाड़ी का आउट किया, शाहनवाज दहानी काफ़ी इंप्रेसिव रहे, कोई विकेट उनको नहीं मिली, नन फॉर 24। उसके अलावा साजिद, अथर, साद और एम शहजाद, ये तमाम बॉलर्स यूज़ किए। 6 बॉलर्स अब तक इस्तेमाल किए हैं शान मसूद ने, और सिर्फ 3 एक्स्ट्रास कंसीडर किए हैं। तो डिसिप्लिन बॉलिंग, लेकिन विकेट की तलाश है। अब देखते हैं शान मसूद किस तरह बॉलर्स को रोटेट करते हैं, कि सबसे पहले उनका हदफ ये होगा कि इस पार्टनरशिप को तोड़ा जाए। बिल्कुल, पूरे इस इनिंग में हमने एक ही मेडन ओवर देखा है, और वो भी शाहनवाज दहानी की तरफ से आया, जिन्होंने न्यू बॉल से आगाज़ किया था अपनी इनिंग का। लेकिन थोड़ी सी स्ट्रेटजी उनकी यही रही थी कि उन्होंने चौथे और 5वें स्टंप पे टारगेट किया, क्योंकि बॉल ना तो स्विंग हो रहा था और ना तो सीम हो रहा था, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी थी। अच्छा शॉट, उम्दा ड्राइव, और बीट किया मिड ऑफ को, रन्स मिलेंगे। मिड ऑन के फील्डर चेस कर रहे हैं शान मसूद, कोई फायदा नहीं। अच्छी टाइमिंग और खूबसूरत 4 रन साद बेग के नाम। वन ऑफ द बेस्ट शॉट्स आज के दिन का। बहुत बुरा बॉल नहीं था ये, लेकिन इसको बहुत खूबसूरती के साथ खेला है साद बेग ने। बॉल के ऊपर आके ड्राइव किया, उनको पता था कि फील्डर जो है दायरे में मौजूद हैं, इतना सीधा उन्होंने उसको खेला कि कोई चांस नहीं था फील्डर के लिए इस बॉल को रोकने के लिए। मोहम्मद शहजाद ने बहुत उम्दा ट्राई की थी, मगर नाकाम रहे इसको रोकने के लिए, और बॉल 4 रन के लिए चली गई। ये जेन्युइन क्रिकेटिंग शॉट आज के दिन के बेहतरीन शॉट्स में से एक। अच्छा आगाज है इस नए ओवर का, क्विक सिंगल और अच्छी कॉलिंग। जी हाँ, शॉट मारते ही वो गए और डेंजर एंड पे खुद साथ बेग आ रहे थे, तो कॉन्फिडेंस था कि वो पहुंच जाएंगे। अच्छी क्रिकेट, अच्छी कॉल थी साद की जानिब से। उनको पता था कि फील्डर को अपने दाएं जानिब से बॉल को उठा के फेंकना होगा, तो बहुत आसानी से उन्होंने इस रन को मुकम्मल किया। तो एक अच्छी हिकमत अमली है उनकी तरफ से, 4 रन के बाद स्ट्राइक को रोटेट करना और वकार को वापस लेकर आना। वकार 38 रन स्कोर कर चुके हैं 58 गेंदों पे, और साद बेग ने 77 रन किए 81 गेंदों पे। एक अच्छी मुस्तहकम पार्टनरशिप नज़र आ रही है ये, जो कि SNGPL के लिए मुश्किल साबित हो सकती है। अच्छी एफर्ट, 1 रन मिलेगा। ज़्यादा वाइड नहीं थी, लेकिन कट करने में कामयाब हुए। और इफ्तिखार अहमद हैं कप्तान, KRL के काफ़ी मुतमईन होंगे, जबकि शान मसूद के लिए थोड़ी परेशानी कि शान मसूद जो है वो विकेट की तलाश में। लेकिन इफ्तिखार अहमद भी ख़तरनाक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, तो अब देखना ही है कि इसके बाद बैटिंग ऑर्डर में कोई तब्दीली करते हैं कि नहीं। बिल्कुल हो सकता है, इनको बहुत उम्दा स्टार्ट मिल चुका है, और ये चाहेंगे कि इनके हार्ड हिटर्स आएँ और इसको कैरी ऑन करें। उम्दा शॉट, उम्दा फील्डिंग, कवर ड्राइव, लेकिन कोई वैल्यू नहीं मिली इस शॉट की। ओवर पिच गेंद, साथ बेग शॉट्स खेल रहे हैं अपने, लेकिन अक्सर बैट्समैन ज़्यादा वेल टाइम शॉट जो है वो फील्डर के हाथ में चला जाता है। कभी कभी एजी शॉट्स जो है आपको 4 रन दिलवा देते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टॉप था ये कवर पे, शॉर्ट कवर की जानिब से। ये देखें किस तरह से बॉल इतनी स्पीड में उनके पास गया, और उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त रोका। अगर ये निकल जाता यकीनी चौका होता। आउट होंगे इस दफा। इन द एयर खेले और अच्छा ड्राइव किया था, लेकिन हवा में गेंद सीधा फील्डर के हाथ में। मिडिल जरूर किया, प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं, और बड़ी विकेट यहां पर। साद बेग एक शानदार इनिंग्स के बाद पवेलियन लौटते हुए। बहुत ही ज़बरदस्त बॉल था ये सलमान का, मजबूर किया साद बेग को कि ऑन द अप ड्राइव खेले, और वहाँ पे उन्होंने फील्डर को प्लेस किया हुआ था, सीधा उनके हाथ में कैच गया, और उन्होंने कोई गलती नहीं की उस कैच को पकड़ने के लिए। और मोहम्मद सलमान ने अपनी टीम को एक ब्रेक थ्रू दिला दिया है, कोई गलती नहीं नज़र आ रही यहाँ पे। फ्रंट फुट बिल्कुल ठीक है, साद बेग को वापस जाना होगा। बहुत ही उम्दा बॉलिंग मोहम्मद सलमान की। जी हाँ, इनका फेवरेट शॉट, सिग्नेचर शॉट, और इसी शॉट के बायस वो आउट हुए।
कवर में फील्डर और सीधा उनके हाथ में गए, ऑन द राइज खेले। बहुत ही उम्दा इनिंग्स, 77 बनाए 83 गेंदों पर, 129 पर 2 KRL। मोहम्मद सलमान जिस तरह से अपनी लाइन एंड लेंथ को वेरी कर रहे हैं, थोड़ा मुश्किल क्रिएट किया उन्होंने सात बेग के लिए उनको जज करना। अगली बॉल के लिए उन्होंने शॉर्ट बॉल भी कराई, फुल बॉल भी करवाई, और उसके बाद ये जो लेंथ थी इसको साथ थोड़ा कैजुअल तरीके से खेले, बैकफुट पे खेले, लेकिन बिल्कुल ही उनका वेट बॉल के हिसाब से नहीं आया और अपिश खेल बैठे आखिर में, और बहुत ही उम्दा कैच। कैप्टन इफ्तिखार अहमद काफ़ी खुश होंगे सात बेग की इनिंग से, और वकार को उन्होंने ज्वाइन किया है। दोनों का ताल्लुक KP से है और एक अच्छी आइडियलाइज कंडीशंस हैं इफ्तिखार के लिए। प्लेटफॉर्म सेट है और आने वाले अगले 25 ओवर्स के लिए बहुत जो मेहनत करनी थी वो सात बेग और वकार कर चुके हैं। सलमान जिन्होंने पहली विकेट भी हासिल की थी, एक और ब्रेक थ्रू हासिल किया, गोल्डन नाम साबित हुए शान मसूद के लिए, और मजीद प्रेशर अप्लाई के लिए ऑफ द बैक फुट खेल दिया इसको ऑन साइड पर, 6 रन मिलेंगे। बहुत ही आला शॉट, उम्दा कनेक्शन, पीछे गिरी हुई गेंद डिस्पैच कर दिया। बहुत ही खूबसूरत तरीके से खेला है इसने, वकार ने इस बॉल को। आधी पिच पे ये बॉल थी और उन्होंने कोई प्रेशर नहीं लिया कि एक विकेट गिरी हुई है, बैट बॉल मिला और वहाँ पे उसको 6 रन के लिए एग्जीक्यूट किया। साथ बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहे अपनी लाइन और लेंथ को लेके, हर ओवर में 1-2 बुरी बॉल नज़र आ रही है उनकी तरफ से, जो कि ईजी हो रहा है वकार के लिए उस बॉलों पे स्कोर करना। यहाँ पे SNGPL को अपनी टीम को वापस लेकर आना है। एक विकेट के बाद ब्रेक थ्रू प्रोवाइड किया इससे पिछले ओवर में, दोबारा फुल टॉस कराई, लेकिन लकी रहे कि बॉल सीधी फील्डर के हाथ में गई है। काफी नाखुश, एक फुल टॉस थी, अच्छी स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में खेल गए। चांस और काफी आगे गिरी गेंद, शॉर्ट थर्ड, मैन पे फील्डर मौजूद। अच्छी लाइन थी ये, लेना जरूरी है रेगुलर बेसिस पे। स्क्वायर ड्राइव वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप, सिंगल के साथ ओवर मुकम्मल। साथ वकार अपनी स्ट्राइक रिटेन करेंगे, 136 पर 2। लेग साइड पे बॉल किया था सलमान ने, उसको फ्लिक किया 1 रन के लिए। इफ्तिखार अब सामना करेंगे मोहम्मद सलमान का, एक बॉल खेली है और अभी तक कोई स्कोर नहीं है उनका, और वो यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि मोहम्मद सलमान ने अपने पिछले ओवर में 7 बेग को बहुत ही अच्छी बॉल करके आउट किया, 7 जो कि अपनी टीम के लिए बहुत ही मुस्तहकम नज़र आ रहे थे। और कोई स्लिप उन्होंने नहीं ली। इफ्तिखार नए बैट्समैन है, शान मसूद की तरफ से बहुत ही रेगुलेशन फील्ड प्लेसमेंट है। यही वो मौके होते हैं जहां पर आप एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं न्यू बैटर के लिए। इफ्तिखार अभी भी सिफर पे हैं, 2 गेंदे खेल चुके हैं, तो डीप स्क्वायर लेग और डीप फाइन लेग है उनके लिए, इसके अलावा डीप कवर, डीप थर्ड मैन। इफ्तिखार के पास एक्सपीरियंस ज़रूर है, लेकिन हर एक्सपीरियंस बैट्समैन जो है जब वो नई इनिंग्स आगाज़ करता है तो वहाँ पे मौका ज़रूर होता है कि आप एक्स्ट्रा क्लोजिंग फील्डर्स को करीब ला के जो है थोड़ी देर के लिए कोई विकेट निकालने की कोशिश करें। और सलमान जो है ऑलरेडी अच्छी फॉर्म में है, 2 विकेटें मिल चुकी है, कॉन्फिडेंस उनके पास है। खिंचा हुआ लेंथ एक दफ़ा फिर सलमान की जानिब से, अपनी खिंचे हुए लेंथ पे ज़्यादा रिलाई करते हैं और उसमें उनको कामयाबी भी मिल रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, इस लेंथ के साथ अगर एक स्लिप मौजूद होती तो इफ्तिखार के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता। अभी बहुत आसानी है किसी भी हल्की सी लूज डिलीवरी को उनके लिए स्ट्राइक को रोटेट करने के लिए। शाहनवाज धानी वर्ल्ड बेस्ट स्ट्रेच करते हुए, यानी थोड़ी देर में हम शाहनवाज धानी को एक्शन में देखेंगे, अपनी पहले विकेट की तलाश में है और सही मौका है बिल्कुल धानी को बॉलिंग में वापस लाया जाए।
ऑफ द मार्क इफ्तिखार, 2 इज द कॉल, लेकिन कोई फायदा नहीं और काफी वाइड थ्रो थी। डॉट बॉल्स काफी आ चुके हैं, कुछ छक्के जरूर है, लेकिन यही वो चीज़ होती है जहाँ पे आप सिंगल्स को साथ साथ रखें, क्योंकि आप ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं, एयरसेल, नेटसेट, द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, पंजाब प्रीमियर लीग, ये हमारे स्पॉन्सर जिसकी वजह से जो है हमारी एक टूर्नामेंट सर अंजाम हुआ है और सेकंड सेमीफाइनल जारी है नेशनल बैंक स्टेडियम में। अप एंड ओवर खेलने में कामयाब हुए, अपर कट, रन्स मिलेंगे यहाँ पर, लेकिन फील्डर ने काफ़ी ग्राउंड कवर किया। शाहनवाज धानी जो अपने आप को स्ट्रेच कर रहे थे और यकीनन इतने तेज थे कि उन्होंने बॉल को बड़े आराम से फील्ड किया। 28 ओवर्स अब मुकम्मल हो चुके हैं, 140 पर 2 KRL, और साथ ही कमेंट्री बॉक्स में तब्दीली, जिशान खालिद और कासिम शेख अब आपका साथ देंगे। Thank you so much, Farouk and Ayman. Wonderful shot being captured of the oval ground that is right outside this National Bank Stadium in Karachi. Can you spot your car, Qasim? Not in amongst all of that. 30 million plus people in this city, Karachi. Wonderful city. Goes for the pull shot. Couldn't control it, but manages to keep it down towards square leg. And that's a 50 for Waqar. Solid knock from the right-hander. We saw earlier Saad Beg reaching his half century, and Waqar also making sure that he makes this occasion count. The second semi-final of President's Cup one-day tournament. Yeah, wonderful half century by Waqar. He's been composed from the moment he came to the crease. Played the ball in its merit, gone after the balls, loose balls, and rotated the strike well. And he looks like he means business. I think he'll be looking for 100 here. And if he can score 100, it sets his team up, KRL, very well for a big, big total, 300 plus. Low full toss has driven it nicely. Some work to do, a bit of a diving effort from the fielder at long off that allowed the batter to come back for the second run. Good running there. Well fielded on the deep. Long off boundary, made ground well, picked it up and got it back in, but good running between the wickets. 142 for 2 now, KRL. Bit of a misfield there from extra cover. We'll just get the run now. Now Iftikhar has just joined Waqar after the dismissal of Saad Beg. 2 right-handers at the crease, so that's why you're witnessing once again Saad continuing with his spell. If they want, they can also introduce someone like Kamran Ghulam, left-arm orthodox. He's also a bowling option for SNGPL. What will be interesting to see is if Iftikhar gets one down to long off. Iftikhar is a fine player of spin. We've seen it in Pakistani colours as well. He likes to use his feet, likes to go downtown on the spinners. Yeah, he's a very, very powerful striker of the cricket ball, Iftikhar Ahmed. He made that position of his own when you talk about this number 6, number 7 position, when he used to come lower down the order, when the team needed someone to capitalize the last 5 or 6 overs in limited format of the game, talking about ODI cricket or T20 format. There he goes. Couple of steps down the pitch. He always aims to get to the pitch of the ball. Didn't quite get to it there, so just allowed it to come on and hit it out to deep cover for another single. They'll be looking to just keep rotating the strike and hit the bad ball. They're set up beautifully here. Should have stopped that in the follow through there, Saad. Another easy single given to KRL batter. 29 done. It's 148 for 2. You see a number of vehicles right outside the National Bank Stadium, but tell you what, it's still pretty tame
compared to what you're going to witness right after the sunset, Qasim. Yeah, when you get into the evening, Karachi traffic certainly builds up. I find it's all part of the fun when you visit the City of Lights, Karachi. Huge city, but a real buzz about it as well. Goes for the full shot, times it very well, Joseph, the batter. He gets a boundary of the first ball. Yeah, very friendly. Pitched halfway down the pitch. Not much pace in this pitch compared to, I think, yesterday, where the pitch had a little bit more pace in it. And Waqar is not going to miss out on that. He rocked back and smashed it through mid-wicket for another boundary for KRL. They look to be really putting their foot on the accelerator now. And SNGPL are under some serious pressure here now. Oh, that's a swing and a miss, and tell you what, wasn't far away from the off stump. Yeah, that looked to almost shave off stump. Not too sure about the shot there from Waqar. Iftikhar Ahmed, the captain, has just wandered down the wicket, probably just telling him to calm down. You're nicely set, just keep batting. Your job is to keep batting, and the rest of us can go harder around you. But I think Waqar is feeling so confident that he took that shot on, but not the kind of shot his team wants to see him play at the moment. That was definitely an unnecessary stroke attempted by Waqar. But even then, if you could just see, now it's a bit of a misfield, and it's a hard ball. And even Hasibullah, well, it bounced a couple of times before it reached to his gloves. And that's a fielding effort of Sajid Khan, who was at backward point. It's not his natural side, the left-hand side, but he was still able to make sure that he prevent the batter to go for a single. And they are in a very strong position right now, KRL. They can easily get 300 from here on. Just opening the face of the bat and playing it late. He's got all the shots in the book, Waqar. We have seen him driving straight down the ground. We earlier saw in this over that he pulled towards mid-wicket to get a boundary. Seems like he is in for a big knock today. Yeah, he's very comfortable front and back foot, which is always key. And he bats in such an important position at number 3. Such an important role. You can be in early, you can bat later in the innings. He looks like a player who can handle all types of situations. And he's nicely set here at 53 off 73 balls. Nicely timed by Iftikhar. Very good batter to be batting in this situation for KRL. He's got tons of experience. He knows that if he can stay till the next 10 overs, he can utilize the last 10 as well, Iftikhar. And we have seen him doing that on a number of occasions when he used to represent Pakistan. Yeah, this is certainly his territory. And he doesn't need to rush. He can bat himself in a little bit, get into a rhythm. But we all know how powerful he can be in the latter part of the innings. Delicate again from Waqar. He's made that shot of his own. Single to end the over. A productive one comes to an end for KRL. 30 overs done. It's 155 for 2. Won't be long now until the lights start coming on at National Bank Stadium. It's going to be a tough chase this evening. Very much in a strong position now, KRL. They should be looking to post 300, but probably significantly beyond 300 as well. Yeah, you expect an even competition between the bat and ball when both the captains get what they wanted during the toss. We saw as Shan Masood having no hesitation in bowling first, and when Iftikhar Ahmed was questioned what would he have done, he said he wanted to bat first anyway. So right now KRL are just having an upper grip of this game. Timed away towards the leg side by Waqar.
he just has this a bit of tendency of falling over when he's facing those deliveries and looking to play towards square leg especially. I think it's important then that the bowlers challenge that area and look to bowl off or middle stump on a good length, ask a question, because from Shan Masood's team's point of view, SNGPL, they need a wicket right now to try and slow the run rate down. Absolutely, because when you talk about one-day cricket, you expect a team to double the score, whatever they have achieved in the first 30 overs. And if they can manage to do that, 300 is still gettable, and 300 won't be easy to chase under floodlights. Looking at the amount of swing we saw yesterday when Esrar and Jahadad were bowling, although they were a touch expensive early on because Ma Sadakat was simply taking them to cleaners, but as soon as he got out, it became even more difficult for the remaining batters. Very good quick single. Very good quick single by Iftikhar Ahmed. Quick early call. Waqar responded, not allowing the bowlers to settle here. Just coming back to your point, 300 is never easy to chase. Doesn't matter where you're playing, what format you're playing. This is also a must-win semi-final, so it's going to have that added pressure as well. They have 8 wickets in hand. That is an important point to make. Sitting very well after almost 31 overs. Talking about KRL, we have seen in this tournament twice that they have suffered major collapses. The first time these two sides met, they couldn't chase down 141 and they were bundled out for 40. And in then one of those matches when they were up against Ghani Glass, they were chasing 201 and they were 107 for no loss. And then they were completely blown away and they got all out on 165. So you can expect their middle and lower order to be a little fragile, a little vulnerable. But for that you need to bowl well as well as a bowling unit. Uttar is bowling sensible line and length here, and a steady over by him. 158 for 2 now, KRL, after 31 overs. Sajid Khan being brought into the attack again. He's bowled economically, not only in this match but throughout the tournament, Sajid Khan, and that's what you expect from a bowler who has been performing so well in red ball cricket. Well played off the back foot by Waqar, well fielded at point. Yeah, for me, Zishan, I've often wondered why Pakistan have not considered him in the shorter format. He's obviously been very successful in red ball cricket, but he's showing here his ability in one-day cricket as well. 0 for 17 off 5.2 overs, and he's doing a good job for his team at the moment. Goes for the big hit, does the captain. Chance for the fielder at long on, and he's holed out. A blunder committed by the skipper Iftikhar Ahmed, and SNGPL picks up a huge wicket. Huge wicket for SNGPL. Sajid Khan dismisses Iftikhar Ahmed, who he played his natural game. He looked to go downtown, but he's hauled out to long on, and that's a huge wicket and an opportunity now for SNGPL to put some pressure on this KRL batting lineup. If they can get Waqar in the next 5 overs or so, is a real opportunity for them to squeeze the game and pull it back in their favour as well. But that's a big wicket. Yeah, nothing wrong with the front foot. Just couldn't resist that invitation. Iftikhar Ahmed, it was there to be hit. Just couldn't get it towards mid-wicket region. He walks back after scoring 10. KRL loses their third. They are 159 for 3.
Huge wicket for SNGPL. KRL now 159 for 3 off, 31.3 overs, going at a run rate of just above 5. I have a feeling the game is going to twist again now, and this next 5 or 6 overs will be a crucial period for both teams. Yeah, you were just mentioning why Sajid Khan is not being considered in limited overs format. Ahmed Hassan, meanwhile, walks in at number 5 for KRL. It was a huge wicket for SNGPL. Talk about the skipper who can do significant damage towards the end of the innings if he stays out there, but it was important to get rid of him, and they did that beautifully. Really good catch taken by Shehzad out there at long on. He's a good fielder. And Sajid Khan, well, the bowling change clearly worked for SNGPL. Yeah, this is going to be an interesting passage of play. Waqar is in risk of maybe getting frustrated now. He wants to up the score. The new batter at the crease needs some time to settle, and Sajid Khan, if he can continue to bowl dot balls like this to the new batter, it starts to build the pressure over the next couple of overs. Yeah, that's what he does. He just rushes through his overs, doesn't really give that much time for the batter to get settled. That's a quick single taken by Ahmed to get off the mark. A successful over comes to an end from Sajid Khan. He got rid of the opposition skipper Iftikhar. 32 done. It's 160 for 3. 6 options being utilized up till now by the skipper Shan Masood. Shahnawaz Dhani, who was a touch expensive in his first 3, came back well. None for 24. Salman has been the pick of the bowlers, got a couple of wickets. Then we just saw in the previous over when Sajid removed Iftikhar Ahmed. Athar, on the other hand, has been wicketless. Saad has been expensive, is going for a runner ball, and Shehzad has been given just 3 overs. He has gone for 20. It was important for SNGPL to break that partnership that was building between Waqar and Saad. They did that, 109 run partnership, and then just when Iftikhar Ahmed was starting to look good, just couldn't resist that invitation and lost his wicket. This is really good bowling by Athar. His last over was impressive. He's not looking to try and do anything fancy. He's just bowling good sets, bowling according to the captain's field, not offering any width, not really allowing the batters to play him square of the wicket, and not really offering them anything full to work with either. So he's doing a good job for his team, Athar. Similar performance we seen yesterday. Down the leg side, clipped away beautifully. There is no one out there. A deep mid-wicket square leg has to do a job, which he does. That allows Ahmed to come back for a couple. Yeah, see, as soon as the ball is over-pitched on this pitch, it offers the batter opportunities, and he played that very well off his legs, Ahmed. Timed it really nicely, but there was a man out on that boundary who made his way round fairly quickly. Couple added to the score. Well fielded. Yeah, it was Dhani, and he was straight away looking at that giant screen. And he wanted to see his effort. Earlier we saw Shahnawaz Dhani not being able to stop that boundary, and as soon as that replay was shown on those giant screen, he was so disappointed with that effort. And this time, well, he did well. And you got to appreciate the efforts, especially in this hot and humid weather. Now you're saying the right thing. Qasim Athar has been bowling well. He just needs, sometimes you just bowl well, but you also need some luck to go in your favor. He's getting that shape into the right-handers as well. Yeah, no, bowling really good sets. Little bit of movement, slight bit of movement off the pitch towards the batter. But it's important to just note his lines, his lengths, stump to stump, keeping the game simple. I sometimes think in this current day and age, bowlers try to do a little bit too much. Sometimes it's good to just go back to the basics, hit good areas, stick to your line and lengths, and that's what Athar is doing at this moment. Beautifully clipped.
Nicely timed, in the gap she goes, and away for boundary the ball goes as well. I think his heart might have been in his mouth for just a second, because mid-wicket was interested, but the timing of that shot, and what Ahmed has done really well here, as he's come as a new batter to the crease, he's not taken too long to settle, which then takes the pressure off Waqar at the other end. So really good start by Ahmed, and already they're building a partnership here. Yeah, since the departure of the captain Iftikhar Ahmed, it's been Ahmed who has been on strike, and he's doing a pretty decent job up till now. Like you pointed out, he's not facing a lot of dot deliveries and making sure that he gets runs on every scoring opportunity. Off the back foot, bit of a fumble, but it's going to be a dot delivery. So 6 runs coming in that over. 33 done. KRL 166 for 3. ओके ओके पीछे पीछे सलमान है ऊपर नहीं नहीं वो नए बैट्समैन के लिए ऊपर था पुराने बैट्समैन के लिए पीछे था हाँ वही मैं भी कह रहा हूँ क्या वो एरर क्यों आ रहा है सही है पॉइंट पे कामी लगवार शाह रानी ऐसी बात ठीक का He's in the middle of a very good spell, Sajid. 1 for 18 so far. Yeah, good bowling again. A little bit slower on that occasion, looking to bring the batter forward. But he just wants dot balls at the moment, Sajid. Initially, he gave himself a bit of room to place that one on the offside, since there is no one out there in the deep, but Sajid followed him. Yeah, he's a clever bowler. He knows a couple of dot balls here, and we've seen what happened in his last over. Iftikhar hauled out to long on. Sensible batting by Waqar. He knows that he has the opportunity. He's got all the time in the world to get a big score for himself. 16 more overs left after this one. I think it's crucial that Waqar stays at the crease now. He needs to bat deep into this innings. He's the set batter. Look to go on and make 100, and the rest of the batters can bat around him. Doing the right thing by keeping that feeler in the first slip to the new batter, because he's still relatively newer at the crease, Ahmed. Although we haven't really seen the ball turning a great deal on this pitch, but you got to take your chances against a new batter. Clever bowling by Sajid here. Look at these figures, 1 for 19 off 6.5 overs so far. Only gone for one single in this over. Good effort. Doesn't really like giving away a lot of runs off his own bowling. Just a run of the over, 34 done. It's 167 for 3. Pakistan International Airlines. I wonder where they're off to, or they might be arriving. One thing is for sure, OGDCL have taken their flight back home. That is confirmed. But we don't know who's taking the next flight yet. He's getting that ball to tail into the right-handers slightly. You can expect that because of a dry pace, the ball does get older and you tend to get a bit of reverse. Especially now after the 35 overs, just one ball will be used for the remaining 15, so you will expect the ball to tail in a bit. Yeah, and they need that to happen going into these final 15 overs.
I feel like they're pulling the game back at the moment, SNGPL. KRL have slowed up a little bit now as they try to continue to rebuild a partnership here. Yep, the run rate has definitely gone down a bit. It was somewhere between 5.2 and 5.3 when Iftikhar Ahmed and Waqar were operating, but now it has gone down. Yeah, I feel the pressure is starting to build on Bakar. 58 off 83. If I was the captain right now, I would want to get a message out to him to tell him to just calm down, stay on the wicket. But I just feel he's starting to get a little bit itchy now. And the bowlers are not giving him anything to work with. So whether or not he's going to try something different here. Oh, that's a good delivery. Very lucky there, Waqar. Gets an inside edge and it was so close to that leg stump. But it goes for a boundary. Sometimes you have to make your own luck, and Bakar tried to play an ambitious, late, very late shot down to third man, and he got an inside edge. Thankfully for him, it missed the stumps and went all the way to the fine leg boundary for 4. Good bowling again by Akhtar. Stump to stump, good lengths, not offering the batter anything to work with. It was a very risky stroke considering that he's regularly bringing the ball back in. Akhtar. Previously we did see him guiding the ball towards third man, but that was outside the off stump. This time the ball just came back in ever so slightly. That's why I took an inside edge. He needs to realize the importance of his stay out there, Waqar. It's a big occasion. He can make a name for himself. He can get a big score. The team can post a huge total. Going for a quick single. Opportunity and he misses. Good early call by Waqar. He was determined to make it to the non-striker's end. He dived at the end as well. Shan Masood there, the captain. One-handed pick-up. He was home. Just get the feeling there was an opportunity at both ends. Although a good dive from Waqar and he was well in. But there was an opportunity at the striker's end too. But since he got so close, and a wonderful pickup it was from the skipper, that he opted to throw towards the non-striker's end. Slightly disappointed there, Ahmed. He wanted that single. It's going to be a dot delivery. Decent one comes to an end from Akhtar. 35 overs done. It's 172 for 3, and it's time for players to get a bit hydrated for the drinks break.
चांस सर इधर पसीने से गिरा दो, चांस ले लो इधर से। 172 पे 3, 35 ओवर से खेल मुकम्मल। वकार 63 के साथ लीड कर रहे हैं। 86 गेंदों का सामना किया। अहमद 7 पर है और 15 ओवर्स बाकी है। प्लेटफॉर्म सेट है कि 260 से 70 का स्कोर, बल्कि 300 भी काफ़ी हद तक मुमकिन नज़र आ रहा है। साजिद खान कंटिन्यू करेंगे पवेलियन एंड से। जी बिल्कुल, आपने सही कहा और साद बेग और वकार की तारीफ करनी पड़ेगी। अच्छा बॉल, स्लो बॉल था, थोड़ा हल्का ब्रेक दिखने में आया है। काफ़ी देर के बाद कोई बॉल दिखा है कि जो हल्का ब्रेक हुआ है। और साद बेग की इनिंग की तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरह उन्होंने इनिंग बनाई और अच्छा सिंगल मिड ऑफ की तरफ। साजिद बैट्समैन को डिसीव करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसा ख़ास सरप्राइज पैकेज अभी तक उनकी तरफ से आया नहीं है इस मैच में। 7 ओवर कर चुके हैं, 19 रन दे के 1 आउट किया है। साजिद खान से बॉलिंग में काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं और सुई गैस की ये स्पिन डिपार्टमेंट में की रोल अदा करते हैं। इतना आसान ही साजिद के खिलाफ रन्स करना और अब थोड़ा सा ब्रेक भी नज़र आ रहा है, तो रन्स उन्होंने बहुत कम दिए, इकोनॉमिकल साबित हुए हैं। कदमों का इस्तेमाल, फील्डर मौजूद, लॉन्ग ऑन के कुछ नहीं कर पाएंगे। बॉल चली गई बाउंड्री रोप से बाहर। बहुत सीधा खेले और बहुत क्लीन स्ट्राइक अहमद की तरफ से। बहुत ही खूबसूरत फीट यूज़ की है और निकल के सीधा स्क्रीन के सीध में छक्का मारा है। बहुत ही खूबसूरत टाइमिंग, एक्सीलेंट टाइमिंग। और इस दफ़ा अहमद ने भी सोचा कि बड़ी हिट पे, ये देखें आप, बहुत ही आला फीट यूज़ किए और सामने, क्योंकि उनको आइडिया था कि इतना ब्रेक नहीं हो रहा है तो विद द ब्रेक कम खेलें। सेंसिबल सिंगल। अच्छे प्लेयर की यही एक निशानी होती है कि बड़ी अगर हिट आ जाए उसके बाद अगली बॉल अगर उनके जोन में ना हो तो वो सिंगल में कन्वर्ट करें। तो दोनों पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। 71 पे खेल रहे हैं वकार, जो बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। 91 बॉल्स खेल चुके हैं वो अभी तक। अच्छा ओवर साबित होते हुए यहाँ पे KRL के लिए, और बहुत ही अच्छा शॉट लगाया अहमद ने। 6 रन के लिए कदमों का इस्तेमाल किया और एतमाद नज़र आया। ज़्यादा देर नहीं हुई उनको आए हुए। और साजिद का ओवर, 9 रन आए इस ओवर में। 181 पर 3, 36 ओवर्स के बाद। बॉलिंग में चेंजिंग, शानवाज धानी वापस लेके आए शान। अच्छी बॉल, बेहतरीन ग्लाइड किया और सिंगल में रन उन्होंने कन्वर्ट किया डॉट बॉल को। नाउ लेट्स गो डाउन टू एमन। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त टीम KRL के हेड कोच जाफर नज़ीर। जाफर, आज आपका फर्स्ट मैच है नेशनल बैंक स्टेडियम में, तो आप किस तरह देख रहे हैं इस मैच को? जी माशाल्लाह अच्छा देख रहे हैं। सारा का सारा ये वैसे टूर्नामेंट का पहला मैच है, लेकिन हम यहाँ पे बहुत मैचेस खेले हैं पहले भी, पूरे मेरे प्लेयर्स, और इंशाल्लाह हम पूरी प्रिपरेशन के साथ आए हैं। अच्छा, हमने देखा है कि आपकी टीम हैवीली रिलाई करती है स्पिनर्स के ऊपर, तो आपका क्या प्लान होता है कि आप किस तरह से लेके चलें फास्ट बॉलर्स को और स्पिनर्स को, या स्पिनर्स आपको अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं? जी सही बात कही आपने। स्पिनर्स मेरे पास टॉप क्लास हैं, लेकिन फास्ट बॉलिंग भी मेरी पूरी है। और इंशाल्लाह मेरा पूरा पैकेज है बॉलिंग के हिसाब से, और इंशाल्लाह हम पूरा इसको डिफेंड करेंगे। आप क्या देखते हैं कि इस सेमीफाइनल में एक डिसेंट टोटल बोर्ड के ऊपर क्या होना चाहिए जो आपके बॉलर्स डिफेंड करेंगे आपकी टीम के लिए? जो प्लान है, कोशिश तो है कि 270 280 इंशाल्लाह हम करेंगे, और बाकी जितना हुआ तो इंशाल्लाह हम डिफेंड करेंगे। पूरी बॉलिंग है इंशाल्लाह हमारे पास। अच्छा, ये जो न्यू बॉल ख़त्म हो जाती है 35th ओवर पे, उसके बाद एक ही बॉल यूज़ होती है दोनों एंड से, तो किस तरह से देखते हैं कि रिवर्स स्विंग किस तरह से गेम के अंदर प्ले करता है अपना रोल? बहुत अहम रोल प्ले करता है। इसी के लिए हमने 3 फास्ट बॉलर खिलाए हैं
कि यहाँ पे सेकंड टाइम पे रिवर्स होगा इंशाल्लाह और हम उनको यूज़ करेंगे अच्छे तरीके से। Thank you for your time, Jafar. शुक्रिया। Back to the Thank you. com box. बहुत बहुत शुक्रिया एमन। 184 पर 3 अहमद 16 पे है और अभी एक हाफ अ चांस हमने देखा शाहनवाज की अपनी बॉलिंग पर। अमूमन इस तरह के फास्ट बॉलर्स जो होते हैं वो इस चीज़ को कोशिश करते हैं कि पकड़ें, क्योंकि उनकी अपनी विकेट है और ये इस दफ़ा दानी अपने आप को ब्लेम देंगे, काश टाइम पे मैं अगर बैंड होता तो ये कैच हो जाता। ड्राइव करने में कामयाब है, खूबसूरत शॉट, रन्स मिलेंगे यहाँ पर। चेस काफी टफ है, बहुत ही उम्दा फील्डिंग, भरपूर कमिटमेंट। बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा किया फील्डर ने और कंफर्म बाउंड्री को 2 रन में कन्वर्ट किया है। और इस दफ़ा अहमद जो है थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं। उमैर बिन यूसुफ थे फील्डर, बेहतरीन कमिटमेंट उनकी। ये देखें अब बहुत ही ज़बरदस्त डाइव मारी और कंफर्म 4 रन को 2 रन में कन्वर्ट किया। और उमैर बिन यूसुफ ने बेहतरीन कमिटमेंट शो की है अपनी टीम के लिए। और शाहनवाज धानी थोड़ा फुलर लेंथ पे चाह रहे हैं कि ड्राइव पे कोई मिस्टेक हो और उसके बाद बैट्समैन को वो आउट कर सकें, मगर फिलहाल अभी तक वो कामयाब नहीं हुए। शॉर्ट पिच गेंद पुल करने में कामयाब, फील्डर देखते रह गए, सर के ऊपर से बॉल चली गई। 6 रन के लिए एक बड़ा ओवर, एक महंगा ओवर साबित होते हुए और शानदार बैटिंग अहमद की तरफ से। ज़बरदस्त टाइमिंग, प्योर टाइमिंग। कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे शाहनवाज दानी शॉर्ट पिच बॉल करेंगे और एग्जैक्ट वही हुआ और बहुत ही आला टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग और छक्के की सूरत में 6 रन आए हैं। और इस दफ़ा अहमद जो है काफ़ी ख़तरनाक मूड में जाते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने टॉप गियर को लग रहा है ऑन किया है अपने, और इस दफ़ा मूड में है शाहनवाज दानी, क्योंकि जब नया बॉल था थोड़ा डिफेंसिव खेल रहे थे सारे। 5 ओवर में 35 रन दिए हुए थे और अभी देखते हैं कि इसका क्या शाहनवाज दानी रिप्लाई करते हैं। मोहताज अंदाज में बॉल को खेला कवर से जाने, डॉट बॉल, 11 रन आया 6 ओवर के आरएल के लिए। 192 पर 3। साजिद खान नवा ओवर करेंगे। आपने देखा होगा फरूक, ये बॉल थोड़ा और नीचे रहा है और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है पिच का जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है। SNGPL को ये जहन में रख के बॉलिंग करवानी पड़ेगी। अब एक और शानदार सिंगल मिड ऑन की तरफ खेलते हुए वकार ने काफ़ी कंट्रोल, कूल, काम, फोकस लग रहे हैं और अब वो कोशिश कर रहे हैं अहमद को ज़्यादा स्ट्राइक देने की। शायद कोई बीच में बात हुई है या मैसेज आया है, गियर चेंज होता हुआ दिख रहा है अहमद का। साजिद खान का पिछला ओवर थोड़ा महंगा था, थोड़ा सा प्रेशर उनके ऊपर भी होगा। एक और शानदार सिंगल मिड ऑन पे खेलते हुए साजिद को लिया। इतनी कोई ख़ास मुश्किल हो नहीं रही है बैट्समैनों को बाज़ाहिर जो दिख रहा है, और बैट्समैनों की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी कि वो खेल भी बड़ी क्लीन बैटिंग कर रहे हैं, कोई कोशिश कर रहे हैं कि कोई गलती ना हो सके। एक और शानदार सिंगल मिड ऑन की तरफ साजिद खान सोचते हुए कि कीपर हसीबुल्ला से कुछ कह रहे हैं, शायद मिड ऑन से रिलेटेड कुछ बात कह रहे हैं, क्योंकि पिछले ओवर में अहमद ने फीट यूज़ करके इनको छक्का मारा था और 6 रन हासिल किए थे। साजिद खान जो है वो लाइन बड़ी की बहुत एक्यूरेट रहती है, लेकिन बैट्समैन अगर फॉर्म में है तो कहीं ना कहीं रन निकालते हैं और इस ओवर में 3 सिंगल्स आए। खुशाइन बात यह है, लेकिन ज़्यादा कदमों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लॉन्ग ऑन बिल्कुल एज पर है, मिड विकेट बाउंड्री पे भी एक फिल्टर मौजूद, लेग बिफोर की अपील, लेकिन लेग स्टंप मिस करेगी बॉल। साजिद खान एम्पायर से बात करते हुए कि कहीं लेग स्टंप मिसिंग था, क्या था बताएं प्लीज़, और लेग बाय दिया है एम्पायर ने। और 7 ओवर हो गया है, 38 ओवर्स कंप्लीट हो गए हैं, 196 फॉर 3।
शाहनवाज धानी एक बार फिर बॉलिंग रनअप पे। बहुत ही अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉल की और एक अच्छा सिंगल लिया, आई कांटेक्ट बहुत ही अच्छा है दोनों बैट्समैनों का आपस में, शार्प सिंगल लिया है और ये सिंगल्स को रोकने की ज़रूरत है जिससे बैट्समैन के ऊपर प्रेशर डेवलप होगा और कोई ऐसा ख़ास एफर्ट नहीं थी इस पे फील्डर की जिससे रन आउट होने का चांस डेवलप हो। ये बॉल अच्छी बॉल थी और बहुत ही अच्छा खेला, सॉफ्ट बैट से खेला और सिंगल लिया दोनों ने। और तारीफ़ करनी पड़ेगी स्ट्राइक रोटेशन की थ्रू आउट द मैच, जिस तरह इस इनिंग में देखने को आया है। कल यही चीज़ मिसिंग थी OGDCL की तरफ से, पहले उसके बाद सेकंड इनिंग में भी। एक और क्विक सिंगल, अच्छी क्रिकेट, फील्डर तेजी से आए लेकिन थ्रो नहीं की उन्होंने और अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं दोनों पार्टनर्स, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। टैप करते ही नॉन स्ट्राइकर्स एंड के बैट्समैन फौरन भागे। बेहतरीन बॉलर की एक अच्छी बॉल को डॉट बॉल में फील्डर कन्वर्ट करता है, मगर इस तरह की देख रहे हैं बैट्समैन जो हैं वो छोटे सिंगल रह रहे हैं, ले रहे हैं, तो ये सर्किल में जो फील्डर खड़े हैं स्पेशली शॉर्ट कवर पे ये दूसरा सिंगल लिया गया है, तो साद खान शॉर्ट कवर पे खड़े हैं, इनका बनता है कि थोड़ा सा इस सिंगल के लिए मोहतात रहें। ऑलमोस्ट हाथों में से सिंगल ले रहे हैं दोनों बैट्समैन, ये हाजिर दिमागी बड़ी अच्छी है दोनों प्लेयर्स की। बहुत ही खूबसूरत टाइमिंग थी पॉइंट की तरफ और सीधी हाथ में गई, अगर फील्डर के हाथ में नहीं होती तो ये कंफर्म बाउंड्री थी। बहुत ही अच्छी टाइमिंग थी। और खुरम अहमद के आने के बाद भी वकार को काफ़ी एक कॉन्फिडेंस मिला, अच्छा साथ मिला, क्योंकि अहमद ने काफ़ी हद तक 4 संभाला है। रन बॉल इनिंग्स 26, चौके भी आए, छक्के भी आए, तो प्रेशर जो है वकार पे एक दफ़ा फिर नहीं है जैसे कि जब वो 7 बेग खेल रहे थे। जी बिल्कुल, ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं प्लान है, पहले 7 बेग 4 संभाले हुए थे और अब वकार कहीं ना कहीं 4 संभाले हुए और अहमद जो हैं उनको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं सिंगल डबल, और जहां बाउंड्री की बॉल है उसको कन्वर्ट करते हुए। एक और अच्छी बॉल शॉर्ट मिड विकेट पे गया, फील्डर के हाथ में सीधा। काफ़ी अच्छे टाइमिंग कर रहे हैं बॉल को और अहमद की तारीफ़ करनी पड़ेगी, अच्छा मैच्योर प्लेयर लग रहे हैं खेलते हुए, और जिस तरह की पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है स्पेशली इन दोनों के बीच में 7 बेग के आउट होने के बाद, क्योंकि इफ्तिखार आए थे और एक एज ए कैप्टन अननेसेसरी शॉट मारा उन्होंने साजिद खान को, जिसकी वजह से वो अपनी विकेटें अपनी विकेट को लूज़ किया और उस टाइम वो बनती नहीं थी शॉट। अच्छी बॉल, बहुत ही आला टाइमिंग, थर्ड मैन के फील्डर ने फील्ड किया और एक रन लिया और अहमद ने। प्योर टाइमिंग दिख रही है इनकी बैटिंग में, अच्छा बैलेंस के साथ खेल रहे हैं, शेप में लग रहे हैं, शेप बॉडी की आउट नहीं होती है जब वो बैटिंग कर रहे होते हैं। कॉन्फिडेंस है दोनों बैट्समैन के पास, ब्लेड को कि फेस को बड़े अच्छे अंदाज में ओपन किया, अगर बाउंड्रीज नहीं भी आ रही तो सिंगल्स पे इन्हिसार किया है, बहुत ही अच्छा साइन। वकार बहुत अच्छी इनिंग्स बिल्डअप की है, सेंचुरी के मुस्तहिक हैं। जी बिल्कुल, काबिल तारीफ इनिंग खेल रहे हैं और ये अच्छी बॉल, डॉट बॉल, शाहनवाज दानी बैक ट्रैक पे आए अपनी और इस तरह एक और ओवर कंप्लीट हुआ, 39 फॉर 199। और मुझे ऐसा लगता है कि इनकी ये पार्टनरशिप जो है अगर ब्रेक नहीं हुई तो एक बड़ा ग्रैंड टोटल करने में कामयाब हो सकती है KRL, क्योंकि जिस तरह स्ट्राइक रोटेट हो रही है और ख़ास तौर अहमद जिस तरह बड़ी हिट मारते हुए ज़रा से भी रहमदिली का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है कि जब तक वकार जो है वो विकेट पे हैं आपने स्ट्राइक अहमद को देनी है, और अहमद अब थोड़ा सा गियर शिफ्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो साजिद खान का ये मुझे आखिरी ओवर है और देखते हैं इसमें ब्रेक थ्रू टीम को दे पाते नहीं दे पाते हैं। 31 रन दे चुके हैं, एक आउट किया है, काफ़ी डिसेंट पेस पे बॉल कर रहे हैं। एक और अच्छी बॉल और कहीं ना कहीं अहमद मोहतात, आखिरी ओवर है, एक्सपीरियंस बॉलर है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि फील्ड यूज़ करने के मूड में। सेंसिबल बैटिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग साथ की, उन्होंने देख लिया था कि मिड ऑन की तरफ खेल रहे हैं तो वो मिड विकेट से थोड़ा सा
बाहर की तरफ खड़े हुए हैं पहले ही। पिछले 4-5 बॉलों में ज़्यादा रन आए नहीं है, एक सिंगल ज़रूर मिला है, लेकिन इस डॉट बॉल्स के साथ साथ विकेट की भी ज़रूरत है, क्योंकि पार्टनरशिप जैसे ग्रेजुअली बिल्डअप होगी मज़ीद परेशानी का बायस बनेगी SNGPL के लिए। 200 का मार का हदफ हासिल कर लिया है, अच्छा माइलस्टोन। 200 किए 40 ओवर्स के अंदर। तो अब अगले 10 ओवर में खुर्रम, व्हाट इज़ योर प्रेडिक्शन? 70 to 80 हम देख सकते हैं या मे बी बियॉन्ड दैट? ये वकार और अहमद की पार्टनरशिप है, जिस तरह जिस कंट्रोल से ये बैटिंग कर रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशन तो 300 की लग रही हैं। और अगर इसमें एक थोड़ा सा पावर पैक कोई प्लेयर आके एक छोटी सी इनिंग डाले तो हो सकता है 300 प्लस भी हो सकता है, क्योंकि पिच में ऐसा कोई ख़ास वेरिएंटियर दिख नहीं रहा। साजिद ने तकरीबन 10वां ओवर है ये, और कोई ख़ास ब्रेक नहीं दिखने में आया है, शार्प ब्रेक जिसको कहते हैं, जिससे बैट्समैन डिसीव होता है। कदमों का इस्तेमाल, हार्ड शॉट, और साजिद खान के हाथ में बॉल लगी और आखिरी बॉल थी उनके स्पेल की, बहुत जोर से बॉल लगी है, बॉल को फील्ड करने गए। आई थिंक वो ग्राउंड से शायद वो बाहर ही जाएंगे, क्योंकि उनका स्पेल भी मुकम्मल हो चुका है। और ये देखना है, बहुत ही तेज शॉट, कदमों का इस्तेमाल, कैच के लिए गए थे ये गालिबन। जी बिल्कुल, एक अच्छा अटैम्प्ट था, लेफ्ट हैंडेड था, तो इसलिए थोड़ा लेफ्ट हैंड मुश्किल हुआ साजिद के लिए। और शॉट बहुत तेज़ था, फीट यूज़ की थी, बड़े स्ट्राइक पे जा रहे थे। देखने में अब देखते हैं कि एक्चुअली क्या टारगेट जहन में रखा हुआ है, अगले 10 ओवर में 60 बॉलों पे कितने रन करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अहमद को शायद मैसेज आया है कि आप थोड़ा सा स्ट्राइक, बड़ी स्ट्राइक लें। और ज़्यादातर पिछले 3 ओवर में बॉलें उन्होंने ही फेस की हैं, और उनका इंटेंट भी क्लियर होते दिख रहा है। थर्ड पावर प्ले का आगाज़ हो चुका है, और अंपायर आसिफ आफरीदी की तरफ से जो है वो इशारा, आखिरी 10 ओवर्स हैं और अब 5 फील्डर्स जो हैं वो अब फील्डर बाउंड्री राइट पर होंगे। 202 हो चुके हैं, अभी 200 मुकम्मल के पिछले ओवर में। शाहनवाज दानी, एक फील्डर और बाहर जा सकता है, मगर शान जो है थोड़ा अटैकिंग मूड में है। स्टिल 5 लड़के सर्कल के अंदर हैं, शॉर्ट मिड विकेट हो गया, मिड ऑन, मिड ऑफ, कवर, पॉइंट, और शान अटैकिंग मूड में है और प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे हैं कि बैट्समैन अननेसेसरी कोई शॉट मारे शाहनवाज दानी को और उनको विकेट मिलने में कामयाबी हो। बैट्समैन को एक तरीके से उकसाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी कप्तानी से, और शाहनवाज दानी को कोई ना कोई प्लान दिया होगा शान मसूद ने कि हमें इस टाइम विकेट की ज़रूरत है। SNGPL कोशिश कर रही है विकेट की तलाश में कि इस तरह ये पार्टनरशिप ब्रेक करें। स्टिल अभी भी उनको कोई ऐसी जल्दी में नहीं है, दोनों बैट्समैन अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और उनको पता है अभी भी 8-10 ओवर्स हैं, शायद आखिरी 3-4 ओवर्स में कोई स्लॉगिंग या कोई पावर हिटिंग हमें नजर आए, लेकिन फिलहाल बहुत वॉचफुल हैं दोनों प्लेयर्स। असल में 50 ओवर गेम की जो है स्ट्रेटजी भी यही होनी चाहिए, ऑलमोस्ट रन बॉल खेलें आप देख रहे होंगे करंट रन रेट जो है 5.01 चल रहा है, और एंड ऑफ दी ओवर्स जो होते हैं आखिरी 5 ओवर्स में अगर आपकी विकेट पॉकेट्स में होती हैं तो फिर आप बड़ी स्ट्राइक लेते हुए डरते नहीं हैं। हिटर्स को बोलते हैं कि आप जाएं, ऑर्डर है, और आप खुली बैटिंग करें, तो वही कहीं ना कहीं जहन में प्लानिंग दिख रही है KRL की। वाइल्ड स्विंग अहमद की तरफ से टारगेट किया था, उसको काव कॉर्नर की तरफ पीछे गिरा हुआ गेंद, अपॉर्चुनिटी ज़ाया हुई, एक और डॉट बॉल। जी, जिस तरह मैंने आपको ओवर के शुरू में आपको बताया था कि शान मसूद चाह रहे हैं कि बैट्समैन गलती करे, और मिड ऑन मिड ऑफ को ऊपर रखने की वजह मुझे लग रही थी, ये शॉट मारा और मिस हो गई, बहुत ज़ोर से मारने गए और मिस हो गई। टाइमिंग कहीं नहीं दिखी इस शॉट को खेलते हुए। इंटेंट ये था कि बॉल को मिड ऑन के ऊपर से ज़ोर से मारने का, जो दिखा हमें। शाहनवाज दानी ने स्मार्टली मिड ऑन को पीछे करवाया शान मसूद से, और शान मसूद फील्डर को हिलाना चाह रहे हैं, शायद वो थर्ड मैन को शायद इशारा कर रहे थे। और शाहनवाज दानी, एक और अच्छी बॉल शाहनवाज दानी की। शाहनवाज दानी हार्ड लेंथ को हिट कर रहे हैं मुस्तकिल, कंसिस्टेंट, और कहीं ना कहीं इनकी तारीफ़ करनी पड़ेगी। थ्रू आउट सीज़न में बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, लंबे लंबे स्पेल किए हैं, आउट भी किए हैं अपनी टीम के लिए, वो रीजन की हो या SNGPL के हो, तो काफ़ी कंसिस्टेंट हुए हैं, अच्छे एरियाज़ को हिट कर रहे हैं, और ये अच्छी फील्डिंग।
और छठा जो इनका ओवर था उसमें शायद 10 से 11 रन आए थे। उसके बाद इनका जो 7वां ओवर था वो भी काफ़ी इकोनॉमिकल रहा। 8वां ओवर, अब तक 4 कंसेक्यूटिव डॉट बॉल्स हैं, तो मेडिन की तरफ जा रहे हैं। तो एक इस स्टेज पर ऐसा ओवर निकालना। जी बिल्कुल फारूक, आप सही कह रहे हैं। एक और अच्छा बॉल, थोड़ा आगे गिरा हुआ बॉल था और मिड ऑन पे खेल के बैट्समैन ने सिंगल लिया है। शाहनवाज दानी की तारीफ करनी पड़ेगी, अभी तक बैट्समैनों को खुल के खेलने की उन्होंने खुल के खेलने नहीं दिया। और जिस तरह हमने अर्ली ऑन एहतियात से खेलते हुए देखा था सात बेग को, अब वही चीज़ जो है थोड़ी वकार में दिख रही है। सेंसिबल खेल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ लंबी इनिंग को करें और एक एंकर रोल अदा करें, क्योंकि वो 77 पे खेल रहे हैं। एक और अच्छी बॉल, थर्ड मैन पे बैट का फेस खोला और सिंगल लिया है अहमद ने। 7 ओवर हो गया है, 41 ओवर्स कंप्लीट हो गए हैं, 204 पे 3 आउट KRL। बॉलर चेंज आइटम ओवर। बहुत ही खूबसूरत शॉट, फीट यूज किए और 4 रन हासिल करेंगे। बेहतरीन शॉट, प्री प्लान था, बैट्समैन ने सोचा हुआ था पहले बॉल। बॉलर अमूमन आगे ही बॉल करता है, विद इन स्टंप करता है, अच्छी कैलकुलेशन थी। पहली बॉल पे कदमों का इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा शॉट, स्ट्रेट बैट के साथ खेले। लॉन्ग ऑन की फिल्टर ज़्यादा वाइड नहीं थे, कोशिश की हाफ स्टॉप, लेकिन इतना पेस था बॉल में कि इसको रोक नहीं पाए। तो अच्छा आगाज इस नए ओवर का। पिछला ओवर काफ़ी अच्छा गया बॉलिंग साइड SNGPL के लिए। चौके के साथ आगाज 80s में आ चुके हैं वकार, और मिस कर गए, बॉल के बाउंस को जज नहीं कर पा रहे। थोड़ा सा एक्साइटेड लग रहे हैं। जैसे ही शहजाद आए हैं बॉलिंग पे, अमूमन बैट्समैन जो हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और इसी गलत फहमी की वजह से वो अपनी एक अच्छी इनिंग को ज़ाया कर बैठते हैं। तो इनको फोकस करना पड़ेगा। 82 पे पहुंच गए हैं टीम के, अभी ये उस टीम को उस ग्रैंड टोटल पे ले जा सकते हैं। अगर ये इस जगह आउट हो जाते हैं तो एक्चुअली जो माइंड गेम खेला है शान ने शहजाद को ला के कि बैट्समैन रिलैक्स होके कोई गलत शॉट खेले, और फील्ड में चेंजिंग किए, मिड ऑफ पीछे चला गया, थर्ड मैन ऊपर आया है। एक अच्छी बॉल इंड पर थी और 2 रन की बेहतरीन रनिंग हुई है, बेहतरीन आई कांटेक्ट था और इस तरह वकार 84 पे पहुंच गए हैं। जी खुरब, तीनों फील्डर्स बाउंड्री एज पे थे, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट डीप स्क्वायर लेग, और इसको टैप करते ही माइंड दोनों प्लेयर्स का काफ़ी क्लियर था। 2 की कॉल थी और दोनों रन बनाए। ये रनिंग देखें आप, बहुत ही अच्छी रनिंग है, इसमें कोई भी हेजिटेशन नहीं थी। बिल्कुल एक्सीलेंट कॉलिंग दोनों बैट्समैनों की आपस में, और बॉलर फर्स्ट एड होते हुए थोड़ा सा। एक और अच्छा सिंगल लिया है मिड ऑफ पे खेलते हुए वकार, फुल कंट्रोल में। 85 पे पहुंच गए हैं और अहमद अब फेस करेंगे शहजाद को। और कहीं ना कहीं शान के जहन में होगा कि पार्टनरशिप को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, जो आहिस्ता आहिस्ता अब अपना दोनों बैट्समैन गियर चेंज करते हुए दिख रहे हैं, रन्स की तरफ जा रहे हैं, बड़ी हिटों की तरफ देख रहे हैं। ख़ास तौर धानी जब बॉलिंग कर रहे थे उनको थोड़ा सेवली खेला, दूसरे एंड से जैसे शहजाद आए तो कोशिश की बड़ी हिटें मारने की। शान किसी फील्डर को बोला होगा और वो उस जगह पे शायद नहीं थे, तो शान थोड़े से गुस्से में लगे। कौन से फील्डर को बोल रहे हो खुर्रम आपके नज़र में? कवर। एक और खूबसूरत शॉट खेला है
मगर सिंगल रन होगा सीधा फील्डर के हाथों में डीप कवर पे। अभी सर्किल के अंदर जो है वो थर्ड मैन, पॉइंट, कवर और फाइन लेग फील्डर जो है वो सर्किल के अंदर है, और कहीं ना कहीं जहन में है शान मसूद के शहजाद की शायद इतनी पेस नहीं है, इस वजह से उन्होंने शायद थर्ड मैन को, फाइन लेग को ऊपर लेके मिड ऑन मिड ऑफ को पीछे किया है, क्योंकि पहली बॉल पे जो निकल के चार्ज किया था अहमद वकार ने, और उसके से 4 रन मिले थे उन्हें। रन्स मिलेंगे यहाँ पर सीधा फील्डर के पास डीप मिड विकेट पे। सिंगल के साथ ओवर मुकम्मल हुआ 213 पे 3, 42 ओवर्स के बाद। ये बॉलिंग कार्ड, इसमें 10 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं साजिद खान के 1 for 34। उसके अलावा 2 ओवर शाहनवाज धानी के हैं, 3 ओवर सलमान के बाकी हैं, 7 के 4 ओवर्स स्पिनर्स को शायद ना लाएं, शहजाद के 6 ओवर्स हैं। तो शहजाद के 4 ओवरों में 29 रन बने हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव पड़े हैं वो, और कहीं ना कहीं बैट्समैन भी टारगेट कर रहे हैं शहजाद को। धानी के 2 ओवर हैं। खुर्रम, तो आपको क्या लगता है कि डेथ ओवर के लिए बिल्कुल बचा कर रखेंगे या 45 ओवर या 46 ओवर से पहले को यूटिलाइज करेंगे? मुझे ऐसा लग रहा था जो धानी को लेके आए थे वो ब्रेक थ्रू देने के लिए लाए थे, कि यहाँ कहीं अगर आउट करके देते हैं टीम को, शान लेते हैं इनकी विकेट शाहनवाज धानी, तो वो उस चीज़ में उस एक प्लानिंग में कामयाब नहीं हो पाए, तो जिसकी वजह से अभी शायद बॉलिंग फिर चेंज हुई है। अथर ओवर नंबर 43 करेंगे 213 पर 3, 42 ओवर से खेल मुकम्मल। करंट रन रेट 5.07। कमेंट्री बॉक्स में तब्दीली, और अब आपका साथ देंगे सिकंदर बख्त और ज़िशान खालिद। Once again gives himself some room. Waqar couldn't get it past the skipper standing there at mid-off. But these are very important runs for both the teams. SNGPL will be ensuring that they capitalize on the start that they got, and they'll look to post a huge total on the board. That's how their batting has progressed up till now. Saad Beg with a wonderful contribution at the top of the order. 77 he got. Shahzeb was the first batter to be dismissed. Waqar is still out there. Iftikhar unfortunately couldn't convert that start into a big score, but Ahmed is supporting Waqar very well out there. He places that one up in the air. It's in the air. It's over mid-wicket. One bounce and into the fence she goes. Another boundary for the right-hander. Well, these 7 overs will decide the match. These are the crucial overs of this inning, and they have done very well. 218 for 3 is an excellent score, but now they have to utilize those 8 overs, the last 8 overs for a winning total. And both the batsmen, especially Ahmed, look at this shot. A little bit, it was not a bad ball, it was within the stumps, but he hit it very well towards the mid-wicket area for 4 runs. So these 8 overs will decide the, you can say the result of this match. Well, he was looking for that scoop. It's an opportunity of a run out, but the fielder misses. First of all, it was a risky stroke, and then it was a dangerous single. The fielder did the right thing by targeting Ahmed at the non-striker's end, because he was a little short of the crease by the time the throw reached the stumps, and he was a little gutted with that effort. I think there is some exchange of words between the bowler and but good fielding, but good running between the wicket. Very impressive running between the wicket by these players. KRL batsman did a wonderful job as far as the running between the wicket is concerned. Now, as these are the last overs, they can play the T20 game now. Initially, they did the wonderful thing. Now, it's time to play the T20 style. And this is what he's doing, Ahmed. Talking about Waqar, well, his highest list A score was 87. He has gone past that, and he's got a wonderful opportunity to convert this score into a big one. Those 3 magical figures are just 12 runs away. Another slower delivery, slightly uppish, but he'll still get that single.
Ahmed. It's a wonderful partnership for the fourth wicket between Waqar and Ahmed. Both are very busy out there, making sure that they get those boundaries and those singles. Waqar has done a good hard work, and he deserved the 3 figures you're talking about. He deserved it. He played very well, very smartly. The running between the wicket was excellent compared to the running between the wicket of the previous match, the last semi-final, and they have done a wonderful job. Let's see. Forcefully driven. Won't get it past Shan Masood at mid-off. He's just getting a little agitated, the skipper of SNGPL. Another productive over comes to an end for KRL, as after 43, they are 222 for the loss of 3 wickets. Well, these two batters are very busy out there in the middle, ensuring that they get a huge total, and women's team are very busy out there. Just outside this ground, there's a camp going on for the Pakistan women's team. You can see. I can see some recognized faces. You can see Diana Beg, Fatima Sana, who is the skipper of Pakistan's women's cricket team, just having a word with their coach. Who is the coach? Do you know him? Well, I can give a little bit advice to the PCB that if you can find lady coaches, our girls will be more comfortable in front of the ladies. It's that one in the air. It's in the gap. Long on fielder does well. He made sure that he pushed the ball inside the boundary ropes, and Waqar gets another couple. Excellent running between the wicket. It was a very good hit, and it was hit very hard. Went to the fielder quickly, but very fast. But the running between the wicket was excellent. Good fielding by the fielder, and a good throw. But the running between the wicket was excellent. Yeah, his bowling has not been up to the mark, Shehzad, but he has been very good in the outfield. He has taken a really good catch to get rid of Iftikhar Ahmed early on. Now he's just looking to give himself room on almost every delivery, Waqar. Well, I don't blame the seamers on this track. This is a typical Karachi track where there's nothing for the seamers, no bounce, no, you can say, swing or anything. So I won't blame the seamers if they are giving away the runs. This pitch is good for the spinners who can bowl tight. I will see what happens in the second inning. We have to wait and see. So now they are playing T20, which is, I think, it's a good idea and a good strategy. Just get that single towards deep mid wicket. Now Shan Masood decided to bowl first. Must be a couple of reasons because he chose to do that, because they won the previous match while chasing down the target against Sahir Associates. Shan himself got some runs during that run chase, and the dew factor must have been on his mind. But did you see the dew last night? Yeah, this is what I was talking about. I mean, we did not see any dew whatsoever, and even in winters you see dew falling around about 10 or 10:30 at night, but the match didn't go that far yesterday. Wonderful shot, you can see. It's a wonderful stadium, talking about National Bank Stadium here in Karachi. Goes for the pull shot, but Kamran Ghulam is out there at long leg. Will just get a run. So many memorable matches have been played at this ground. I still remember when India toured Pakistan back in 2004, and the first ODI was played at National Stadium, Karachi. And India were able to score 349 in the first innings, and Pakistan just lost that game by 5 runs. We saw Inzam ul Haq getting a brilliant century, and he got Pakistan very close of winning that game. Unfortunately, our batters couldn't finish towards the end. Pitched up and a quick single. This is excellent running between the wickets, because it was a half stop from the bowler and that didn't go far away from him, but they still ensured that they got that single they were after. Well, if you're talking about the memories, I will take you back a really long time back. Well, straight back to the bowler. Could not feel it properly, so another single. Let me check the
actual date, and then I'll tell you. When I was a kid, I came here to see a match between Pakistan and New Zealand, Australia, I think. So. Just let me check. He takes on the bowler and just bounces in front of Umair bin Yusuf. All three fielders are placed on the leg side boundary, and Umair bin Yusuf at square leg cut that one off. So single to end the over, 44 done. It's 228 for 3. Senior commentator Ali Yunus is also here at National Bank Stadium here in Karachi. He just returned from Dubai, where he was covering Under-19 Asia Cup. Such a lovely voice. Ali Yunus has got so much knowledge when you talk about this game. You get to learn so much when you get to meet such people. Drifting down the leg side, it's going to be runs. Well, the bowlers look desperate. They know that they're going to play another last 6 overs. It's going to be T20 right now. Well, I was talking about my memory. I was 7 years old, and that was my first match at the National Stadium, Karachi. I came here with my family and the neighbors, and it was 1964, and I saw Khalid Ibadullah scoring 166 against Australia. Powerfully driven, just gets it over the skipper. Wonderful effort there from Shan Masood, but even that wasn't enough to stop the batter collecting another boundary. Well, as I said, it's the time for T20 cricket, and they have started playing the T20 cricket. And about the memory, Khalid Ibadullah, he used to know, he died, may he rest in peace. He scored 166 against the Australians, and Abdul Qadir was there, Saeed Ahmed, Javed Burki, Hanif Mohammed, Shafqat Rana, Naseemul Ghani. All these players played in that match, and that was my first match. I watched the first match at 7 years old. He goes again, hasn't timed it. It's an opportunity for the fielder at point, and he takes a really good catch. It's a wonderful catch taken to break what was turning out to be a very dangerous partnership for SNGPL. Good catch. Well, as I said, it's now T20 game. Last 6 overs, and obviously it's the legal ball, and KRL like to score as many runs as possible. He went for a big one, got the edge, and it was a good catch taken. Eye on the ball, that's very, very important. Ahmed Hussain, 43 of 45 balls, and score is 233 for 4. New man in, Hamza Nazar at number 6, with just one job to do to ensure that KRL post a huge total after the end of their 50 overs today. They are well on course to do that. Athar just picked up his first wicket when Ahmed was looking to collect yet another boundary. It was there to be hit, but it was in the slot, and the invitation was there as well because the fielder at mid-off was inside. Shan Masood, he was looking to go over him, just like the way he did a couple of deliveries ago. The intentions were, I think, was not bad. As I said, no, it's the T20 game. Last 6 overs is T20. So they are going for the shots, and they still have 6 wickets in hand, and they have enough time and enough wickets to score runs, as many as possible.
able to win that game comfortably by a margin of 84. But good comeback this from Athar. He started off with a wide, then went for a boundary. Got wicket straight away, and after that it's been a couple of dots. That's how Ahmed lost his wicket. It was in the slot. He was looking to go over the bowler's head. The mid-off was up, so invitation was there, but he got to appreciate the effort. It was a very good catch. It's never easy to take those high catches. He's definitely getting the ball to shape in a bit. Hamza should try to take a single, and because he's a new batter, so he's not getting the proper timing right now, so he should give a chance to Waqar, who's batting at 93. Now I think Waqar is talking to him. I must be saying the same thing, just give me a chance. He's settled there, he knows he's batting very well. So Hamza should take a single. No, don't take a single right now, it's the last ball. Let him play the last 5 overs. This is exactly what he must have communicated to his partner. Just survive this ball. Instead, he goes over the bowler's head. Oh, brilliant! Absolutely brilliant this from Sajid Khan. Out of nowhere, he ran towards his left, covered a lot of ground and made sure that he took it comfortably in the end. Well, Hamza should have used his feet hitting this shot, because the ball was up to him. He should have used his feet if you want to play the T20 game. And good catch. It's a legal ball. Good catch taken by Sajid, who's already hurt his fingers. See, he didn't try the whole thing. He just pushed it up, but he could not do it. Out for a duck. He batted for 4 balls, 233 for 5. Syed Aqib Shah, the new man in. He's walked in at number 7 for KRL. We saw a couple of wickets going down in the previous over. Tucked away towards mid-wicket, running the first hard. Don't think they will risk that second run, knowing the fact that I've lost back-to-back wickets in the previous over. Now Hamza Nazar will be kicking himself. Either he should have gone with the full stroke, or he should have just pushed it instead. Timed it too well in the end. But still, he should have played the whole, as you said, the full shot, rather than just pushing it in the air. Abid Shah has only played 1 match in this present cup for the KRL and scored just 17 runs. Changing his angle now, Salman. Down the leg side. Not well kept, but lucky that the fine leg was deep at the boundary ropes. Shahnawaz Dhani. Bye is given by the on-field umpire. I thought it's a leg bye. Was it a leg bye or a bye? It was given as a bye by the umpire. Oh, okay. That's what batter was asking. Why wasn't that one given as a wide? He bowled really well, Salman, with the new ball. Especially when Shahnawaz Dhani was struggling a bit. He made sure that he stopped the flow of runs from one end. Gives himself room. Opportunity! And another one goes down. Was there any need to play that sort of a stroke, especially when you are so near to your personal milestone? Well, as I said, this was a time to play the T20 game, and he went for a big one. It's a legal ball. Little bit short of length. He tried to hit a big one towards the mid-wicket. Could not control it. Straight in the hands of the fielder, and he took a good catch. Not a good timing this time. Bad luck for Waqar. He played very well, without any doubt. 115 balls for 94. He played very well. His best in his
List A cricket matches, and 235 for 6. Sarmat Bhatti, the new man in at number 8. Flurry of wickets have gone down in the last couple of overs. We saw Athar getting a couple in his previous over, and now Salman also getting rid of the dangerous Waqar, who was all set to score his first List A century. Unfortunately, just fell 6 runs short of achieving that milestone. Shifting down the leg side, this time given as a wide by the on-field umpire. So they can still restrict KRL to under 270 from here on, SNGPL. But it all depends on how well they bowl in the last 4 overs after this one. Two left-handers now at the crease for KRL. Both relatively newer at the crease. Well, I will tell you another record I watched here. So just let me get the dates for that match. Sure, sure. Maybe I can add something to that as well, because I have been watching some matches as well. Well, I think you were not born at the time. You're too young for that. Yeah, I'll tell you some stories when I started watching cricket, so yeah. These are official scorers, making sure that each and every run is counted perfectly. Just getting a little carried away now, KRL. They're in such a strong position a couple of overs ago, but then they lost a couple of wickets in the previous over. First it was Ahmed and then Hamza Nazar, and now the batter who was so set out there, Waqar, while in search of a boundary towards the leg side, hitting it straight towards mid-wicket. One ball from here on will get them to 263, 265. Gets another wicket, does Salman. What a spell this is turning out to be from the fast bowler. Second in the over, 4th overall, and KRL are struggling now. I'm really surprised. This is the form of cricket everybody plays here nowadays in Pakistan, or around the world. It's T20, and they're not managing to score the runs required right now. And Salman is doing a good job in the end. It's a legal ball, and that ball was it's a very funny looking shot. Is he a tail ender? I think so. And it was a straight ball. He could not hit it properly. Sarmat Bhatti is gone for a duck. 237 for 7. Last couple of overs have been brilliant for the fielding side. 4 wickets have gone down in the blink of an eye. Sufyan Muqeem, the new man in. 46 overs done and dusted. That's how he lost his wicket. The ball might have stayed low a bit, and he was clearly looking at the pitch once the ball hit the stumps. Yeah, definitely the bat much higher to where the ball was. Good over
comes to an end from Salman. Couple of wickets, 46 done. It's 237 for 7. Usually talk about batting partnerships, but they are bowling in a very decent bowling partnership, Athar and Salman. Once again drifting down the leg side. Well, they have been picking up wickets in the last couple of overs, but their line has been just a little too straight for my liking. Well, I found the record. Well, that was my debut test match, and I witnessed Majid Khan scoring 100 before lunch. And that was Pakistan versus New Zealand, and the date was 30th October 1976. That was my debut test match, and I was in the dressing room and I witnessed Majid Khan, one of the majestic Khan we used to call him, a fantastic cricket player, and he scored 112, but he scored 100 before lunch. That was a record at that time. I am sure not many people have done that. So I'm also witness to that. That is the second witness. First was Ibadullah when I was 7 years old, and then when I was in the dressing room, my test debut, I saw Majid Khan scoring 100 before lunch. He was looking to guide it towards third man. A bit of confusion. Throw at the non-striker's end, but they will get that single easily. Yeah, back in those days, to score 100 before lunch is worth mentioning about. It's a record. Richard Headley was the ball. Yeah, it was New Zealand. Richard Headley was playing. Lance Keynes were playing. Richard Colling was also playing in that match. So Pakistan has scored 565. Well, that was the record I was searching for. But I'm really surprised they're not playing good T20 cricket right now. Well, he uses his feet. Does Sufyan Mukim just gets it over? The skipper Shan Mazood Edmitov, who does well, slides, pulls the ball back. Sufyan gets a couple. Well, this is the time in the last 5-6 overs you can say the SNGPL has controlled the game. They are back into the game by taking, I think, 3 wickets so far, 3 to 4 wickets during that time. And I thought they're going to score quick runs. They will go towards the 300 mark, but unfortunately they missed it. Let's see if it's a 4 or Shan. A bit close. Was it touching the line? Stopped it? No, safe. Well done. We all know that he is done. There's another thing I'd like to tell you guys, that Shan Masood was my student at the Cricket Center of Pakistan for 7 years. When he was a kid, he was, I think, 14 years old, 15 years old, or 12 years old. He used to come and pick up shot over mid-wicket. That is beautifully timed by Sufyan Mukim. Vacant mid-wicket region, and he found that gap beautifully in the end. Sufyan Mukim is playing better than the other batsmen. He's a tail-ender. 247 for 7. Hey, see, within the line of the stumps. Got from the middle of his blade, Sufyan Mukim. Comfortably got it over mid-wicket and made sure that he ends the over with a boundary. 47 done, 3 overs to go. It's 247 for 7. Change in the bowling attack now from the Combox end. We will witness Shahnawaz Dhani returning. Hasn't really been able to pick up a wicket up till now, Shahnawaz, but he has got an opportunity to get few under his belt to wrap up this innings. Yeah, he has a chance, 2 more overs to go. And I feel Sufyan is playing better than they
other players. He should have been coming in the top order. He seems to be a good batsman, which is a very good thing for him and for the Pakistan, because he plays regular cricket for Pakistan in T20. Ball just hitting the bat and the bat on its way towards the fine leg. Yeah, we all know that Sufyan Mukim can bat since he's a part of the Pakistan cricket team, especially when you talk about T20 cricket. He was also in the playing 11 when Pakistan met India for the first time earlier this year during the Asia Cup. And he hit a couple of boundaries to Jasprit Bumrah, which is not an easy thing to do for a tail-ender. But still, I'm surprised he's coming right down in the batting order. I think he's better than the other 2-3 batsmen. Oh, it's a good Yorker. Was looking to give himself room. Shahnawaz Dani followed him. Well bowled. That's a good ball. This is the ball usually you are supposed to bowl when the batsman is looking for the runs. Shahnawaz Dani with a big smile on his face. He's a very lively person. He has his this character that he always smiling, doing something or the other in the field. Yeah, you've got to have players like him in your squad, because he brings in so much energy. Well, like him is Hassan Ali. I always admire him. He's doing something or the other in the field. Oh, it's a full toss. Hasn't timed it, but the ball will just bounce in front of Shahzad at long gone. He was trying for a Yorker, I think so. Bowled a full toss. He missed it, I think. It was a good ball. Full toss is the ball which everybody's looking for, especially when you're chasing and when you have a target of scoring quick runs. Well, they have dragged things back in their favor significantly now, SNGPL, in the last 3 or 4 overs. Thrashes it. Oh, just couldn't get it past extra cover. Good effort, a very good diving effort from Saad Khan. He has already taken a couple of really good catches, and he almost stopped a boundary there. Both these left-handers are just looking to give themselves some room so that they can open up that offside, and a good stop this time from Saad. Good commitment by Saad, because it's very important. These 3-4 overs are very important for both the teams. So they have to stop as many runs as possible, and they have to score. Let's see what Sufyan does with Mr. Dhani. I'm sure he's going to go for the Yorker. Third man is up. There is a fielder at point inside. Bowls a low full toss. Another brilliant stop from Saad. Excellent fielding. As I said, Dhani is going towards him to say thank you very much. 48 overs are gone to 51 for 7. That's the first save towards his left, and then another full toss towards his right. Well, excellent fielding by Saad. Wow, very good, excellent, very energetic. Though these are the last overs, usually players get a bit tired, but he's there when he's showing that he has that energy and flexibility. That was acrobatic stuff from Saad at extra cover. Gets another wicket, does Salman. It's Sufyan Mukim who perishes. And Salman, what an effort this has turned out to be for the fast bowler in the semi-finals. A 5-4 for SNGPL. Excellent bowling, I will say, because this pitch doesn't support the seamers at all. There's no, let's check his no ball. Perfect. It's pretty in. And as I said earlier, this pitch doesn't suit for the seamers. There is no movement, no height, nothing. But if you're a good bowler, keep the ball within the stumps. That's what Salman did. Sufyan is gone for 8, 251 for 8.
Arshad Iqbal, the new man in at number 10. Who would have thought that the way KRL were going at one stage when Waqar and Ahmed were on strike, that they will find themselves in a position where they can easily get bowled out now. Excellent comeback by the SNGPL. Excellent comeback. Especially Salman has bowled his heart out. This is his 10th over. Down the leg side, Arshad Iqbal gets it towards fine leg and gets off the mark straight away. Now Salman has been outstanding. Well, I thought this is a straightforward ball. It's going for a T20 shot, but missed it completely. And Salman is a happy man, charged up, and should be. He's done an excellent job. This is his 10th over, and 5 for 42 is an excellent figure right now. And I thought they're going to go towards the 300 mark, but excellent bowling at this stage. Another dot delivery. Last few overs are just bringing SNGPL back into this game, back into this contest. And this is where Shah Masood's captaincy is so important. Now Salman has picked up a fifer. He has been outstanding. He was outstanding with the new ball as he has been with the older ball. Sajid got a wicket. He was very economical. Couple of wickets for Athar in his 10 overs. And if you look at the fall of wickets, the pattern, they were 3 for 233. And for the next 19 runs, they have lost 5 wickets. Well, excellent comeback. Excellent comeback from 233 to 258 for 8. 233 for 3 and 252 for 8. 5 wickets for just 19 runs. Shah Masood must be feeling very relaxed because of the efforts from his fast bowlers. He was just getting a little agitated when Waqar and Ahmed were getting runs easily, but now he finds himself in a very decent position. Although anything over 250 won't be that easy to chase down, but it's up in the air. Another opportunity for the fielder. Will he get his 6th? He does get his 6th. This is Herculean effort from Mohammad Salman in this all-important semi-final. And guess who? It's Saad Khan with his 3rd catch of the day. Excellent bowling and excellent comeback by SNGPL. This is the 6th wicket for just 19 runs. And we must appreciate the bowling. He bowled straight away 10 overs. And it's a legal ball. He's bowling within this crease, inside the crease rather. And he deserves his 6th wicket. This is his 6th wicket. The batsman went for a big one, but could not control it. I'm really surprised they are not playing. I don't know, everybody likes to play the T20 games, but they missed it. They missed the chance, KRL. Now they are 252 for 9 in 48.5 overs. This is what we were talking about. They have good batting order, the good batting performances in this tournament. If you look at their batting lineup till number 4 or number 5, but after them, we haven't really seen much of the scoring being done by the lower order batters. Another beautiful Yorker. It was tailing in, just missed it. New batter gets an inside edge and gets off the mark with that single towards fine leg. Another brilliant over comes to an end from Salman. Might have been a slower delivery, but from the toe end of the bat. And Saad Khan, well, he was not going to drop that. We saw in the previous over, he saved a couple of boundaries towards extra cover, and now he takes another one. Sun is about to set down here in Karachi, and it's setting down for KRL, if we talk about their innings. No, you can't say right now they are 252. They have to score 252, but we were expecting 300. And from our expectation for 300 score is 252, and they have lost 6 wickets for just 19 runs, which is not good. Excellent comeback by SNGPL.
So Shahnawaz Dhani has been given the responsibility to bowl the last over of their innings. Starts off with a brilliant Yorker. Good Yorker. This is excellent bowling from Shahnawaz Dhani. He's also bowling his 10th over, none for 44. He did well. He bowled well, but he didn't get any wickets. And Salman took all the wickets. 6. Wow. Excellent figures. Yep, 6 for 42. We have been just told by our statistician that 6 for 42 are best ever figures by any SNGPL bowler in list take format. How to slide. And another 2 runs. As you said, Salman's spell was excellent, without any doubt. It's driven, but just watch Shan Masood. He's going to switch the sides and then he slides. It is excellent way of stopping a ball. Yeah, you told us that he was your student when he was 15 or 16. Is this one of the things that you taught him? Yeah, we used to, you know what we used to do? We used to put water on the grass, and I used to make all these plays to slide. And if you throw water on the grass, it slips, and it gives the youngsters especially a good chance. Azam Khan was also my student for 3 years. Moin Khan's son, the wicketkeeper batsman. Yeah. Used to come to me too for coaching at that time at Cricket Centre of Pakistan. I think the on-field umpire, club, that South End club. The on-field umpire is just confirming from the third umpire whether it was a clean save from Shan Masood or not. I think it was a clean save. I think so, but let him confirm. Now they're satisfied. It's gone up in the air, but it's going to fall in no man's land. The best way to coach them is to find the best player who can slide and make everybody watch him. And as I said, we used to throw water on the grass, one whole area, a small area, not a big area, and then make them slide. Not a big area, and then make them slide. And that's how you teach them how to slide. Yep, these are the basics that you need to learn at school level or domestic level so that you can perform well at the top level. Shan Masood, obviously we all know, is the captain of Pakistan's Test cricket team. Brilliant Yorker, and he finally gets his first wicket, does Shahnawaz Dhani. And that also wraps up the innings of KRL, who have been bowled out for 255 heading in the second semi-final of President's One Day Cup. Excellent comeback by SNGPL, excellent. And the last wicket gone to Dhani, and he worked really hard for 10 overs, but eventually he got a wicket in the last over. And excellent comeback by SNGPL. At one stage, KRL were 3 down for just 233, and from 233 to 255 all out. Excellent comeback by Shan and his team. The umpires are going to check the front foot first. Nothing wrong with that delivery. Everything behind the line. The length was so perfect. Would have been a brilliant delivery to even a top order batter. Batter was just looking to give himself room and castling the leg stump. Happy faces of SNGPL. Salman will lead the troops and he'll take the ball with himself. Wonderful spell from Salman. 6 for 42 today. A day that he'll remember for the rest of his life. Yes, excellent bowling, without any doubt. And kept, as I said earlier, there is nothing special for the seamers, like a swing or bounce or anything. But it was a very simple, straight Karachi pitch. But he bowled to a very good line, kept on bowling to a good line, and eventually got 6 wickets, and well-deserved 6 wickets. And congratulations to him. Remember, SNGPL won the toss and chose to bowl first. That was Shahzeb, who was dismissed very early. And then we saw Saad Beg losing his wicket, courtesy of a good catch at extra cover. Iftikhar Ahmed came in. The invitation was there for the big shot, but Shahzad took his catch. Then a big partnership between Waqar and Ahmed. Ahmed lost his wicket. And it was at this stage when they start losing wickets at regular intervals. KRL, Salman came and picked up 4 wickets
with the older ball. He was turning out to be simply unplayable with the older one, and all the batters were looking to go for those big shots, and he was targeting those stumps. That's how he lost he picked up his sixth wicket, and that was a wonderful Yorker from Shahnawaz Dhani. It's not the first time we have witnessed KRL batting collapsing. It's the third time overall in this tournament, as today they lost their last 7 wickets for just 22 runs, from being 233 for 3 to getting all out at 255. Everything was done by the top and the middle order. Saad Beg with a brilliant 77, Shahzeb scoring 10, failing today. Waqar was very close to get his first listed century, went out on 94. Iftikhar Ahmed, the captain, just scoring 10. Ahmed with a good knock of 43 or 45, kept them in the game, but after that we saw none of the batter could even enter the double figures, and 3 batters went without even troubling the scorers. I believe an excellent comeback by the SNGPL. We have to appreciate their bowling. Excellent bowling figure. Shahnawaz Dhani is 9.4 overs, 1 made in 1 for 47, and Salman, who's the man of the match right now. He's the man of the tournament right for the SNGPL. He's 10 overs, 6 for 42. Excellent bowling, without any doubt. Sajid, very well bowled. 10 overs, 1 for 34. Athar, 10 overs, 2 for 62. A bit expensive. Saad, 6 overs, 37 runs, and Shahzad, 4 overs, 29 runs without any wicket. So the man of the match right now for the SNGPL is Salman. Very well done, very well bowled, and good comeback by SNGPL. So they could score 255 in their first innings today, KRL. 256 is the target for SNGPL to qualify for the finals of this President's Cup one-day tournament. It's time for a break. We'll be back with the live actions towards the other side.
अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे आपको नेशनल बैंक स्टेडियम कराची से, जहां आज खेला जा रहा है प्रेसिडेंट्स कप वनडे टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल। अब से कुछ देर पहले हमने देखा पहले बैटिंग करते हुए बैटिंग टीम KRL सिर्फ 255 रन बना सकी और अपने मुकर्ररा 50 ओवर्स भी खेलने में नाकाम रही। एक अच्छा आगाज़ फराहम किया था टॉप ऑर्डर ने, जहां हम सात बैग का जिक्र करें या वकार की उस इनिंग्स का जिक्र करें जिसमें उन्होंने 94 रन आज स्कोर किए अपनी टीम्स के लिए। लेकिन शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली सलमान की जानिब से, जिन्होंने अपने आज बेहतरीन लिस्ट फिगर्स हासिल किए। 6 विकेट्स हासिल की, शाहजेब को पहले चलता किया, उसके बाद हमने देखे आय और सात बैग की बड़ी विकेट हासिल की जब 77 पे खेल रहे थे। वकार बड़ी हिट लगाने गए लेकिन साथ ने अच्छा कैच लिया और उसके बाद उन्होंने टेल एंडर्स को खड़े ही ना होने दिया, एक के बाद एक विकेट समेटते चले गए और इस बात को यकीनी बनाया कि एक मिनी कोलैप्स हमको देखने को मिले KRL का, जो एक वक्त में 233 पे 3 खिलाड़ियों के आउट पे मौजूद है और उसके बाद अगली 7 विकेट सिर्फ 22 रन बना सकी। और इसी के साथ साथ उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया कि 255 रन तक महदूद रखा जाए आज KRL की टीम को। तो एक अच्छी वापसी देखने को मिली SNGPL की और उन्होंने अपना केस स्ट्रॉन्ग किया है इस दूसरे सेमीफाइनल में। याद रहे इतना आसान नहीं होगा इस टोटल को चेस करना, क्योंकि पिछली इनिंग्स में भी हमने देखा गेंद पड़ने के बाद कुछ नीचे की तरफ रह रही थी, तो कुछ अनऑकवर्ड बाउंस हमको ऑकवर्ड बाउंस देखने को मिला, जिसकी बदौलत फ़ायदा उठाना चाहेंगे आज KRL के बॉलर्स। दोनों ही अंपायर्स अब फील्ड में दाखिल होते हुए, एक तरफ आपको एक्सपीरियंस है जावेद आफरीदी भी नज़र आते हैं और दूसरी जानिब अंपायर भी काफ़ी तजुर्बा रखते हैं, ख़ासतौर पर डोमेस्टिक क्रिकेट का जिक्र करें। और एक अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस अब मुतवक्के होगी KRL की जानिब से। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेटर एमन। कैसे देखती हैं आज इस स्कोर को 255 का जो आज KRL ने हासिल किया? बिल्कुल खुशामदीद ज़ीशान, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि KRL आज एक बहुत अच्छा टोटल पोस्ट करेगी। जितनी ज़बरदस्त पार्टनरशिप बिल्ड हुई थी सात बेग के दरमियान और वकार के दरमियान, दोनों क्रीज पे बहुत सॉलिड नज़र आ रहे थे, लेकिन उनके आउट होने के बाद उनकी बैटिंग लाइनअप इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ना दे सकी। और सारा क्रेडिट जाता है मोहम्मद सलमान को, जिन्होंने बहुत अच्छे से पिच को रीड किया, सेकेंड स्पेल में इतना ज़बरदस्त कमबैक किया कि बिल्कुल ही पासा पलट दिया मैच का। जो एक वक्त में लग रहा था कि 300 से ऊपर रन जाएंगे, 256 पे रिस्ट्रिक्ट किया उस टीम को। और थोड़ी सी गलती हम कहेंगे कि टेल एंडर्स की तरफ से भी हुई, कुछ लूज शॉट्स भी हमें देखने को मिले जहां पे ज़रूरत नहीं थी। इफ्तिखार अहमद के जाने के बाद उनकी टीम बिल्कुल ही बैकफुट पे चली गई थी, किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, उस तरह से स्कोर्स को टेकन नहीं किया जिस तरह से सात बेग और वकार टीम को लेके चल रहे थे। और एट दी एंड उन्होंने 256 रन पोस्ट किए। लेकिन अभी हमें देखना होगा कि किस तरह से SNGPL अपनी इनिंग का आगाज़ करती है, क्योंकि शुरू में हम तवक्को रखते हैं यहाँ पे, स्पेशली इन नेशनल स्टेडियम के यहाँ पे जो है नया बॉल अच्छा स्विंग होता है। आपकी स्क्रीन्स पे दोनों ही ओपनर्स अब ग्राउंड के अंदर दाखिल होते हुए, और देखना होगा कि किस अंदाज से आज आगाज़ फराहम करते हैं SNGPL को। याद रहे हमने कल ही देखा एक अच्छा आगाज़ फराहम किया था माँ सदाकत और इमामुल हक ने भी, लेकिन जैसे ही माँ सदाकत आउट है और उसके बाद संभलने का मौका ना मिला OGDCL को, और PTV लगातार विकेट्स पे विकेट्स लेते चले गए और तमाम ही बॉलर्स अपने नाम 2-2 विकेट्स करने में कामयाब हुए, जिसमें शानदार स्पेल था अम्माद बट का, जिन्होंने लगातार अपने 10 ओवर्स ऑन द ट्रॉट फेंके और 2 बड़ी विकेट हासिल की और दोनों ही जानिब गेंद हिलाने में कामयाब रहे थे। कुछ ऐसी बॉलिंग की आज ज़रूरत होगी अरशद इकबाल की जानिब से, जो KRL के तेज़ गेंदबाज हैं, अच्छी लेंथ अच्छी लाइन पे गेंद करते हैं। और उमैर बिन यूसुफ जो आज इनिंग्स का आगाज़ करने आए हैं SNGPL के लिए, उनकी भी कोशिश होगी कि अच्छा आगाज़ फराहम किया जाए, अपनी टीम को फ़ायदा उठाया जाए अर्ली ऑन पावर प्ले का। इतने ज़्यादा मैचेस खेले नहीं उमैर बिन यूसुफ ने, कुछ पर्सनल मसरूफियात की वजह से, और उनका साथ निभा रहे हैं विकेट कीपर बैटर हसीबुल्ला। तो एक जानिब दाएं हाथ के बैटर, दूसरी जानिब बाएं हाथ के बैटर। देखना होगा किस अंदाज से बैटिंग करते हैं इब्तिदाई 10 ओवर्स में अरशद इकबाल, जिनके पास बेहद तजुर्बा है, काफ़ी अरसे से डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और अच्छी लेंथ और लाइन पे गेंदबाजी करते हैं, अच्छी रफ्तार से गेंद करते हैं। 2 स्लिप पे फील्डर मौजूद, डी फाइन लेग और दी थर्ड मैन दायरे से बाहर, 3 फील्डर ऑफ साइड पे तैनात और अरशद इकबाल तैयार हैं पहली गेंद कराने के लिए। रन अप मिस कर गए शायद पहली गेंद पे, लेकिन प्रेशर होगा उमैर बिन यूसुफ पे, पिछले कुछ वक्त में इतनी प्रोफेशनल क्रिकेट खेली नहीं है। रिसेंटली गॉट मैरिड उमैर यूसुफ, देन ही वेंट फॉर अ ट्रिप।
returning and straight away being included in the semi-finals. ऑस्ट्रम के बाहर गेंद, इसको पंच किया, शानदार आगाज उमैर बिन यूसुफ का, बल्ले के बीचों बीच गेंद आ टकराई और बाउंड्री से बाहर गई 4 रन के लिए। थोड़ी सी शॉर्ट पिच थी ये अरशद इकबाल की तरफ से, लेकिन उसको भरपूर अंदाज से खेला है उमैर बिन यूसुफ ने, अपने बैक फुट पे बहुत ही खूबसूरत पंच किया है, फील्डर्स के दरमियान से ये बॉल गई है बाउंड्री की जानिब। इतना ज़बरदस्त स्टार्ट मिल गया है, ये देखें आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल थी और कोई मुश्किल नहीं हुई यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट करने में उमैर बिन यूसुफ को, और प्योर टाइमिंग थी ये, कोई उन्होंने एफर्ट नहीं लगाई, जस्ट टाइम की है, प्लेसमेंट थी कम्प्लीटली। बहुत ही खूबसूरत शॉट उमैर बिन यूसुफ की तरफ से, यहाँ टाइम किया शानदार उमैर बिन यूसुफ ने और शानदार अंदाज से अपनी इनिंग्स का भी आगाज़ किया। एक बार फिर पीछे पड़ी हुई गेंद, एक बार फिर पंच किया, लेकिन गैप ना तलाश कर सके। मजीद एक्स्ट्रा फील्डर अब ऑफ साइड पर मौजूद, जिन्होंने अपने बाएं जानिब डाइव करके गेंद को रोका, लेकिन एक मुस्बत और कॉन्फिडेंट आगाज़ कहलाया जाएगा ये उमैर बिन यूसुफ का। याद रहे 255 रन का हदफ आज हासिल करना है SNGPL को, ताकि इनकी एक बार फिर मुलाकात हो सके PTV से, जो ऑलरेडी फाइनल तक रसाई हासिल कर चुकी है इस प्रेसिडेंट्स कप वनडे टूर्नामेंट में। पहली बॉल के बाद दूसरी स्लिप को रिमूव कर दिया है। अच्छी अटैकिंग फील्ड सेट थी, अरशद इकबाल अच्छी बॉलिंग करते हैं, बाउंस क्रिएट करते हैं, तो थोड़ी देर अगर वो स्लिप फील्डर वहाँ पे रहता तो एक एज प्रोवाइड होता KRL को यकीनन। अच्छी गेंद, और अगर आप एक बार फिर गौर करें तो पढ़ने के बाद इतना ज़्यादा बाउंस नहीं हुआ, अपने दाएं जानिब नीचे की जानिब होते हुए साद बेग ने इसको गैदर किया, और ये पहली बार नहीं हुआ जब हमने देखा बॉल थोड़ा नीचे रही हो। हमने पहली इनिंग्स में भी देखा, या इनिंग्स के ख़त्म पे भी, जब सलमान गेंदबाजी कर रहे थे और टेल एंडर्स कोशिश कर रहे थे कि पुल और हुक के ज़रिए 4 या 6 रन हासिल करें लेग साइड पे, तो गेंद इतना बाउंस नहीं हो रही थी, और क्योंकि उन्होंने काफ़ी सीधी लाइन पे गेंदबाजी की थी तो उनको विकेट्स हासिल हुई। बैकवर्ड पे काफ़ी अच्छा खेलते हैं उमैर बिन यूसुफ, कंफर्टेबल लग रहे हैं इस वक्त उमैर बिन यूसुफ अपनी क्रीज के ऊपर, बहुत अच्छा मीट कर रहे हैं बॉल के साथ। अरशद इकबाल भी अब उनकी लेंथ मिल गई है, फर्स्ट बॉल के बाद बहुत ज़बरदस्त कमबैक किया है, बिल्कुल भी रूम नहीं दे रहे। पहली बॉल पे उनसे यही गलती हुई थी कि अच्छी लेंथ को हिट किया था लेकिन रूम दिया था, जिसकी वजह से उमैर बिन यूसुफ ने बड़ा खूबसूरत 4 रन लगाए थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो विकेट्स के अंदर आए हैं थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई यहाँ पे बैटर को रन्स निकालने के अंदर। यहाँ 6-3 ऑफ साइड की फील्ड ली है अरशद इकबाल ने अपने पहले ओवर में, और ऑस्ट्रम के बाहर ही गेंद करने को तरजीह दी है। इस दौरान अगले कदम पे आए थे लेकिन कुछ बाउंस यहाँ हासिल हुआ, ऑन दी अप ड्राइव किया, गैप ना तलाश कर सके उमैर। टाइम ले सकते हैं यहाँ पे उमैर, यूजुअली T20 में वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव स्टार्ट करते हैं, लेकिन अब 50 ओवर में उनको ढलना है इस फेज़ के अंदर कि वो किस तरह से अपनी इनिंग्स को बिल्डअप करते हैं और अपनी टीम के लिए लेके चलते हैं उसको, क्योंकि 256 रन का हदफ तो है लेकिन सेमीफाइनल भी है, तो एक नॉकआउट का अलग ही प्रेशर है यहाँ पे। तो अर्ली ऑन हमें एक अच्छी पार्टनरशिप की ज़रूरत है SNGPL की तरफ से। फिर अच्छी लेंथ पे पड़ा हुआ गेंद, बैकफुट पे जाके इसको सीधे बल्ले के साथ पंच किया, लेकिन गैप ना तलाश हुआ, तो सिर्फ 4 रन हासिल हो सके इब्तिदाई ओवर में। SNGPL 256 के ताक़ुब में 4 बगैर किसी नुकसान के। नीचे करें, ये 2 लेग। 256 रन का आज हदफ मिला है SNGPL को। हसीबुल्ला अब
अपनी पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार, और उनके लिए भी पहली स्लिप पे फील्डर मौजूद है। इनफैक्ट कप्तान इफ्तिखार अहमद खुद वहां मौजूद है। आकिब शाह जो दाएं हाथ के फास्ट बॉलर हैं, राउंड द विकेट आके अहमद राउंड द विकेट आके अपने स्पेल का आगाज किया। बहुत अच्छी बॉल करवाई है अहमद ने, बिल्कुल मौका नहीं दिया बैटर को कि इस बॉल पे रन्स की जानिब जा सकें। बट वी हैव टू सी कि यहाँ पे कितनी देर तक कोई बॉलर कंसिस्टेंट रहता है, क्योंकि हमने ये देखा है कि न्यू बॉल से अब तक किसी ने भी चैनल को कंसिस्टेंसी से हिट नहीं किया। एक आध लूज बॉल दे देते हैं, उस पर ड्राइव बाउंड्री या ड्राइव कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। या कुछ ऐसा ही देखने को मिला आज पहली इनिंग्स में, जब शाहनवाज धानी कुछ महंगे साबित हो रहे थे नई गेंद से। अच्छा आगाज अब तक अहमद का, स्टम्प्स को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं, और आपको यही करने की ज़रूरत भी होती है नई गेंद से। जितना आप सीधा गेंद करेंगे उतना आप मौका देंगे कि गेंद पड़ने के बाद अगर कुछ लैटरल मूवमेंट हासिल करे तो यहाँ आप बैटर्स को मुश्किल से दो चार कर सकें। कुछ इसी अंदाज से सलमान ने भी नई गेंद से आगाज़ किया था, जब वो जहाँ से शाहजेब की इनफैक्ट बड़ी विकेट लेने में कामयाब रहे थे पहली इनिंग्स में। याद रहे आज से कबल नेशनल बैंक स्टेडियम में कुल मिला के 5 मैचेस खेले जा चुके हैं इस प्रेसिडेंट्स कप वनडे टूर्नामेंट में, जिसमें कल का मैच भी शामिल जो पीटीवी और ओजीटीसीएल के दरमियान खेला गया था, जिसमें से 3 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच अपने नाम किया। इस दौरान कदमों का इस्तेमाल किया और खेलने में कामयाब हुए, पॉइंट के ऊपर से हसीबुल्ला, और एक बार फिर हसीबुल्ला ने भी 4 रन्स के साथ किया अपनी इनिंग्स का आगाज। मिस कर गए यहाँ पे अपनी लेंथ को अहमद। देखिए इस बॉल को, शॉर्ट पेच था, उसको बहुत खूबसूरती से कट करके खेला पॉइंट फील्डर के ऊपर से, जिन्होंने भरपूर कोशिश की बॉल को रोकने के लिए, लेकिन वो नाकाम रहे। 4 रन हासिल किए हसीबुल्ला ने अपनी टीम के लिए। काफी कुव्वत थी इस स्ट्रोक में, जगह बनाई थी, 2 कदम आगे भी आए थे। अच्छी गेंद और अच्छा कमबैक किया अहमद ने। ओवरऑल एसएनजीपीएल का जिक्र करें तो इनके पावर प्ले की रन रेट या स्ट्राइक रेट आप जिक्र करें तो इतनी अच्छी नहीं रही इस प्रेसिडेंट कप वनडे टूर्नामेंट की। हम ख़ास तौर पे अगर बात करें, याद रहे ये वो टीम है जो एक मौके पे लगातार अपने इब्तिदाई 3 मैचेस जीत चुकी थी, लेकिन फिर हमने देखा कुछ प्लेयर्स की अनअवेलेबिलिटी के बदौलत वो अगले 3 मैचेस हारी, लेकिन इस बात को यकीनी बनाया कि वो आखिरी मैच जो साहिर एसोसिएट्स के ख़िलाफ़ इन्होंने यहीं नेशनल बैंक स्टेडियम में खेला था उसको जीत के वो सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर सके। फिर 2 कदम आगे आए थे, लेकिन अच्छी लेंथ पे गेंद की इस बार अहमद ने, दिफाई अंदाज से खेले हसीबुल्ला। इंटेंशन शो कर रहे हैं यहाँ पे हसीबुल्ला, बॉलर को एक जगह पे रहने नहीं दे रहे, बहुत ज़्यादा फुट मूवमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बॉलर को भी आखिर तक उनके फीट मूवमेंट पे नज़र रखने की ज़रूरत है। ये दोनों बैटर्स ऐसे हैं जो कि पावर प्ले का भरपूर फ़ायदा उठाना जानते हैं, और यही बात इन बॉलर्स के इल्म में होगी, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो आखिर तक उनकी कदमों पे नज़र रखें और उनकी इंटेंशन को जज करें कि वो क्या शॉट खेलना चाह रहे हैं। बैकफुट पे जाके एक बार फिर कट किया, गैप तलाश किया हसीबुल्ला ने, कोई मौका नहीं पॉइंट या थर्ड मैन के फील्डर के पास गेंद को रोकने का, और एक और 4 रन बआसानी हासिल किए। तो 2 ओवर्स यहां हुए मुकम्मल, एसएनजीपीएल 12 बगैर किसी नुकसान के। बहुत ज़्यादा विड दे दी इस बॉल पे, और खूबसूरत तरीके से हसीबुल्ला ने इस बॉल को बाउंड्री के लिए खेला है, एक बेहतरीन कट शॉट खेला है, बहुत अच्छी हेड पोजीशन थी, फील्डर्स के बीच से गैप तलाश किया। 12 रन मुकम्मल किए हैं एसएनजीपीएल ने, और ये 12 रन बाउंड्रीज के जरिए हासिल किए हैं।
काफ़ी अच्छा मिडिल करते हुए नज़र आ रहे हैं उमैर बिन यूसुफ। कुछ हद तक अपने आप को बदकिस्मत भी कंसिडर करेंगे कि काफ़ी गेंदें बल्ले के बीचों बीच ज़रूर आके लगी, लेकिन बाउंड्री ना हासिल कर सके। ऑल्दो इनिंग्स की पहली गेंद पे शानदार स्ट्रोक से अपने इनिंग्स का आगाज़ किया था और 4 रन हासिल किए थे। इससे अच्छी बात और क्या होगी कि अगर बॉल आते साथ ही मिडिल हो रहा हो, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है किसी भी बैटर को। और फर्स्ट बॉल पे बाउंड्री भी मिली, लेकिन अरशद इकबाल ने शानदार कमबैक किया 5 डॉट डिलीवरीज की लाइन बाउंड्री कंसीड करने के बाद। इस दौरान तेजी के साथ रन मुकम्मल करना होगा और कर भी पाएंगे। हसीबुल्ला ज़्यादा दिलचस्पी जाहिर कर रहे थे इस रन को मुकम्मल करने के लिए। लेट रिएक्ट किया उमैर बिन यूसुफ ने, लेकिन इस बात को यकीनी बनाया कि वो भी नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर वक्त पे जा पहुंचे और ये सिंगल मुकम्मल करें। सॉफ्ट हैंड से खेला था और बहुत अच्छी अवेयरनेस हसीबुल्ला की। सिंगल लिया नहीं है, एक्चुअली चोरी किया उनके फील्डर्स के हाथों से। यहाँ कोशिश करना होगी KRL की टीम को कि मुश्किल बनाया जाए इस हदफ को और अर्ली ऑन विकेट्स हासिल की जाए, क्योंकि जिस अंदाज की बैटिंग लाइनअप है SNGPL के पास, यहाँ विकेट्स ही मैच जिताएंगी KRL को। ये मॉडर्न डे क्रिकेट में 256 रन का हदफ इतना मुश्किल कंसिडर नहीं किया जाता जब आपकी रिक्वायर्ड रन रेट 5 से कुछ ऊपर हो, और ख़ास तौर पे जब आपके पास इतने मुस्तनद बैटर मौजूद हों, जिनमें शान मसूद और कामरान गुलाम का आना बाकी हो। और ये वो हम स्ट्राइक रेट का जिक्र कर रहे थे SNGPL का, कि इब्तदाई ओवर्स में इतनी ख़ास नहीं है और इनकी स्ट्राइक रेट सिर्फ 77 थी थ्रू आउट द टूर्नामेंट, जबकि KRL की इनसे मज़ीद बेहतर। और एवरेज का भी जिक्र करें तो वो काफ़ी कम, यानी पहली विकेट के लिए इतने ज़्यादा रन्स देखने को नहीं मिले SNGPL के लिए। इस दौरान गाइड किया, लेकिन पॉइंट पे फील्डर मौजूद थे। शाहजेब एक रन बासानी मुकम्मल किया। बहुत अच्छी रनिंग देखने को मिल रही है दोनों बैटर्स की तरफ से, लेकिन अरशद इकबाल ने भी बहुत ज़बरदस्त चैनल को हिट किया है। कुछ आसान नहीं दे रहे। उनको पता है कि ये दोनों बैटर्स इस वक्त बाउंड्री की तलाश में हैं पावर प्ले के अंदर, तो स्ट्राइक रोटेशन इतना मसला नहीं करेगी इस पावर प्ले में किसी भी बॉलर के लिए। दोनों ही बैटर्स ने इस बात को यकीनी बनाया है कि जैसे ही गेंद फील्डर से दाएं या बाएं जानिब जाए तो वो उस रन को मुकम्मल करें। काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। हार्ड लेंथ पे हिट करते हुए नज़र आ रहे हैं अरशद इकबाल। ऑल्दो इतनी लैटरल मूवमेंट अब तक इनको हासिल ना हो सकी है, लेकिन अपने तजुर्बे का भरपूर फ़ायदा उठाया है मिसबाउल हक, जो कोचिंग सेटअप का हिस्सा है, इनफैक्ट मेंटोर हैं SNGPL के। और ना ही सिर्फ मिसबाउल हक, इनफैक्ट मैच से कबल हमने देखा हफीज़ भी मसरूफ़ थे। ना ही सिर्फ मुस्तनद नाम इनकी स्क्वाड में मौजूद, बल्कि काफ़ी तजुर्बेकार कोचिंग सेटअप भी SNGPL के पास। नजरें मरकूज इस मैच पे कामरान गुलाम की। पे पड़ी हुई गेंद इसको खेला मिड विकेट की जानिब और एक बार फिर तेजी के साथ रन मुकम्मल किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। एक और रन हासिल करने में कामयाब हुए उमैर बिन यूसुफ। 3 के बाद SNGPL 15 बगैर किसी नुकसान के। नेशनल बैंक स्टेडियम का ये खूबसूरत मंजर, जहाँ पे प्रेसिडेंट्स कप वनडे टूर्नामेंट के नॉकआउट मैचेस और फाइनल मुनक्किद किया जा रहा है। याद रहे इससे कबल 4 मैचेस प्रेसिडेंट्स कप वनडे टूर्नामेंट के भी यहाँ खेले गए अंडर फ्लड लाइट्स। लेग स्टंप पे गिरी हुई गेंद, इसको खेलना चाहते थे फाइन लेग की जानिब। देखना होगा कि बैट को टकराई या पैड को। लेग बाई का इशारा अंपायर की जानिब से, लेकिन मजीद 4 रन यहाँ हासिल होंगे SNGPL को। बाउंड्रीज में डील कर रहे हैं इस वक्त उमैर और हसीबुल्ला, लेकिन इस दफ़ा बाई का रन लग रहा है। लेग बाई के 4 रन्स मिले हैं।
SNGPL की टीम को लकी रन्स, लेकिन लाइन मिस की है यहाँ पे अहमद ने यकीनन। पिछले ओवर में 2 बाउंड्रीज दी थी और इस दफ़ा ओवर का आगाज़ भी बाउंड्री से हुआ। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद हवा में खेले, एक बार फिर गैप तलाश किया उमैर बिन यूसुफ ने पहले फालने की जानिब, और इस बार थर्ड मैन के दाएं जानिब से खेलने में कामयाब हुए उमैर बिन यूसुफ, और अपनी शानदार फॉर्म का सिलसिला इनका जारी। बहुत ज़्यादा लूज बॉलिंग कर रहे हैं अहमद, रूम प्रोवाइड कर रहे हैं। उमैर बिन यूसुफ बहुत कंफर्टेबल हैं अपने बैक फुट पे, वो उसी रूम की तलाश में जो अरशद इकबाल को नहीं दे रहे थे। लेकिन ये देखिए यहाँ पे आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल की, छठे स्टंप पे बॉल था, थोड़ा सा एयर में भी बाहर निकल गया। बहुत शानदार तरीके से उसको थर्ड मैन पे 4 रन के लिए खेला है। फिर ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर गेंद, लेकिन लेंथ को ऑल्टर किया, काफ़ी आगे गिराई थी ये गेंद। इफ्तिखार अहमद बतौर कप्तान खुद पहली स्लिप पे मौजूद हैं और मुसलसल एक्टिव नज़र आ रहे हैं। इफ्तिखार अहमद काफ़ी एनिमेटेड थे टॉस के दौरान। कुछ ना कुछ हद तक डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर होगी जब इनकी टीम 255 रन बना सकी, ऑल्दो जिस तरह से आगाज़ मिल चुका था, लगभग 280 या 290 के करीब जाना चाहिए था आज KRL को, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहे कि इतने रन स्कोर ना कर सके। अगले कदम पे आके ड्राइव किया, शानदार टाइमिंग और प्लेसमेंट का मुजाहरा उमैर बिन यूसुफ के लिए। एक और 4 रन हासिल होंगे। कुछ भी काम नहीं कर रहा इस वक्त अहमद के लिए। फुल बॉल कराने की कोशिश की थी, स्विंग जनरेट करना चाहते थे, लेकिन ये बिल्कुल हाफ बॉल ही बनी और बहुत शानदार तरीके से इसको ड्राइव किया कवर फील्डर के बीच से 4 रन के लिए। उमैर बिन यूसुफ बहुत कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं क्रीज के ऊपर, प्योर टाइमिंग है ये। कुछ ऐसा मालूम होता है कि तेज़ गेंद कराने की कोशिश में है अहमद, और यही तेज़ कराने की कोशिश में अपनी लाइन और लेंथ को नहीं संभाल पा रहे। इतना आसान नहीं होता नई बॉल को कंट्रोल करना। 30 गज के दायरे से बाहर से इनका रनअप का आगाज़ होता है। इस दौरान अपने 4th और 5th स्टंप चैनल को टारगेट किया, और ये अच्छी लाइन है। कोशिश करना होगा कि इस बॉलिंग का कैप्टन के पास भी कोई जवाब नहीं है। फुल, वाइड एंड शॉर्ट तीनों बॉलें हमने देखी हैं इस ओवर के अंदर, और उमैर बिन यूसुफ ने भरपूर फ़ायदा उठाया है अहमद के इस ओवर का। 2 ओवर में 20 रन दिए हैं अहमद ने, और उमैर बिन यूसुफ 18 रन कर चुके हैं। देखें, शॉर्ट बॉल कराने की कोशिश की और बॉल बहुत ही स्लो रहा, ना बाउंस आया ना स्पीड आई, और बहुत आसानी से उमैर बिन यूसुफ ने पुल शॉट खेला है 4 रन के लिए। बर्क रफ्तार आगाज SNGPL का, 4 ओवर्स में 31 रन समेट चुके हैं अब तक। एक जानिब हसीबुल्ला काफ़ी सेटल्ड हैं और दूसरी जानिब उमैर पासानी बाउंड्री समेट रहे हैं इस पावर प्ले के दौरान, और फ़ायदा उठाया है भरपूर इस दायरे का। ड्रोन शॉट का यह खूबसूरत मंजर जो कैप्चर कर रहा है नेशनल बैंक स्टेडियम। 2 कदम आगे आए, अंदरूनी किनारा लिया, और अरशद इकबाल ने दिलाई KRL को उनकी पहली कामयाबी। बहुत ही शानदार बॉल अरशद इकबाल की जानिब से। हसीबुल्ला वहीं के वहीं खड़े रह गए, मौका भी नहीं मिला कि मूवमेंट कर सकें, ज़रा सी बॉल की पिच पे जा सकें। बिल्कुल ही रीड नहीं कर सके इस बॉल की लेंथ को, और बोल्ड हो गए। ब्रेक थ्रू प्रोवाइड कर दिया है अरशद ने। देखना होगा कि ये नो बॉल तो नहीं थी कहीं। परफेक्ट डिलीवरी करार दी जाएगी अरशद इकबाल की, और ये सिला मिलता है जवाब। अच्छी लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करें। 2 कदम आगे आए थे, एंगल की थी लेफ्ट हैंडर से, अंदरूनी किनारा लिया और गेंद स्टंप्स को जा टकराई। नाखुश नजर आए हसीबुल्ला, किस्मत ने आज साथ नहीं दिया हसीबुल्ला का। 9 रन बना के डगआउट में वापस जाते हुए SNGPL 31 1 विकेट के नुकसान पे। आने वाले बैटर SNGPL के कप्तान शान मसूद, बाएं हाथ के बैटर हैं, तजुर्बे की कोई कमी नहीं।
अच्छी फॉर्म में भी हैं शान मसूद, सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं वनडे टूर्नामेंट में और अब इनकी टीम को एक बड़ी इनिंग्स की ज़रूरत। मौका था आज हसीबुल्ला के पास भी कि वो इस शाम को अपने लिए यादगार बनाते, लेकिन ऐसा हो ना सका और अरशद इकबाल विकेट लेने में कामयाब हुए। काफ़ी डिजेक्टेड नज़र आ रहे हैं। बड़ी इनिंग्स आपको खेलना हो तो आप कोशिश करते हैं कि अच्छा खेलें और किस्मत भी आपका साथ दे, लेकिन ऐसा हो ना सका आज हसीबुल्ला का। पहली गेंद पे 1 रन की ताकुब में थे, लेकिन हर वक्त इनकार किया उमैर बिन यूसुफ को, जिनको मौका मिला क्रीज में वापस आने का। बहुत सही कॉल थी ये शान मसूद की। और ये वो रिप्ले जो फर्स्ट ब्रेक थ्रू मिला है, कट करना चाहते थे इस बॉल को और कोई बिल्कुल भी बॉल के पीछे नहीं आए, बहुत सॉफ्ट एंड से खेलना चाहते थे, इनसाइड एज लग के बोल्ड हो गए। बड़ी स्क्रीन पे अब तक रिप्ले देख के काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं अपने इस शॉट से हसीबुल्ला। अच्छी गेंद फिर अंदरूनी किनारा लेके पैड्स को टकराई शान मसूद के। काफ़ी जॉली कैरेक्टर हैं शान मसूद, ट्रू जेंटलमैन कहा जाता है इनको, सॉफ्ट स्पोकन है और क्रिकेट टर्म्स की बात करें तो बड़ी इनिंग्स खेलना जानते हैं। ज़बरदस्त लाइन थी अरशद की तरफ से। यूजुअली हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंडेड बैटर और राइट हैंडेड बैटर कंफ्यूज करता है बॉलर को, लेकिन अरशद ने अपनी लाइंस को बहुत टाइट रखा हुआ है। 4 स्टंप पे टारगेट कर रहे हैं और शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल कर रहे हैं, बिल्कुल रूम प्रोवाइड नहीं कर रहे बैटर्स को। बैकफुट पे गए, कट किया, जगह बनाई थी, मुकम्मल तौर पे रोक नहीं पाए, लेकिन नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे गेंद टकराई है स्टंप्स पे, लेकिन बासानी रन मुकम्मल कर चुके थे शान मसूद। एक अच्छी फील्डिंग एफर्ट KRL की जानिब से। यकीनी 4 रन बचाए हैं पॉइंट के फील्डर ने। इतना लूज बॉल नहीं था, लेकिन उसको खेला बहुत खूबसूरती के साथ शान मसूद ने। एक इंतहाई खूबसूरत बैकफुट पंच था, लेकिन उससे भी खूबसूरत फील्डिंग थी जिसने यकीनी 4 रन बचाए। यहाँ शाहजेब खान थे जिन्होंने पहले बाएं जानिब डाइव करके गेंद को रोका और उसके बाद उनके करीबी फील्डर थे जिन्होंने गेंद को थ्रो किया नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे, लेकिन तब तक शान मसूद बासानी आ चुके थे। अच्छी राइजिंग डिलीवरी, इतना दराज कद नहीं है उमैर बिन यूसुफ का, तो ये लेंथ इनको ट्रबल कर सकती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी लाइन और लेंथ रख रहे हैं उमैर बिन यूसुफ को, मुश्किल क्रिएट कर सकती है उनके लिए। स्लिप फील्डर भी मौजूद है, लेकिन वो बहुत सुकून के साथ एक बुरी बॉल का वेट कर रहे हैं। उनको पता है कि जितना लंबा वो क्रीज के ऊपर रहेंगे उनको यकीनन बॉल्स मिल जाएंगी जिसको वो रन के अंदर कन्वर्ट करते रहेंगे। तो यहाँ पे एक अच्छी पार्टनरशिप की ज़रूरत है शान मसूद के दरमियान और उमैर बिन यूसुफ के साथ। कप्तान बदस्तूर पहली स्लिप पे मौजूद, अगले कदम पे आके इसको ड्राइव किया, लेकिन मौजूद थे फील्डर मिड ऑफ पे। एक शानदार ओवर इख्तिताम पजीर हुआ अरशद इकबाल का, हसीबुल्ला की विकेट हासिल की 5 के बाद SNGPL 32 1 विकेट के नुकसान पे। SNGPL का डगआउट जहां पे आप देख सकते हैं बिलावल भट्टी जो आज प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं, और उनके दाएं हाथ पे बैठे हैं इनके मेंटोर, और अब अपनी सीट संभाली है मोहम्मद हफीज़ ने जो कोच हैं SNGPL के। साथ साथ अगर हमारे कैमरामैन भी दिखा सकें तो शज़र मोहम्मद इनके फिटनेस कोच हैं जो शुएब मोहम्मद के साहबजादे हैं। काफ़ी मेहनत करते हैं शज़र मोहम्मद अपने प्लेयर्स के साथ, खुद तो अपने आप को बहुत फिट रखा हुआ है और कोशिश करते हैं कि प्लेयर्स भी फिट रहें और अपनी पूरी 100% दें, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो या ख़ास तौर पे फील्डिंग हो। बहुत ही अच्छे ट्रेनर हैं शेजर, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो खुद भी एक क्रिकेटर थे, तो उनको पता है कि क्रिकेटर्स को, बैटर्स को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और बॉलर्स को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है ग्राउंड के अंदर। देखना होगा कि किस अंदाज से अब गेंदबाजी करते हैं अहमद, जो महंगे साबित हुए हैं अब तक, और इनको आड़े हाथों लिया था उमैर बिन यूसुफ ने, ख़ास तौर पे पिछले ओवर में जब 3 बाउंड्रीज हासिल की थी, चाहे वो बैकफुट हो या फ्रंट फुट हो।
अपने टैलेंट का लोहा मनवाया था उमैर बिन यूसुफ ने, जिसकी बदौलत अब तक वो अच्छी स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए हमें नज़र आए हैं। आज इनके पास भी एक मौका है, यंगस्टर हैं, बड़ी ओकेजन है, एक बड़ा स्कोर अपने लिए हासिल कर सकते हैं। हमने आज देखा वकार ने शानदार बैटिंग की, सिर्फ 6 रन से पीछे रहे अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए। इस दौरान तेज़ी के साथ रन मुकम्मल करना चाहते हैं, थोड़ा सा स्लो थे इफ्तिखार अहमद मिड ऑन की जानिब, इनको इतना जल्दी पिक ना कर सके, जिसकी बदौलत मौका मिला शान मसूद को ये सिंगल हासिल करने का। बहुत अच्छी अवेयरनेस थी शान मसूद की, उनको पता था कि फील्डर एज ऑफ द रिंग से आ रहे हैं। और अब फिर से देखना होगा कि अहमद किस तरह से बॉलिंग करते हैं उमैर बिन यूसुफ को, जिन्होंने लास्ट ओवर में तकरीबन 12 रन स्कोर किए थे अहमद के ख़िलाफ़। अच्छी कप्तानी कही जाएगी इफ्तिखार अहमद की, क्योंकि इससे कबल हम देख रहे थे अरशद इकबाल के ओवर में स्लिप पे खड़े थे, जबकि अहमद की गेंदबाजी के दौरान उन्होंने अपने आप को मिड ऑफ पे खड़ा किया है। कुछ ना कुछ गुफ्तगू कर रहे होंगे अपने बॉलर से, जो कुछ हद तक स्ट्रगल कर रहे हैं अभी। ये बेहतर गेंद है, स्टम्प्स को टारगेट करना है और इसी लेंथ पे गेंद गिरानी है अगर आपने कामयाबी समेटनी है अपनी टीम के लिए। स्किटी से बॉलर हैं अहमद, अगर वो इस लाइन को हिट करते रहेंगे तो इतना इजी नहीं होगा बैटर का कि उनको चार्ज कर सकें, लेकिन उनको सिर्फ वहीं रन्स पड़े हैं जहाँ पे उन्होंने लूज डिलीवरीज की हैं। तो अब बिल्कुल ज़बरदस्त है इफ्तिखार अहमद की अप्रोच कि वो खुद गए हैं बॉलर के साथ बात कर रहे हैं, ना कि उनको चेंज कर दें रन्स पड़ने के बाद, क्योंकि यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से उनको वो कॉन्फिडेंस मिलेगा। और स्पेशली ये एक सेमीफाइनल है, उसका एक अलग ही प्रेशर होता है, तो वहाँ पर अगर बॉलर अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा तो उसको हमेशा वो याद रहेगी और वो उस फेज से निकलेगा जिसमें वो स्ट्रगल करता है। या बिल्कुल, इन नॉकआउट मैचेस में जो भी अच्छा परफॉर्म करता है उनको परफॉर्मेंस को याद रखता है, और कुछ ऐसा ही हुआ आज पहली इनिंग्स में जब सलमान ने 6 विकेट्स हासिल की। इस दौरान एक बार फिर अगले कदम पे आए और एक बार फिर मुख्तसर सा गैप था बैकवर्ड पॉइंट और कवर के दरमियान, जिसको खूबसूरती से तलाश किया उमैर बिन यूसुफ ने और एक और 4 रन हासिल किए। लाइन मिस कर दी है यहाँ पे अहमद ने, बहुत ज़्यादा आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल थी जिसको बैकफुट पे कट किया उमैर बिन यूसुफ ने और शानदार तरीके से 4 रन हासिल किए अपनी टीम के लिए। वेट अच्छा ट्रांसफ़र करते हैं उमैर बिन यूसुफ, लेंथ को जल्दी पिक करते हैं और जिसकी बदौलत अब तक हमने देखा है इनको कोई मुश्किलात नहीं आई हैं, ख़ास तौर पे अहमद के ख़िलाफ़। अगर इस अंदाज की ही गेंदबाजी करते रहे तो मजबूर करेंगे इफ्तिखार अहमद को कि इस एंड से कुछ तब्दीली लेकर आए वो बॉलिंग में। बहुत बड़ा ड्राइव, लेकिन इस बार कप्तान खुद पहुंचे गेंद की लाइन में, उसको रोका। स्पिन ऑप्शंस भी मौजूद हैं काफ़ी KRL के पास, बतौर कप्तान खुद काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है अब तक इफ्तिखार अहमद ने भी। और याद रहे जब यही दोनों टीम्स आपस में मद्दे मुकाबल थी चंद रोज़ कबल UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, वहाँ हमने देखा इफ्तिखार अहमद ने भी 3 विकेट्स हासिल की थी, जबकि 141 रन के ताक़ुब में सिर्फ 40 ही रन बना सकी थी KRL की टीम। अब वहाँ से कुछ ना कुछ यादें होंगी जिसको बुलाना चाहेंगे आज फतह हासिल करके KRL। अगले कदम पे आके ड्राइव किया, लेकिन अच्छी एफर्ट फील्डर्स की, यकीनी बाउंड्री बचाई यहाँ फील्डर ने और प्रोडक्टिव ओवर इख्तिताम पजीर हुआ SNGPL के लिए। 6 के बाद पहुंचे 37 1 विकेट के नुकसान पे। पीछे पीछे Yes, one. Bowling round. Shan bowling round. और बॉलिंग में अब तब्दीली की है इफ्तिखार अहमद ने, ऑल्दो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फार एंड से किसी को लेकर आएंगे, इंस्टेड वो कॉम बॉक्स एंड से अब अरशद इकबाल को रिप्लेस कर रहे हैं इफ्तिखार अहमद। काफ़ी पैशनेट हैं इफ्तिखार अहमद, चाहे वो बैटिंग कर रहे हों, बॉलिंग कर रहे हों या फील्डिंग करते हुए हमें नज़र आ रहे हों, काफ़ी फिट हैं। कदम पे आके ड्राइव किया शान मसूद ने, लेकिन
बॉलर की ही जानिब खेल सके। शानदार एवरेज है शान मसूद की, अगर हम लिस्टे कैरियर में उन प्लेयर्स का जिक्र करें जिन्होंने कम से कम 100 इनिंग्स खेली हैं अपने लिस्टे कैरियर में। कदमों का इस्तेमाल किया शान मसूद ने, फायदा उठाया दायरे का और गेंद को पहुंचाया मिड ऑन बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए। इंतहाई खूबसूरत शॉट शान मसूद की जानिब से, कोई फील्डर मौजूद नहीं था लॉन्ग ऑन की जानिब, एक फील्डर था बाहर लॉन्ग ऑफ पे, उनको पता था कि कुछ भी अगर उनकी जोन में आ जाएगा तो वो उसको आराम से लिफ्ट कर देंगे। नया बॉल है, इतना ब्रेक होगा नहीं और लेंथ भी वहाँ पे अवेलेबल थी शान मसूद के लिए इस शॉट को खेलने के लिए। ऐसे अंदाज से बैटिंग करते हैं शान मसूद, खास तौर पे अपनी इनिंग्स के आगाज़ में, चाहे लिस्टे फॉर्मेट हो या टेस्ट मैचेस में जब वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। और सेंसिबल बैटिंग, 6 रन हासिल करने के फ़ौरन बाद ही 1 रन हासिल किया। हम उन बैटर्स का जिक्र कर रहे थे जिन्होंने कम से कम 100 इनिंग्स खेली हो अपने लिस्टे करियर में और शानदार एवरेज हासिल की हो। और अगर उस लंबी फहरिस्त का हम जिक्र करें तो शान मसूद का नाम उसमें शामिल। आई एम प्रीटी श्योर हमारे स्टैटिस्टिशियंस वो स्क्रीन पे स्टार्ट ज़रूर लेके आएंगे जिसका हम जिक्र उसके साथ ही करेंगे शान मसूद के बारे में। बहुत अच्छी बॉल मेहर बिन यूसुफ को, जो कि बहुत कंफर्टेबल नज़र आ रहे हैं क्रीज पे। और अच्छी बात यह है कि बॉल को उसके मेरिट पे खेल रहे हैं, कहीं भी हमने नहीं देखा कि वो एक्स्ट्रा शफल कर रहे हो, हर बॉल उनको उनके जोन में मिल रहा है। वकार मौजूद हैं पहली स्लिप पे, साद बेग भी आपको मुसलसल गुफ्तगू करते हुए नज़र आएंगे। काफ़ी एनिमेटेड कैरेक्टर हैं साद बेग, काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला होगा जब इतने रन हासिल किए थे कायद आज़म ट्रॉफी में। बहुत अच्छी बॉल थी ये, मिडल स्टंप पे पेच हुई और ओवर का अख्ताम हुआ SNGPL 44 1 विकेट के नुकसान पर, 7 ओवर मुकम्मल। हम उस स्टार्ट का जिक्र कर रहे थे जिसमें हमने जिक्र किया था कि काफ़ी अच्छी एवरेज है शान मसूद की लिस्टे करियर में और 7वें नंबर पे अभी मौजूद हैं शान मसूद, जिन्होंने 139 इनिंग्स में लगभग 6500 रन बनाए हैं, 17 सेंचुरीज के बदौलत 53.13 इनकी एवरेज। और 2 मजीद पाकिस्तान के नामवर खिलाड़ी उस लिस्ट में मौजूद, जिसमें बाबर आजम भी मौजूद हैं, 53.59 उनकी औसत। और खुर्रम मंजूर जो हमारे साथ कॉम बॉक्स में भी शामिल हैं, 53.52 उनकी एवरेज, जबकि सलीम इलाही भी इस फहरिस्त में शामिल, 52.30 की औसत से उन्होंने भी 6277 रन स्कोर किए हैं अपने लिस्ट करियर में। इसी के साथ साथ वक्त हुआ जाता है तब्दीली का कॉम बॉक्स में, जहां आपको ज्वाइन करेंगे फरूक रियाज और उनका साथ देंगे फॉर्म पर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त। Thank you very much, Zishan Khalid and Ayman. Shan Masood, the skipper, on strike. Arshad Iqbal is into his 4th over. Very impressive so far around the wicket. Nice shot on his pair. That's got to be 4 runs. Beautifully timed. What a start of the over. Effortless and pure class. And with this boundary, I welcome Sikandar Bakh in the com box. What a shot, Sikandar. 48 for 1. Yeah, played off his hip. That's what you call it. Good timing, lovely timing, and it's what do you call it? To stop it their wrist. Shan Masood is very seasoned, a good test cricketer. He's a good player for the longer version, one days and test cricket. This time it goes to the offside. It's got to be 4 again. Back-to-back boundary for the skipper of SNGPL. Top-class batting. Lovely timing. Straight cover drive through extra cover and mid-off. Lovely timing, good footwork from Shan Masood. Yes, lovely timing. And through the gap, that's a very important thing. And he's just playing proper cricket. He's not trying to force himself for unnecessary shots. And that's the best part of his batting. Absolutely. No emphasis on over-hitting the ball. Just played it straight through the line. 2 boundaries in 2 completely different directions. Pressure on Arshad Iqbal. More runs. 2 is the call straight away. No chance. Shan Masood is so desperate as he's been sent back, quite rightly so. But this is the best part of the batting. You have enough overs, not a very difficult target. It's enough overs
Just keep on switching yourself, keep on rotating the strike. Simple. You don't have to really hit big on this ball. Usually the people do that. The player try to do that. He was pretty safe at that time. No chance for a run out. Mahir Yusuf did absolutely right. Straight away he said no. Maybe Shan Masood was trying to apply some sort of pressure on the bowling side. But in the end, settled with one. He has conceded 9 so far in this over. In his first 3 overs, Arshad Iqbal conceded 8. So he's facing the music. I've already told you that there's nothing, that's my opinion, there's nothing in the pitch for the fast bowlers. You just have to bowl to a very good line of length. Extra bounce. This is the second one of the over. First of the over, in fact, and it's a good one from Arshad Iqbal. Sign of aggression from the tall right armour. Not bad. It was a good bouncer. Is there a fielder? Yeah, there is a fielder. It was a good bouncer. And there is a square leg and a fine leg. Sorry, no fine leg. This is a short fine leg and a square leg. Deep square leg, and the only man at the boundary at the onside. One at third man. Pulls it well. Straight to the fielder for one. Well, you must have noticed that as there is nothing in the pitch for the bowlers, there is no slips, though the ball is pretty new. And as everybody knows that 2 balls are used from each end. So it must be just 3 overs, 4 overs old. It must be really new and hard, but still, see, there is no slips. It's a pretty defensive field. I think they should have a slip in case, because it's a new ball. You have to get them out if you want to win the match. You cannot just block the runs all the time. There is a square leg. Going for the quick single, Shan Masood. He does well in the end. Good response from his partner. So it's a very good over for SNGPL. 11 of it. 8 gone. 55 for 1 on the board. 55 for 1. It's more than a decent start. With this aeroplane, I just remember the PIA auction was today. I don't know who bought it. There was an auction on air, but live. One more single? No. It was live broadcasting, and who was going to buy the PIA? That will be very, very interesting. Air Sial is another airline, a new private airline. Who are the sponsors? Sponsors are the main people in cricket. I always appreciate the sponsors, because without the sponsors you cannot run anything, any sport. For the sports, it's very important, and Air Sial are the sponsors for this President Cup with the University of Lahore. We haven't seen a real amount of turn from the off-spinner Sajid Khan, who was from SNGPL. He also wasn't getting so much turn, and Aftikhar, the off-spinner. Well, throughout the match, there was no turn for the spinners, but you just have to bowl to a very tight line like Sajid Khan did. Iftikhar is also a very good spinner. Another single. Very smart cricket by Shan. You know, he was my student for 7 years at the Cricket Center of Pakistan when he was 12 years old. So he came to me for 7 years. Which camp? Not camp. We used to run a academy called Cricket Center of Pakistan at South End Cricket Club, Khayaban-e-Rahat, DHA. For 20 years I was coaching there. Shan was my student, and Azam Khan, Moin Khan's son, for 3 years.
Your coaching has been fruitful for sure. Just simple. 9 overs gone, 58 for 1. Nine overs have been bowled as 58 for 1. And Shan Masood on 21 is more than run a ball. So captain's leading from the front. As Umair bin Yusuf is scoring with slightly lesser run rate. Nice shot, opened the face of the blade, could not find the gap. He's looking busy to score runs. The difference between Shan Masood and other cricketers is Shan Masood is always ready for the single. He plays the shot and then he's one step ahead just for a chance for a single, which is a very good thing. Nowadays there is a big problem. We have noticed it in the last game. We were talking about it. Nobody was trying to rotate the strike. They were not trying to pick up quick singles. But this is a very funny game. 233 for 3 and 255 are out. It's amazing. Once again, he wanted to get a single, couple of steps down, could not find the gap, Shan Masood, and almost with a similar pace he bats in the test cricket as well. Even in test cricket, he doesn't block so much and always looks to score runs. It's a good thing. It's very important for every batsman that you must try to get try to rotate his strike. He has to be alert. You cannot just stay there and depend on your big shots. It's easier if you start rotating your strike, then it's easier for you to score runs. It puts pressure on the fielding side. As for work, there's a man down there, deep backward square leg. So Arshad was just a touch expensive in his previous over. Now has been quite tidy. The half of the over has been done. Well, still we are in the 10th over and there is no slip. I'm really surprised, but I haven't seen any edge of the bat because as I said earlier, there's nothing for the seamers, but you just have to bowl within the stump, contain them, and in these kind of pitches you don't get a good shots when the ball is not coming to you. So sometimes you have to stay there and wait for your chance. Pulls it well. Goodness me. It's a flat 6. What a mighty blow that is from Umair bin Yusuf. Half a dozen. Lovely timing. Excellent shot by Umair bin Yusuf. I heard he just got married. He was somebody was telling us, the commentator Zishan I think was telling her. Shot and he pulled it very well. Lovely timing. It was a quiet over before that delivery, and he picked up the challenge really well. Umair bin Yusuf, that was right off the middle of the bat. So a couple of dots, single and a 6 here. So that 6 will give him plenty of confidence. Almost a run a ball now for Umair bin Yusuf. Good straight bat. I always admire nowadays, especially nowadays, if anybody who's try to play with a straight bat. But nowadays, everybody's trying to play with like a softball, you know, aiming for the square leg and mid wicket and long on area, playing cross bat shots. It's good to see somebody playing with a straight bat. Majority of the players are doing that, but let's see. Now catching up the strike rate of Shan Masood. Umair into the 30s now. It's turning out to be a good partnership. Hasibullah, the first man who got out. Pulls it well. And they should come back for 2 comfortably. And over has come to an end. 67 for 1 after 10.
67 for 1. 10 overs have been bowled. So Iftikhar Ahmed will continue. He's more than a decent off spinner. Sajid Khan for SNGPL bowl, full quota of 10 overs. Iftikhar is doing the job, the off spinner. Cuts it well, didn't provide much room, and Shah Masood wanted to cut it away. It's always a contest when off spinner bowls round the wicket to the left-hander. And sometimes left-handers get trapped against off spinners in this fashion. Another good single by Shan. He's kept changing the strike, and this is the best part of his batting. Iftikhar is underutilized when he was playing for the Pakistan side as a bowler too, and he got 11 wickets to his credit in this competition. Sorry, 12 wickets with an average of economy is 3.40. Nice push down the ground. Iftikhar tried to stop that one away. So as a bowler, if you're agile enough, you're effective enough, you can prevent such singles. Such a wide and long throw. Iftikhar didn't like it. That could have hit someone. No, actually, you have to check the run rate. You have to block the runs. But I believe in this kind of cricket, you have to take wickets rather than blocking the runs. You can keep on blocking the runs, but you have to take wickets. Otherwise, it's very difficult. Very productive area. The long off and long on. See the batting. I like this batting style. They are kept on taking singles. Rotation of strike is very good. They're not keeping. They're not playing that dot balls. If you remember yesterday. See, so simple and easy. Also, it's not getting much turn off the pitch, and that have made the thing slightly easier for both left and right hand combination. They're just playing through the line, Shan Masood and Umair bin Yusuf. Normally, the off spinners, if they get some assistance, they trouble the left-handers around the wicket. Well, as you said, there's nothing in the pitch for the spinners, but they are still bowling to a good line. 71 for 1, 11 overs gone. That's the power play highlights. Hasibullah smashed it over backward point, and lovely drive through the covers. It has cleaned up inside edge onto the stumps. Beautiful shot from Umair bin Yusuf, stylish young right-hander. Down the track, over mid-on. Lovely pull shot for 6, for a flat 6, right of the middle. Yes! Back live now. Lovely, 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 lovely. Excellent, excellent, excellent. Well, it was very useful. Lovely ball, lovely ball, lovely ball. A very useful power play for SNGPL. 71. Excellent About ball. almost 70 runs in first 10 overs with 1 wicket is a very good scoring right now at the moment. Drives well, nobody moved. Glorious top class stroke from Umair bin Yusuf. Excellent shot. And it's what's through the gap.
Excellent footwork. Umair is playing very well. He has a good reputation. I've seen him playing in the PSL2 a little bit, but they don't get a proper chance. Good footwork, good cover drive, technically very sound. Good to see him playing like this. Excellent. Off the back foot this time, straight to the fielder. Not a packed offside field for the spinner, Mohammad Hamza. My question is, who is going to take the wickets? Because with this kind of a fielding setup, no slip, nothing, bowlers are doing nothing, how will they get the wickets? It's very important. Otherwise, there will be no pressure on SNGPL batsmen. Well, we have to wait for Sufyan Mukim. Okay, Khurram. Khurram is giving us the tip from there. When Iftikhar will bring him on? That's the question. Lovely ball, lovely ball. 5 of the over, 76 for 1. It's turning out to be an excellent partnership for the second wicket stand. Off spinner again. Still we have to wait to see Sufyan Mukim in action. But both the off spinners are bowling in tandem. Well, my question is, I still believe you cannot win a match without taking wickets. So there is nothing I can see in the pitch, in the match. There is no chance of getting a wicket. The bowlers are very flat. There is nothing. And the batsmen are playing as they wish. They're placing the ball well as well. Shan Masood and Umair Yusuf, they have few dot balls, but they are also finding boundaries on regular basis. And that is why the asking rate is still pretty much in control. And Khurram Manzoor is asking when Sufyan Mukim is going to come and bowl. There's nothing for the batsman to worry about. They are just taking very simple and straight singles, no worries at all. And there is no change from the KRL captain in the field or anything, no strategy I can see here. You have to take wickets. See, they are taking run per ball, so there is no hurry for the batsmen. It's too easy for them right now, too easy. Absolutely, they are scoring runs on either side of the wicket. They need 176 from here. They have laid the foundation perfectly. Yes! One more, not quite. This time, the short mid-on, you can see it's slightly straighter, and now it's going to his right. Quick single again, just tapped the ball towards the backward point, and 5 singles off the over. 81 for 1, 13 gone.
शाबाश शाबाश हमजा. Two is the call. Two is the call. Then they should get it. The boundary rider covered plenty of ground to get the ball. So far, it's very simple and straight for the batsman. Too easy for the batsman. No worries at all. But there is a question from one of our cricketer who is still playing cricket, Khurram Manzoor. Where is Sufyan? Where is Sufyan? Is he there? Is he playing? He's the highest wicket taker. ये बॉल है. ये बॉल है. Maybe the captain is waiting for the ball to get a little older, or maybe something else. Well, we have to ask him. We have to ask Iftikhar Ahmed what's happening. Down the wicket he goes. Beautifully played. Lifted over mid-off. One bounce over the rope for 4 runs. Lovely shot. Well, as I said, there is nothing, no worries for the batsman. It's too easy for them. There is no spin in the pitch, no seam in the pitch, and the batsman, there is no worries. They're just playing as they wish. And still, umpire is waiting to find out, is it a 6 or 4? Was it a 6 or 4? 4, right. No, yes, it's a 4. Now he's signaling towards the scorer. So it's too easy for the batsman, SNGPL batsman. Nothing to worry about. I don't know when they're going to bring some change into the bowling. Inching closer to his 50, Umair bin Yusuf has surpassed Shan Masood quite quickly. He was behind the score of Shan Masood at one stage. Now he has got some runs, has got the confidence, played some lovely shots. Now one away from a very well mid-half century. Well, in this kind of situation, captain plays a very important role of the senior player, because the captain has to do something different, something out of the box to get wickets. But I don't see anything extraordinary in the field. It's very plain, simple and straight for the batsman. See, they just have to push and take a single. Good over again for the batting side. 14 overs have been bowled. The partnership has been excellent for the second wicket. 89 for 1. And it's such a happy dugout for SNGPL. It's time for the change in voices. As Khurram Manzoor and Zishan Khalid will pick up the commentary now. बैकवर्ड पे जाके एक बार फिर गेंद को कट किया. इतना टाइम ना कर सके, लेकिन मौका ज़रूर मिला शान मसूद को मज़ीद 1 रन बढ़ाने का. और गुफ्तगू बढ़ाने के लिए मेरे साथ कॉम बॉक्स में अब मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर. जी थैंक यू सो मच. और इफ्तिखार को चाहिए थोड़ा सा दिलेराना फ़ैसला करें और सुफियान मुकीम को इंट्रोड्यूस कराएं, क्योंकि लीडिंग विकेट टेकर भी हैं और ये कैमरे पे आ रहे होंगे. मुझे तो ये समझ नहीं आ रही अभी तक इफ्तिखार इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं. दोनों बैट्समैनों को सेट ऑलमोस्ट करवा दिया है. दोनों तरफ से एक नहायत दरमियाने किस्म की बॉलिंग हो रही है, जिससे कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है दोनों बैट्समैनों को, बल्कि और सेटल्ड हो गए हैं वो. ना कि मेन बॉलर को ला के ब्रेक थ्रू लें और मैच में स्ट्रॉन्ग कमबैक करें. तो फिर आइस्तिकी के साथ खेला और तेज़ी के साथ रन मुकम्मल किया उमैर बिन यूसुफ ने. शानदार निस सेंचुरी उमैर बिन यूसुफ की, इनके लिस्ट करियर की 11वीं सेंचुरी उमैर बिन यूसुफ. निस सेंचुरी बड़ी ओकेजन पे अपनी टीम के लिए अहम रहन्स बनाते हुए. उमैर बिन यूसुफ बहुत ही आला कंट्रोल, कूल काम इनिंग खेली. बैट बॉल को बाउंड्री में कन्वर्ट किया. सिंगल्स बड़े आराम से ले रहे थे. बॉडी शेप में थी. कंट्रोल खेलते हुए दिखे, आज क्लीन खेलते हुए दिखे. शान मसूद उनका साथ देते हुए कैप्टन रोल अदा कर रहे हैं.
कहीं से भी कोई मुश्किलात नहीं पेश आ रही, चाहे इफ्तिखार अहमद का जिक्र करें या दूसरे एंड से गेंदबाजी का जिक्र करें। तेज की थी इसको, पीछे के कदम पे जाके पुल करना चाहते थे शान मसूद, इतना टाइम ना कर सके, लेकिन एक बार फिर मौका मिला शान मसूद को एक मजीद रन हासिल करने का। उमैर बिन यूसुफ अपने इस 50 रन को 100 रन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जितने वो कंट्रोल से बैटिंग को खेल रहे हैं, बैटिंग करते हुए दिख रहे हैं, उनको ऐसा लग नहीं रहा कोई प्रॉब्लम हो रही है। हर बॉल को मिडल ऑफ द बैट करते हुए और ओवर कंप्लीट। 15 ओवर में 92 रन्स, 1 आउट, SNGPL। चार बॉलर्स आजमाए हैं अब तक इफ्तिखार अहमद ने, अरशद इकबाल ने मिलने वाली पहली कामयाबी हासिल की अपने लिए, जबकि अहमद बशीर महंगे साबित हुए इब्तदाई 3 ओवर्स में। इफ्तिखार अहमद अब तक कोई विकेट हासिल ना कर सके, जबकि हमजा भी 2 ओवर्स में 13 रन से कि कोई विकेट ना समेट सके। 61 रन जोड़ चुके हैं दोनों ही बैटर। उमैर बिन यूसुफ या कप्तान शान मसूद का जिक्र करें, और लगता है कि अब वो वक्त आ गया जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि अब सुफियान मुकीम को गेंद थमा दी गई है। जी बिल्कुल, SNGPL को थोड़ा मोहतात होकर खेलना पड़ेगा इस टूर्नामेंट में। सबसे ज़्यादा स्पिनर्स में आउट करने वाले ये बॉलर भी हैं, लीड भी कर रहे हैं अपनी टीम को स्पिन डिपार्टमेंट में, और यूनिक एक्शन है और बॉल में बड़ी ज़बरदस्त जिप है। पहली गेंद को बैकफुट पे जाके पंच किया, गैप तलाश किया एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के दरमियान। पहला रन तेजी के साथ निकले और दूसरा रन भी बासानी मुकम्मल कर सकेंगे यहाँ शान मसूद। खुरम, हम अब से कुछ देर पहले उस लिस्ट का जिक्र कर रहे थे जिसमें काफ़ी हद तक ऐसे बैटर्स थे जिन्होंने 100 से ज़्यादा इनिंग्स अपने लिस्ट करियर में खेली और 50 से ज़ायद की एवरेज बरकरार रखी। उसमें एक नाम आपका भी था, हमने पढ़ा था। इस गुफ्तगू को मैं मज़ीद बढ़ाऊँगा इस गेंद के बाद। लेट के लिए इस दौरान गैप तलाश किया शान मसूद ने, पॉइंट पे फील्डर मौजूद जरूर थे लेकिन करीब करीब भी ना पहुंच पाए और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही खूबसूरत ग्लाइड किया है शान मसूद ने, लेट खेले हैं सुफियान मुकीम की एक हल्की सी ऑफ स्टंप पे गिरी हुई बॉल को, बहुत अच्छा टाइमिंग से 4 रन हासिल किए हैं शान मसूद ने। शान मसूद अपनी पूरी हम क्रिकेट में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जोबन में, और ज़बरदस्त वो शेप में दिख रहे हैं और कंट्रोल्ड इनिंग खेल रहे हैं, और साथ में उमैर बिन यूसुफ की जितनी तारीफ कर ली जाए कम है। कुछ नज़र नहीं आया इस फील्डिंग एफर्ट से, फिर पीछे गिरी हुई गेंद पे बासानी सिंगल हासिल किया। हम उस फहरिस्त का जिक्र कर रहे थे जिसमें आपका भी नाम शामिल था और आपने भी अपने लिस्ट करियर में 4 बार 150 से ज़ायद रन की इनिंग्स खेली। तो क्या मशवरा होगा आपका, या किस आप तरह देखते हैं कि किस अंदाज से आप उमैर बिन यूसुफ अपने इस 50 को 100 में मुकम्मल कर सकते हैं? इसमें कोई डाउट नहीं है, और बेसिक जो है वो 50 ओवर की यही है कि स्ट्राइक को रोटेट करें और जब आप सेटल्ड हो जाएं तो कोशिश करें जो बैट बॉल है उसको कन्वर्ट करें बाउंड्री में। तो उमैर बिन यूसुफ बाखूबी ये काम कर रहे हैं, साथ शान उनका जिस तरह साथ दे रहे हैं एज ए कैप्टन, और ये देख रहे हैं आप कितने कंट्रोल से इतने इजीली वो सिंगल को ले रहे हैं। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ज़बरदस्त है। और एक चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा, जिस बॉल पे शान ने बाउंड्री मारी है उससे पिछले बॉल पे बैकफुट पंच मारा था शान मसूद ने, और मिस फील्डिंग की वजह से वो डबल रन बना, और अगली गेंद पे शान ने फिर सुफियान को बाउंड्री मारी। तो ये छोटी वो चीज़ें होती हैं जिससे ना वो सिंगल बनता, ना वो डबल होता, और ना वो चौका लगता। तो ये चीज़ सोचनी पड़ेगी फील्डर्स को थोड़ा। अगले कदम पे आके ड्राइव करने ज़रूर गए थे लेकिन अंदरूनी हिस्से को लगती हुई गेंद पहुंची लॉन्ग ऑन की जानिब। 1 रन मजीद हासिल हुआ, 100 रन भी मुकम्मल हो चुके हैं अब SNGPL के। फिलहाल वक्त SNGPL फुली कंट्रोल मैच में हावी हुई हुई है और 15 ओवर के अंदर 101 रन कर चुके हैं, और शान और उमैर बिन यूसुफ बहुत ही ज़बरदस्त पार्टनरशिप करते हुए एक और सिंगल मिड ऑन को खेलते हुए इजी टू प्ले हो रहा है, यही कह लें। खेल बहुत अच्छा रहे, दोनों सेट हो चुके हैं और दोनों के पास एक अच्छा लंबा एक्सपीरियंस है, और इस तरह 16 ओवर इख्तिताम पे गया और 102 रन 1 आउट। वो शॉट का आप जिक्र कर रहे थे, देखिए कितना पंच किया था इसको, और फंबल होने के बाद 2 रन हासिल किए थे शान मसूद ने। मौका मिला था स्ट्राइक हासिल करने का
और उसकी अगली ही गेंद पे 4 रन हासिल किए थे। तो यहाँ पे फील्डर्स को भी कोशिश करना होगी कि बॉलर का साथ दें और यहाँ जो आसानी से एक एक रन हासिल कर रहे हैं दोनों ही बैटर्स, उनको रोका जाए, डॉट बॉल्स खिलाई जाए, प्रेशर बढ़ाया जाए। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि कहीं से भी कोई मुश्किलात पेश आ रही हैं, चाहे हम शान मसूद का जिक्र करें या उमैर बिन यूसुफ का जिक्र करें। जी बिल्कुल, दोनों इतने सेट हो चुके हैं। इस दौरान बाहरी किनारा लिया, स्लिप पे कोई फील्डर मौजूद नहीं थे, थर्ड मैन के फील्डर करीब भी नहीं, और एक और 4 रन मिलेंगे थर्ड मैन की जानिब उमैर यूसुफ को। किस्मत की देवी SNGPL पे मेहरबान होती हुई, अमूमन इस तरह की बॉल पे स्लिप होती है इफ्तिकार की, और वो कैच होते हैं क्योंकि पिछले कुछ चंद आवर से लग नहीं रहा था कि कुछ इस तरह का होगा, तो स्लिप ली नहीं, जिसका खमियाजा 4 रन में लेना पड़ा उनको। कहीं ना कहीं कुछ मुख्तलिफ करना होगा, कोई मुख्तलिफ हिकमत अमली हमटारी होगी यहाँ इफ्तिखार अहमद और KRL को। इस अंदाज से बाउंड्री हासिल की थी, फिर इसको गाइड किया और एक बार फिर मिस फील्डिंग देखने को मिली, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही रन हासिल हो सकेगा। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लगता है अब KRL के बैट्समैन जो मिस्टेक करके आउट हुए, उनको ये रियलाइज़ हो रहा होगा कि हम इस तरह की इनिंग अगर करते तो एक ग्रैंड टोटल हो सकता था इस इम्पॉर्टेंट मैच में। ये इफ्तिखार अहमद, ये वो बॉल थी जिस पे फंबल हुआ और उनके शायद शोल्डर पे प्रेशर आया है, तो अरशद इकबाल ये कैमरे पे दिख रहे होंगे, या कोनी के बल गिरे अरशद इकबाल और कुछ तकलीफ में मुब्तला नजर आए। अच्छी गेंद और बोल्ड कर दिया इफ्तिखार अहमद ने, कैप्टन वर्सेस कैप्टन। काफ़ी ज़बरदस्त बॉल, काफ़ी देर से कोशिश कर रहे थे इफ्तिखार इस पिच को हिट करते हुए, और शान मसूद को चाह रहे थे कि वो क्रॉस खेलें, जितनी देर से वो मिड ऑन पे सिंगल ले रहे थे, और कहीं ना कहीं इस चीज़ का इंतज़ार था कि गैप बने और बोल्ड हो शान मसूद या लेग भी 4 हो। फाइनली इफ्तिखार ने ये बैटल जीती, और ये लीगल डिलीवरी थी, पाँव पीछे था लकीर से, और ये वो बॉल, बहुत ही आला बॉल, विदाउट मूवमेंट शान खेलने गए मिडॉन की तरफ और मिस हुआ, बीच में गैप बना और बोल्ड हो गए शान मसूद। 35 गेंदों पे 37 रन बना के मायूस कदमों के साथ अब वापस जाते हुए शान मसूद। SNGPL 107 2 विकेट्स के नुकसान पे। इसी के साथ साथ हुआ जाता है ड्रिंक्स ब्रेक। जल्दी नहीं कर वो भाई, सबर का भाई, पीछे भी सफाई करनी है यार भाई लाला, क्या हो गया? पहले इसको भाई लगने दो, सही है, क्या रख लगा आराम से इसको। अशरफ तू संजय उसकी हेल्प कर, इसको हाथ से लगाना इधर पीछे दोनों साइड पे, आराम आराम से। ठीक है,
तो शान मसूद की विकेट हासिल करने के बाद पानी के वक्फे के बाद भी मौका मिला होगा रीग्रुप होने का KRL को और अपनी नई हिकमत अमली अपनाने का। कप्तान शान मसूद की विकेट लेने में कामयाब रहे इफ्तिखार अहमद। नए आने वाले बैटर 7, पहली गेंद पे 1 रन के साथ खाता खोला। खुर्रम, आपके पास भी इतना तजुर्बा है, चाहे हम लिस्ट करियर का जिक्र करें या फर्स्ट क्लास क्रिकेट का जिक्र करें, किस अंदाज से अब दबाव को बरकरार रखना होगा यहाँ KRL को, ख़ास तौर पे जब आपको बड़ी विकेट मिल चुकी है? जी बिल्कुल, यहाँ पे इफ्तिखार ने बड़ा ज़बरदस्त ब्रेक थ्रू दिया है और एज ए कैप्टन इनको चाहिए अब जो ये सिंगल्स हो रहे हैं इनको ब्लॉक करें और बेहतरीन और रन आउट का चांस क्रिएट हो सकता है और रन आउट हो गए। बहुत ही ज़बरदस्त मैच में टर्न आ गया है। उमैर बिन यूसुफ एक सिंपल रन लेते हुए आधी विकेट पे खड़े रह गए। साद खान ने उन्हें रोक दिया था और शायद वो लेट हुए कॉल सुनने में और उमैर बिन यूसुफ वापसी जाते हुए अफसोस का मुजाहरा करते हुए एक मिस जज रन। मैच में ट्विस्ट आ गया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैच का पासा पलट चुका है क्योंकि काफ़ी हद तक नाखुश थे उमैर बिन यूसुफ। जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग उमैर बिन यूसुफ और शान मसूद के दरमियान नज़र आ रही थी उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नज़र नहीं आई। उस तरह के सिंगल बासानी हासिल कर रहे थे लेकिन स्लिप हुए, बैट छूटा, मौका मिला साद बेग को थ्रो को गैदर करके स्टम्प्स को बिखेरने का, लेकिन कोई मौका नहीं था उमैर बिन यूसुफ के पास वापस आने का। शानदार निफ्ट सेंचुरी मुकम्मल की लेकिन अब मायूस कदमों के साथ वापस जाते हुए डगआउट की जानिब। तीसरा नुकसान उठाया है SNGPL ने, बड़ी कामयाबी समेटी KRL ने 108 के स्कोर पे। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा SNGPL के लिए। दोनों सेट प्लेयर जो एक अच्छी पार्टनरशिप लगा रहे थे और शान मसूद पहले इस ओवर में गए एक अच्छी बॉल पे, दूसरा रन आउट हुआ और जैसा कि जानते हैं आप पिच पे सेट होने के बाद इस पे देखा गया है जब जब पार्टनरशिप ब्रेक हुई है तो बहुत सारी चीज़ें देखने में सामने आती हैं। स्पेशली अब ये दोनों बैट्समैन किस तरह देखेंगे, दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, एक पार्टनरशिप लगानी पड़ेगी, प्रेशर को ब्रेक करना पड़ेगा। सुफियान मुकीम के इम्पॉर्टेंट 9 ओवर बाकी हैं और वो लीडिंग विकेट टेकर है। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। कामरान गुलाम ये स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, सीजन प्लेयर है और स्पेशली प्रेशर मैचों में इनके लिए मशहूर है कि ये प्रेशर में अच्छा परफॉर्म करते हैं। दोनों ही एंड पे अब नए बैटर मौजूद, साथ सिर्फ एक गेंद का सामना कर चुके हैं जबकि कामरान नए आने वाले बैटर हैं जो अब उमैर बिन यूसुफ को रिप्लेस कर रहे हैं। स्लिप पे फील्डर मौजूद है, कप्तान खुद इफ्तिखार अहमद। अब गलती नहीं करेंगे सिंगल चुराने की। बिल्कुल सही कहा आपने निशान, और एक भारी खमियाजा भुगतना पड़ा है SNGPL को उमैर बिन यूसुफ की सूरत में। और ओवर शुरू होते ही पहला डॉट बॉल, ये वो बॉल थी उमैर बिन यूसुफ ने सॉफ्ट बैट से खेला था, इजी सिंगल था और ये दूसरी बॉल सुफियान मुकीम की सिंगल बना है। साद ने बैट का फेस खोला और डीप पॉइंट पे सिंगल लिया। क्या लगता है खुर्रम, अब रन रेट काफ़ी अच्छी ऑलरेडी मेंटेन की है लेकिन 3 विकेट्स गंवा चुके हैं जिसमें 2 विकेट्स ऐसे बैटर जो काफ़ी सेट हो चुके थे, तो यहाँ पे कुछ चांस लेंगे दोनों बैटर के बॉलर को बैकफुट पे रखा जाए या कुछ वक्त लेना पसंद करेंगे? अब ये कामरान गुलाम और साद खान पे है कि ना कि ये डॉट बॉल शुरू कर दें खेलना, स्ट्राइक को रोटेट करें जो बेसिक क्रिकेट खेल रहे थे शान मसूद उमैर बिन यूसुफ। तो कामरान गुलाम एक दिफाई अंदाज से उन्होंने पहली बॉल खेली और एकदम से SNGPL पे हल्का सा प्रेशर सा फील हो रहा है। दोनों सेट प्लेयर आउट हो गए हैं और सीजन प्लेयर दोनों विकेट पे हैं। इनको चाहिए इस प्रेशर को कोक अप करें और रन्स बनाएं। तेज गेंद सिंगल हासिल किया कामरान गुलाम ने और अपना खाता खोला। चलते हैं नीचे एमन अनवर की जानिब जहां वो मौजूद हैं प्लेयर के साथ। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त साजिद खान जिन्होंने अपनी फर्स्ट इनिंग में 10 ओवर्स में 34 रन देके 1 विकेट हासिल की। साजिद, कितना सेटिस्फाइड है आज अपनी आज की परफॉर्मेंस से? वो भी एक क्रूशल गेम है, सेकंड सेमीफाइनल है, तो कितना सेटिस्फाइड है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखा जाए तो मैंने सारे टूर्नामेंट में इसी तरह बॉलिंग की है क्योंकि ऊपर से जो हफीज़ भाई है, मिसबा भाई यही कहते हैं कि जो स्टेडियम की स्पेशली विकेट है इस पर सिर्फ आपने एक ही जगह पर बॉलिंग करनी है क्योंकि टर्न मिलता नहीं है। तो हमने सिर्फ स्टडी बॉलिंग की और जिस तरह की टूर्नामेंट चल रहा है तो स्टडी बॉलिंग करनी है क्योंकि एक ही स्पिनर खेल रहा है। तो मेरा सिर्फ स्पेशली यही है कि अब मैं जितने रन रोक सकूँ बस वही है।
साजिद, बीइंग अ सीनियर प्लेयर, आपके ऊपर कितना प्रेशर होता है कि इस तरह की सिचुएशन में, जो नॉकआउट सिचुएशन होती है, आपने टीम को अपलिफ्ट करना है, जूनियर्स को अपने साथ लेके चलना है? बिल्कुल, टीम में देखा जाए तो सीनियर हमारे टेस्ट कैप्टन भी है शानी भाई, और जूनियर भी है, तो बिल्कुल देखा जाए तो एज अ सीनियर प्लेयर आपने सिर्फ यही करना है कि आप जितनी टीम के लिए कर सकते हो और जिस सिचुएशन चल रहे हो उसके मुताबिक चल रहे हो, तो टीम के लिए भी अच्छा होता है और अपने लिए भी, क्योंकि वाइड बॉल क्रिकेट है, इसमें चांस बहुत कम होता है, 50 ओवर का मैच होता है, तो उससे स्पेशली यही फोकस होता है कि जितना अच्छा कर सकूँ वही डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। साजिद, आज के टारगेट से आप कितना सेटिस्फाइड थे? आपको लगता है कि आपने बोर्ड पे इनफ टारगेट दिया था? देखा जाए तो अभी 2-3 विकेटें गिर गई है, लेकिन विकेट का जिस तरह है वो बिल्कुल फ्लैट विकेट है और इस पर कोई टर्न नहीं है। बस स्पेशली यही करेंगे कि अगर थोड़ी सी विकेटें अभी आगे ना दे और उस पर थोड़ा सा पार्टनरशिप लगाए, 40 और 50 दो पार्टनरशिप लग जाए तो ये इंशाल्लाह यार आसानी से जीत जाएंगे। थैंक यू साजिद, ऑल द बेस्ट। थैंक यू दिस सो वाज मच। साजिद खान, बैक टू द कॉम बॉक्स। बहुत बहुत शुक्रिया एमन। और यही बात जिक्र कर रहे थे साजिद खान की, एक बड़ी पार्टनरशिप की अब ज़रूरत है SNGPL को। प्रेशर बढ़ते हुए डॉट बॉल पे डॉट बॉल्स हो रही हैं। कामरान गुलाम सेट होने की कोशिश कर रहे हैं, साथ भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गए हैं जब से एक गलत कॉल पे उमर बिन यूसुफ आउट हुए हैं। और हम आपने काफ़ी क्रिकेट खेली है और यकीनन कुछ ना कुछ रनआउट्स में आप भी इन्वॉल्व हुए होंगे। जब आप खुद रनआउट हुए या किसी और पार्टनर के ज़रिए आप रनआउट हुए, तो जो दूसरे एंड पे पार्टनर होता है उनके क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं प्रेशर होता होगा कि एक सेट बैटर को रनआउट करा दिया? जी बिल्कुल, थोड़ा सा प्रेशर आता है और ख़ास और क्रूशल मैच में सेमीफाइनल का ये स्टेज है और उस पर 2 सेट प्लेयर खेल रहे हो, सडन उसमें से एक कैप्टन उसी ओवर में आउट हुआ और सडन दूसरा रन आउट हो जाए, वो भी आपकी गलत कॉल की वजह से, तो प्रेशर तो आता है। SNGPL की टीम उम्मीद करेगी कि साथ उस गम को जल्दी भुला सकें और आज रन बना सकें, क्योंकि मज़ीद 145 रन अभी दरकार हैं और काफ़ी ओवर्स बाकी हैं। कांटेदार मुकाबला आज मुतवक्के इन दोनों टीम्स के दरमियान। याद रहे दोनों में से कोई भी टीम आज फतह हासिल करेगी वो PTV से मुलाकात करेगी 25 दिसंबर को। देखते हैं कि कौन सी टीम जीतती है। साद खान अच्छा ग्लाइड किया है और सिंगल लिया है स्क्वायर लेग की तरफ। इफ्तिकार वही एरिया में कोशिश कर रहे हैं बॉल को बार बार पिच करने की जिस एरिया में शान को प्रॉब्लम हो रही थी कि बैट का फेस बंद हो, बैट और बैट के बीच में गैप बने और बोल्ड हो या लेग बिफोर हो। इफ्तिकार स्मार्टली कोशिश कर रहे हैं, पिछले कदम पे गए और इसको कट करने में कामयाब हुए कामरान गुलाम। 1 रन बआसानी हासिल हुआ। अच्छा ओवर इख्तिताम पजीर हुआ इफ्तिखार अहमद का। 19 के बाद SNGPL 113 3 विकेट्स के नुकसान पे। ये वो विकेट थी शान की, थोड़ा बॉल नीचे रहा और ये उमर बिन यूसुफ टोटल मुझे लगा जज नहीं हो सका और अनफॉर्चुनेट वो स्लिप भी हो गए थे उमर बिन यूसुफ, जिसकी वजह से वो वापस नहीं जा पाए। मगर देखा जाए उमर बिन यूसुफ ने बैट से खेलते ही 1 की कॉल की थी, साथ शायद सुनने में लेट हुए या उनको रन जज नहीं हुआ जिसकी वजह से उमर आउट हुए। ऐसा मालूम होता है कि उमर को अंदाज़ा नहीं था कि साथ भी उतनी ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना सकेंगे उनके साथ जिस अंदाज से वो शान मसूद के साथ बना सक रहे थे। जी बिल्कुल, और एक अच्छा शॉट, मगर एक ही रन मिलेगा बैट्समैन को। जी आपने बिल्कुल सही कहा, वो सेट भी हो गए थे, आई कांटेक्ट पे रन ले रहे थे, कॉलिंग भी थी, बिटवीन द विकेट रनिंग बहुत तेज़ कर रहे थे शान और उमर बिन यूसुफ। कहीं ना कहीं वो कोऑर्डिनेशन बन नहीं पाई थी और थोड़ा अर्ली कॉल कर गए। एक ही बॉल हुई थी उन्हें आए हुए ग्राउंड में। इस दौरान करीबी मामला हो सकता है, अपील कर रहे हैं, मुस्तकिल अपील कर रहे हैं, लेकिन अंपायर को मुतासिर ना कर सके। जी बहुत क्लोज कॉल थी, सुफियान मुकीम हैरान होते हुए, और वो तो उन्होंने अपील भी नहीं की थी, आगे की तरफ जा रहे थे सेलिब्रेशन के लिए, फिर पलट के उन्होंने एम्पायर को दोबारा अपील की कि ये आउट अभी तक दिया क्यों नहीं। जी हाँ, रॉन्ग अटेम्प्ट की थी यहाँ सुफियान ने, परफेक्ट रीजन में गिराई थी और पढ़ने के बाद शार्पली अंदर की जानिब घूमी और क्लोज ही मामला था, काफ़ी क्लोज मामला थे, मगर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है शायद डाउन द लेग हो सकता था। जितना शार्प ब्रेक हुआ, मैंने आपको कहा था कि ये मेन बॉलर हैं और उनके ओवर्स बाकी हैं भी। तेज गेंद की लेकिन उसका फायदा ना उठा सके। 7
मुश्किल में लग रहे हैं, थोड़ा प्रेशर डेवलप हो रहा है उनके ऊपर और डॉट बॉल जो है वो और प्रेशर बढ़ा रही है। कहीं ना कहीं सिचुएशन थोड़ी सी KRL की तरफ जाते हुए। अच्छा सिंगल मिड ऑन की तरफ खेलते हुए साद खान ने लिया। कामरान गुलाम काफ़ी सीनियर प्लेयर हैं, उनको चाहिए एज ए सीनियर उनसे बात करें, प्रेशर को रिलीज़ करने की कोशिश करें, एक पार्टनरशिप लगाने की कोशिश करें। दोनों सीजन प्लेयर हैं। कामरान गुलाम के मुकाबले में साद का थोड़ा एक्सपीरियंस कम है। तजुर्बे का ही इस्तेमाल करना होगा यहाँ पे कामरान गुलाम और तमाम बैटर्स को SNGPL के। अच्छा ओवर हुआ इख्तिताम पजीरी 20 के बाद SNGPL 116 3 विकेट्स के नुकसान पे। इफ्तिकार अहमद एक बार फिर उसी एरिया को मुस्तकिल पकड़ के बॉल कर रहे हैं। इफ्तिकार बैट्समैन को गलती करने पे मजबूर कर रहे हैं कि वो क्रॉस शॉट खेलें, या तो मिड विकेट के ऊपर से या थोड़ा सा आगे गिरी हुई बॉल को पीछे खेलें और मिस्टेक करें और उनको विकेट मिले। ये वही बॉल थी, ऑलमोस्ट साद मैनेज कर गए मिड ऑन पे खेल के, जो थोड़ा सा शान मिस कर गए थे। कहीं ना कहीं इफ्तिकार के जहन में प्लानिंग है। 7 ओवर कर चुके हैं, 32 रन दे के एक आउट किया है। ये इफ्तिकार की जो विकेट थी बहुत वैल्यूएबल विकेट थी, शान मसूद की जो उन्होंने ली थी। पीछे गेंद की थी जिसको बैकफुट पे जाके पंच किया, मिड ऑफ की जाने मौजूद है वहाँ पे सुफियान मुकीम। या कहीं ना कहीं से कुछ राह हमवार हुई है KRL के लिए उन 2 विकेट्स हासिल करने के बाद। शान में मैं तो सीधा कहूँगा दरवाज़ा खुला है अपॉर्चुनिटी का। एक और डॉट बॉल प्रेशर बढ़ा रही है SNGPL के बैट्समैन को। कहीं ना कहीं दरवाज़ा खुला है KRL के लिए और अपॉर्चुनिटी के तौर पे एक ही ओवर में 2 मेन प्लेयर आउट हो जाना तो मैच में वापसी होती है। बैकफुट पे जाके खेला, गैप तलाश किया इस दौरान कामरान गुलाम ने और 1 रन बआसानी हासिल किया। जिस तरह खुर्रम आप जिक्र कर रहे हैं, सुफियान मुकीम के आने वाले अगले 7 ओवर्स इस बात को तय करेंगे कि ऊँट किस करवट बैठेगा। जी बिल्कुल, थोड़ा एहतियात करके खेलना पड़ेगा दोनों को, स्पेशली साद को। वो अनकंफर्टेबल दिख रहे हैं थोड़ा सा सुफियान मुकीम पे। अगले कदम पे आके इसको ड्राइव किया, कैप तलाश करने में कामयाब ज़रूर हुए लेकिन सिर्फ 1 ही रन हासिल हो सकेगा। तो 21 ओवर्स हुए मुकम्मल, 117 तक पहुंची है SNGPL की टीम 3 विकेट्स के नुकसान पे। हम बेहद मशकूर हैं हमारे तमाम ही स्पॉन्सर्स का जिन्होंने हमें सपोर्ट किया इस प्रेसिडेंट्स कप वनडे टूर्नामेंट के नॉकआउट स्टेजेस में, चाहे उसमें एयरसियाल हो, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर हो, स्पार्को पेंट्स हो। इन्होंने इस बात को यकीनी बनाया कि एक कामयाब वेंचर ये नॉकआउट स्टेजेस, पहले 2 सेमीफाइनल्स और उसके बाद फाइनल जो खेले जा रहे हैं नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में। सुफियान मुकीम अपना 74 ओवर करने के लिए आए हैं। बहुत सी उम्मीदें KRL को, और एक तेज बॉल की थी विद इन स्टंप के क्रॉस खेलने तो शायद लेग बी 4 का चांस क्रिएट हो। अच्छा मैनेज किया साद ने और अच्छा सिंगल लिया कंट्रोल बैट के साथ। मिडिल ऑफ द बैट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस आए, और एक बेसिक पार्टनरशिप लगाने की रीजंस होते हैं सिंगल डबल, और वो कोशिश करना चाहिए इन दोनों बैट्समैनों को पार्टनरशिप के तौर पे दोनों करें। इस दौरान इसको मिड विकेट की जानिब खेला कामरान गुलाम ने और आसानी के साथ 1 रन हासिल किया। स्टंप्स को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं सुफियान मुकीम, और काफ़ी करीब आ चुके थे अपनी पहली विकेट समेटने से जब गेंद पैड को टकराई थी, लेकिन अंपायर ने नफी में सर हिलाया था। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा थोड़ा सुफियान मुकीम जो है आउट करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, विद इन स्टंप तेज बॉल कर रहे हैं। एक अच्छी बॉल, साद ने अच्छा बैट का फेस ओपन किया और सिंगल लिया। सुफियान मुकीम विकेट की तलाश में, थोड़ा सा पेस को वेरी करना पड़ेगा, थोड़ा
थोड़ा हंगर हुए हुए हैं, ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, उस चक्कर में पेस बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से उनको जो ब्रेक मिलता है, शार्प ब्रेक मिलता है, वो नहीं मिल पा रहा है। और ये वो वजह है जिसकी वजह से हम बार बार सुफियान मुकीम का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि वो अब तक के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर हैं इस प्रेसिडेंट्स कप वनडे टूर्नामेंट में। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बाकी स्पिनर्स के मुकाबले में ओवर्स भी कम किए, इन्होंने 50 ओवर किए और बाकी तकरीबन बॉलर्स ने 60-65 ओवर किए हैं। इस दौरान फुल टॉस कर बैठे, जिसका फ़ायदा ना उठा सके कामरान गुलाम, सिर्फ एक ही रन हासिल किया लॉन्ग ऑन की जानिब। यहाँ पे अगर इफ्तिखार अहमद चाहें तो ख़ास तौर पे जब साद स्ट्राइक पे मौजूद होते हैं तो ऑफ साइड पे एक और फील्डर दायरे के अंदर ले सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ सिंगल्स पे ही निसार करते हुए नजर आ रहे हैं। कप्तान ने थोड़ी सी लालच दी है मिड ऑफ को ऊपर बुला के साद खान के लिए। अच्छी बॉल थी, मैनेज कर गए, नीचे रहा है थोड़ा सा बॉल, साद को ख्याल करना पड़ेगा। काफ़ी भारी जिम्मेदारियां हैं इस बड़े मैच में। एक उमैर बिन यूसुफ का जो रन आउट हुआ है, ओवर का इख्तिताम 22 ओवर पे 123 रन 3 आउट। यहाँ इसी के साथ साथ वक्त हुआ जाता है कॉम बॉक्स में तब्दीली का। आप सबको ज्वाइन करेंगे फ़ारूक रियाज और उनका साथ देंगे सिकंदर बख्त। Thank you very much, Khurram Manzoor and Zishan Khalid. 22 overs have been bowled. Saad and Kamran Ghulam, the current batsmen at the moment. In the last 7 overs, they got two big blows. Shan Masood and Umair bin Yusuf both have been sent back to the dugout. A little bit of change of field. You can see a slip over there. Now they are very much interested in taking the wickets. That's very important. You have to take wickets to win this match, to put pressure on KRL. Oh, sorry, SNGPL. Well, I can see a slip fielder here now. It's a good thing they got two good wickets. Hamza is the new bowler. His bowling is not the new bowler, he's bowling his third over. You just have to keep within the stump, keep it tight to the batsman. Yes! That's better. See the difference when Shan Masood was batting, it was so easy. They were just picking up the singles on every ball. Absolutely, there is a difference after the fall of Shan Masood and Umair bin Yusuf. You can see the strike rates all near about 50-55, whereas Umair bin Yusuf and Shan Masood, they were playing with a strike rate of 100, almost run a ball. So the wickets made an impact for sure. But still, even Steven's situation, the target is not very stiff. Kamran Ghulam has got tons of experience and well taken single. Good to see the singles. I'm very happy to see this the rotation of strike from these players of SNGPL. So the left-hander is there, slip is in there. So let's see. He has to keep the ball little bit outside the off stump. Let's see. Not bad. That was not a bad ball, because he's going for a cut shot. When you go for the cut shot, then there is a chance for an edge towards the slip. Let's wait and see. It didn't provide the weight, and now the slip fielder has been removed just to prevent that boundary, a potential boundary in that region. Low full toss for one. Saad will keep the strike. 126 for 3 after 23. The drone is also finding gaps in National Stadium, right through the stand, one of the stands for cameramen.
Very smooth. Lovely pictures from National Bank Stadium, and the second semi-final is evenly poised at the moment. Sufyan Mukim is doing his over number 5. The mid-off is inside the circle. Well, KRL is building up the pressure on the batsman, I can see. Let's see how Sufyan bowls. Flight. Yeah, very good. This is a good ball. Well, this ball, he should bowl a little bit outside the off stump, because this is a googly he bowled. Now when he's going to bowl the Chinaman, it should be right on the off stump for the slip fielder. Not bad, but should land. Yes, quite right. As Sufyan is not an easy bowler to score off. He hasn't picked up a wicket, but he has applied some sort of pressure. The slip is on for Sufyan. On a shorter side and cut away well. And there's gonna be 4 runs. The dive's in vain. Well played cut shot. Oh, that was a bad ball. Bad ball by Sufyan. It was a bit quicker and outside the off stump. And he took advantage of it. Saad played, was waiting for that ball. So I very firmly look, just wait and see. Shot, straighter. See, he tried to bowl quicker. So it's a bad ball from Sufyan. I'm sorry, this is the fact. That's a better ball. Fielder has been challenged for second time, just one, and also not a right fielding technique. The fielder, the boundary conceded before, was trying to stop with his feet in an awkward fashion. On the wicket for the right-hander. Nice cut shot all along the carpet, and there is a protection out there. Single has been taken. So Kamran Ghulam retains a strike. 1-3-2 for 3. .132 for 320 overs have been bowled as the partnership building up for the 5th wicket stand. As Kamran and Saad. The target is not daunting, so a decent partnership can certainly challenge the bowling side. KRL. Remember, it's a semi-final and knockout situation. We have already got one finalist. Well, I feel sorry for Kamran Ghulam. Kamran Ghulam, 3 years back, I think, topped the batting order. He scored the highest runs and he made a record of highest score in the domestic cricket. I think 3 years back, and he was not given a chance at that time. And in my shows, I was kept on saying that if somebody score runs, give him a chance on the same season. Don't wait for a couple of years. Then he was given a chance, he scored runs, and then he was dropped again. And that's very sad. I feel sorry for him. Yes, absolutely. He got 100 on debut against England in Multan. The first ever innings he played. He was so determined, very watchful, and against a very quality bowling attack, he smashed 100. Was very impressive. He's still in the squad, but he wasn't in the playing 11 in the last few test matches Pakistan have played. Not giving any room whatsoever. Hamza is into his over number 4, his search of his first wicket. Iftikhar removed Shan Masood, the off spinner Iftikhar.
And that is why Iftikhar has been encouraged to keep Hamza on. And so far, he been so impressive in this over. Big full toss. That won't be two. That was the full toss. And I think the bowler was lucky that he was not hit outside the fence. Hit that one straight to the fielder. Dot ball to end the over. 1-3-4 for 3. 322 runs to get to win this semi-final, to reach the final of the President Cup 2025. Saad on 17 and Kamran Ghulam on 10, slightly more watchful. Change in the bowling now. No Sufyan Mukim. He has been taken off. Now time for the quick bowlers. Cuts well. There's gonna be 4 runs. He doesn't need to run for that. What a start of the over. Beautifully played. Complete control. He must be Ahmed Bashir. That's the name I have in the record. The short ball outside the off stump. Just an invitation for the batsman to hit. They have to bring somebody who can take wickets. It's very important right now. Wickets. It's very important. See what happened to the other side. They were 233 for 3 and they were allowed for 255 within 22 overs. Nicely played. Open the face of the play. That's good batting. That region, the backward point, the third man, is such a productive region for the left-hander. Runs for Kamran Ghulam this time. Third man coming around. No chance for comeback for Kamran Ghulam. Was anxious to come back. Sent back rightly. So Sufyan Mukim has been taking off from the attack. So what do you think when he should be brought back in the attack? Because the asking rate is below 5. I have no idea, no clue about the bowling strength of KRL, because I haven't seen anybody threatening, you can say. Somebody very threatening who can take wickets. Ahmed is a normal medium pacer, no swing so far, and just bowling within the stump. So I don't know if they have any other choices, any other options who can take wickets. The best is Sufyan. He is the highest wicket taker with 17 wickets. Ahmed Bashir has played 3 matches for 2 wickets only, and his economy is 6 runs per over. So he's not that kind of a bowler, who can be, you never know. It's cricket, who can take quick wickets. We have to wait and see. Do you think he's keeping Sufyan for the last overs? If that's the approach, I don't agree with that, because first you have to utilize your best bowler for the wickets.
put pressure on them, then they will give the wickets themselves. Build up the pressure. And the best bowler, whoever is your best bowler, build the pressure. Yes, quite right. I think he should be brought back after a small break, maybe 3 to 4 overs. So 141 for 3 after 26 overs. That's a batting card, quite healthy for SNGPL. 57 for Umair bin Yusuf, who got run out, unfortunately. A massive mix-up in the middle. And Hasibullah got out for 9, cleaned up by Arshad. Shan Masood was looking good. He was playing well against Iftikhar, and then he missed it altogether, the straighter one. Cleaned up by Iftikhar, the captain to captain. Now Saad and Kamran building up the partnership for wicket number 5. Just 4 extras, so there is some sort of discipline and control bowling. But they need wickets for sure in this passage of the game. Hamza has been impressive as well. He hasn't picked up wicket. He's none for 18 to his name. He hasn't provided much room to the left-handers. Well, Hamza don't look threatening, but he's not that easy to score runs. Until or unless he bowls a full toss or something outside the off stump. He's bowling pretty well. Again for a single. Single doesn't matter that much, but I'm still wondering who's going to take the wickets. Which kind of options they have. So far, for me, Hamza is bowling pretty well, but Sufyan is the best bowler. Iftikhar has already bowled some overs, so wait and see. Going for the quick single, mid-off is in action, and Kamran Gulab is quick enough. Throw is wide. It was a risky single. In the end, batsman survived. It's a good tight single. He just punched off the back foot straight away. He set off for the run. He was running towards the danger end, and the bat wasn't perfectly grounded. Could have been dangerous, you know, a direct hit. Well, he's bowling to a very tight lane. I must say that, Hamza. This is his 5th over. He's taken no wicket so far for just 20 runs, but he's bowling to a very tight lane. Coming back for 2, Kamran Ghulam sent him back quite wisely. So you were asking about where the wickets are coming from. That's the bowling card we have. Well, Iftikhar has already bowled 8 overs so far. The seamers, well, I'm not depending much on the seamers because there is nothing in the pitch for the seamers. Sufyan has bowled 5 overs, so 5 overs. When he's going to utilize those 5 overs, that's very interesting. Is he waiting for the last overs? He should not. The captain should utilize him, take some wickets, put some pressure, and then we can see what happens. Hamza has already bowled 5 overs. He's bowling well, not bad. I don't know about the others, other options he has, the captain. So we have to wait and see. He has only utilized 5 bowlers so far. I don't know. Do they have any other bowler? Yeah, Shan Masood used 6 bowlers, and right from before the middle stage of the first innings, he had already used 6 bowlers. So there's always a cushion captain has. He feels comfortable when he has one extra option, one extra part-timer, so he can utilize his bowlers and make changes comfortably. So Arshad Iqbal, who is a premium bowler in this bowling lineup, he can be brought back as well. Ahmed has been very expensive. 32 he considered in 4 overs. Effort ball from the bowler. We have to wait for the umpire signal. It's 1 of the over. No wide given.
Well, still I don't see any movement of the pitch or in the air. That means nobody's working on the ball. After 35 overs, there will be one ball from both ends. No, after the 35th over. So we have to wait and see, because if the ball gets older, then only we might see some reverse swing. Otherwise, so far there is no movement of the seam or in the air. Good looking shot, and he's found the gap. Beautifully played shot, 4 runs. Good balance, good placement. See, it's so easy for Saad to drive through the between extra cover and a mid-off area. Very good shot, good timing. There is nothing in the pitch for the seam. As I said, the pace helps him to play that shot, because trying to bowl quicker, the pace gives him the time to time it through the covers or wherever he wants to play. The spinners can be important. Somebody who can swing the ball, but Ahmed is not doing anything. Well, since he has come back in this bowling attack, he hasn't troubled much Saad round the wicket. Just good line and well played. So anything outside the off stump, any width to Saad Khan, and he just makes most of those opportunities. So they can't afford to give away many boundaries, as asking rate is going down, and still plenty of wickets in hand. Kamran Ghulam is slightly quiet on 12, but he can be so dangerous when he gets set in the middle. Pulled away, not caught of the middle. 2 fielders are converging. It's a bad effort, should have been stopped. 4 runs. Good shot, as I said earlier. The seamers, I don't think so. Salman did very well, took 6 wickets, but he was keeping the ball within the stumps, and suddenly he ran through in the 7th, 8th over, I think. So it was his 7th over when he ran through the batting lineup. Otherwise, on this track, seems to be very easy for a fast bowler. If you bowl short of length, it was so easy for him to pull that. There is 2 fielder. Might be because of that he was bowling short ball. Could have tried more better. Obviously at this level we expect far better effort than that. Inside edge almost chopped on. Good fortune for the batsman. Hands on the head for Ahmed. So expensive over from Ahmed has come to an end. 152 for 3 on the board after 28. .152 for 3 on the board. So it's time for the change in voices. Says Ayman Anwar and Zishan Khalid will take up the commentary now. बहुत बहुत शुक्रिया फर्रुख. एक मौका आया था KRL के पास जब वो मैच में कुछ हद तक वापसी आए थे. एक ही ओवर में उन्होंने शान मसूद कप्तान और उमर बिन यूसुफ को डकआउट की राह दिखाई थी, लेकिन उसके बाद एक सेटल होती हुई पार्टनरशिप दोनों ही बैटर साद और कामयान के दरमियान. स्पिनर्स को भी अच्छा खेल रहे हैं और फास्ट बॉलर्स के खिलाफ भी अब आसानी रन हासिल कर रहे हैं. इतना ब्रेक मौजूद नहीं पिच पे, और जिस अंदाज से हम पहली इनिंग्स में देख रहे थे अनवर, गेंद थोड़ा सा नीचे रह रही थी, कुछ वैसा भी इतना खास अब देखने को मिला नहीं दूसरी इनिंग्स में. बिल्कुल बहुत अच्छा कमबैक किया है केआरएल की टीम ने. 2 अर्ली विकेट्स ले ली थी, लेकिन उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप लगी है SNGPL की तरफ से. बट स्टिल हम ये कह सकते हैं कि ये मैच मिडवे है. यहाँ पे 1 विकेट या 1 पार्टनरशिप दोनों टीमों को अपलिफ्ट कर देंगी. और यूजुअली
लो रहता है क्योंकि मॉइस्चर होता है तो बॉल स्किड करता है, लेकिन अभी थोड़ा सा इवन बाउंस आ रहा है तो इजी हो रहा है बैटर के लिए। इस दौरान कदमों का इस्तेमाल किया, ड्राइव किया कामरान गुलाम ने, एक्स्ट्रा कवर को बीट किया, मिड ऑफ के फील्डर गेंद की ताक़ुब में लेकिन रोक नहीं पाएंगे। भरपूर कोशिश की थी आमिर बरकी ने, डाइव की, गेंद को पीछे ढकेलना जरूर चाहा लेकिन गेंद अपना मोमेंटम गेन करती हुई बाउंड्री लाइन को पार कर गई। 4 रन हासिल हुए यहाँ कामरान को। फुल पिच डिलीवरी थी, बहुत अच्छा ड्राइव किया था उसको कामरान गुलाम ने और बहुत ही उम्दा चेस था फील्डर की जानिब से, लेकिन अनलकी रहे कि बॉल को बैक फ्लिप करने के बजाय अपने साथ ही बाउंड्री के अंदर ले गए। काफ़ी एतमाद हासिल हो रहा है अब कामरान को और बासानी अब कदमों का इस्तेमाल करके ग्राउंड की चारों सिमत रन हासिल कर रहे हैं। इतने फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस नज़र नहीं आते KRL के पास, सिर्फ अरशद इकबाल और अहमद ही हैं जिन्होंने तेज़ गेंदबाजी की है। और कुछ देर पहले हमने देखा था अरशद इकबाल दाएं जानिब डाइव करके गेंद को रोकना चाह रहे थे लेकिन कुछ तकलीफ में मुब्तला नज़र आ रहे थे। देखना होगा कि कब उनको गेंदबाजी के लिए एक बार फिर लाया जाता है, अगर वो मुकम्मल तौर पर फिट हैं। कि अब तक तो कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही है, ना ही गेंद इतना ब्रेक ले रहा है। ऑल्दो काफ़ी अच्छी हवा ज़रूर चल रही है जिससे आप उम्मीद कर सकते हैं कि इतनी ड्यू नहीं आज होगी, लेकिन उसके बावजूद कोई मुश्किलात नहीं पेश आई अब तक दोनों ही बैटर्स को। 29 ओवर्स यहाँ हुए मुकम्मल SNGPL 161 3 विकेट्स के नुकसान पे। कुछ मुख्तलिफ करना चाह रहे थे अब इफ्तिखार अहमद और पहला कदम उठाया है, बॉलिंग में तब्दीली की गई है। अरशद इकबाल को लाए हैं अब यूनिवर्सिटी रोड एंड से। याद रहे पहली कामयाबी दिलाई थी अरशद इकबाल ने जब हसीबुल्ला को डकआउट की राह दिखाई थी। देखना होगा कि अपने दूसरे स्पेल में किस अंदाज से गेंदबाजी करते हैं अरशद इकबाल। अच्छा स्टार्ट किया है अरशद इकबाल ने, हार्ड लेन को हिट करते हुए अपने मेन बॉलर को वापस लेकर आए क्योंकि ये पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा क्रूशल है। कामरान गुलाम की और साद की दोनों ही ऐसे बैटर हैं जो अगर क्रीज पे खड़े हो गए तो मैच को एक तरफा कर सकते हैं। लेकिन मैंने अभी देखा अरशद इकबाल जब अपना रनअप लेते हुए आ रहे थे तो उनके हाथ में जो बॉल था वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे न्यू बॉल हो, उसके लेबल भी उसके ऊपर नज़र आ रहे हैं। तो बड़ी अच्छी इन्होंने केयर की है इस बॉल की। तो सीमर्स आर स्टिल इन टू प्ले कि वो देखें दिखा भी रहे हैं सुन लिया उन्होंने। हाँ बिल्कुल, ऑल्दो आप काफ़ी धीमा बोलती हैं लेकिन आपकी आवाज़ लगता है वहाँ तक पहुँच रही है। एमन मिड ऑफ के फील्डर और मिड ऑन के फील्डर दायरे के अंदर मौजूद हैं तो कोशिश करेंगे यहाँ पे कामरान गुलाम इसका फ़ायदा उठाने की, लेकिन एक रन मुकम्मल ना कर सके इस गेंद पे। ये अच्छी एफर्ट यहाँ पे तमाम ही बॉलर्स की, इन्होंने गेंद की शाइन को बरकरार रखा है। अमूमन हम देखते हैं कि बॉलर्स इतनी गेंद को केयर नहीं करते जिसकी बदौलत गेंद जल्दी पुरानी हो जाती है, इतना बाउंस नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जिस तरह आपने जिक्र किया, ऑल्दो आप खुद भी फास्ट बॉलर हैं एमन, तो गेंद जितना ज़्यादा शाइन बरकरार रखे उतना मौका मिलता है कि गेंद को आप मूवमेंट हासिल कर सकें। याद रहे कि दोनों ही एंड से नई गेंद अब इस्तेमाल होती है वनडे क्रिकेट में 35 ओवर्स तक। इस दौरान ड्राइव किया, खूबसूरत ड्राइव कामरान गुलाम का, हिलने ना दिया यहाँ पे एक्स्ट्रा कवर या मिड ऑफ के फील्डर को, दरमियान से शानदार अंदाज से गैप तलाश किया और 4 रन समेटे। बहुत ही खूबसूरत तरीके से शॉट को खेला है कामरान गुलाम ने 4 रन के लिए। अपनी लाइन मिस कर दी और लेंथ भी मिस कर दी, ओवर पिच बॉल हो गई, बॉल हल्का सा अंदर आया लेकिन
कोई मुश्किल नहीं हुई कामरान गुलाम के लिए इस बॉल को खूबसूरती से 4 रन के लिए खेलने के लिए। काफ़ी तजुर्बा है कामरान गुलाम के पास, और जब जब इनकी टीम को इनके लिए इनकी ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ ये आके रन्स करते हैं। चाहे अभी हम SNGPL का जिक्र करें या पाकिस्तान टीम का जिक्र करें, जब इनको मौका दिया गया था टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने का, और मुश्किल वक्त में हमने देखा जब पाकिस्तान इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पहला मैच हार चुकी थी आज से कुछ साल कबल, वहाँ पे इनको मौका दिया गया, अपने लिए डेब्यू किया उन्होंने, और आते के साथ ही पहली इनिंग्स में एक मुश्किल पिच पे सेंचुरी स्कोर की थी। बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त नॉक खेला था कामरान गुलाम ने, और क्रूशल टाइम पे रन स्कोर किए थे, और जिस बैटर को रिप्लेस करके आए थे उसकी जिम्मेदारी संभालना बहुत ही मुश्किल था। यहाँ बिल्कुल वक्त लेते हैं कामरान गुलाम, और कोशिश करते हैं कि जो वक्त वो क्रीज पे गुजार रहे हैं उसका फ़ायदा भी उठाएं बाद में। गाइड किया बासानी साद ने, ये इनका काफ़ी मनपसंद एरिया है जहाँ पे इन्होंने काफ़ी हद तक शॉट खेल के अब तक रन हासिल किए हैं साद ने। तो ऐसा लग रहा है कि वो गम भुला चुके हैं अब साद, क्योंकि मुलविस थे उस रनआउट में जब उमर बिन यूसुफ अनफॉर्चुनेटली रनआउट हो गए थे, स्लिप हो गए थे और मौका नहीं था उनके पास वापस जाने का। और अमूमन जब बैटर इस अंदाज से रनआउट होता है तो काफ़ी गुस्से का इजहार भी करते हैं, लेकिन अपने जज्बात पे काबू किया था वहाँ पे उमर बिन यूसुफ ने। बिल्कुल, अगर साथ भी जल्दी आउट हो जाते फिर तो उनको वो डांट सुननी पड़ती, तो उनका पिच पे रहना ही ज़रूरी था इस वक्त, और वो उसी तरह से जा रहे हैं सॉफ्ट सिंगल लेते हुए। शानदार ड्राइव, और बीट करने में भी कामयाब हुए मिड ऑफ को। मिड ऑन के फील्डर अब तक गेंद की ताकुब में है, कुछ हद तक गेंद स्लो हुई, इसकी बदौलत मौका मिला इफ्तिखार को गेंद को रोकने का, लेकिन मौका मिला कामरान को 2 रन मजीद हासिल करने का। तो अच्छा ओवर इख्तिताम पजीर हुआ SNGPL के लिए, 30 के बाद पहुंचा 169, 3 विकेट्स के नुकसान पे। तो कप्तान इफ्तिखार अहमद ने अब महसूस किया है कि उनको ही कुछ करना होगा अपनी टीम के लिए। और ये अगर आप KRL की अब तक की बॉलिंग की कारकर्दगी देखें, इनके स्पिनर काफ़ी हद तक मुतासर कुन साबित हुए हैं इस टूर्नामेंट में। 41 विकेट्स अब तक हासिल की हैं तमाम स्पिनर्स ने जिन्होंने अब तक गेंदबाजी की है इस प्रेसिडेंट्स कप वनडे टूर्नामेंट में KRL के लिए, जबकि फास्ट बॉलर्स इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं साबित हुए, सिर्फ 20 ही विकेट्स ले सके। बहुत स्लो बॉल की इफ्तिखार ने, बहुत ही ज़्यादा स्लो पिच है और उस पर बिल्कुल भी पेस नहीं दे रहे। उनको पता है कि इस पिच पे किस तरह से फ़ायदा उठाया जा सकता है। इनवाइट कर रहे हैं बैटर को कि वो उनको हार्ड हिट करें स्लाइड को देखते हुए। दौरान मौका था यहाँ पे रन हासिल करने का, लेकिन टाइम न कर सके। एमन, आप अब तक क्रिकेट खेल रही हैं और अब आप बॉल की कंडीशंस का भी जिक्र कर रही थी। हमने वुमेंस क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस देखी हालिया वर्ल्ड कप में, ऑल्दो फतूहात हासिल ना कर सके, लेकिन बॉलर्स ने काफ़ी शानदार अंदाज से गेंदबाजी की थी। जब ऑस्ट्रेलिया को भी मुश्किल से 2-4 किया था और काफ़ी हद तक करीब आ गए थे इंग्लैंड के ख़िलाफ़ अपनी पहली फतह हासिल करने से। आपको क्या लगता है कि मेरा पहला सवाल ये होगा कि आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ रिवर्स स्विंग हासिल कर सकेंगे बॉल की कंडीशन को देखते हुए बॉलर्स? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि बॉल बिल्कुल न्यू है और एक साइड रफ नज़र आ रही है, तो यहाँ पे उसका एडवांटेज उठाना भी चाहिए इनको, क्योंकि कराची का मौसम ऐसा है, यहाँ पे हवा चलती रहती है, तो यहाँ पे फास्ट बॉलर तो कभी गेम से आउट ही नहीं होते। तो इट्स जस्ट कि आप लाइन और लेंथ क्या कर रहे हैं। हमने जितनी भी बाउंड्रीज देखी हैं सारी लूज डिलीवरीज पे आई हैं, हमने नहीं देखा कि कोई बॉलर उसको कंसिस्टेंटली हिट कर रहा हो। एक बार फिर टांगों पे पड़ी हुई गेंद थी जिसको आहिस्ते के साथ एक बार फिर खेल दिया अहमद की जानिब जो मौजूद थे डीप मिड विकेट पे। एक और रन हासिल किया कामरान गुलाम ने, जो स्ट्राइक भी अब रिटेन करेंगे अगले ओवर के आगाज़ में। 31 के बाद SNGPL 170 71 इनफैक्ट
3 विकेट्स के नुकसान पे। और ये वो स्टैट है जिसका हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि इतना ज़्यादा फ़ायदा ना उठा सके हैं अब तक के फास्ट बॉलर्स। KRL का अगर हम जिक्र करें, लगभग 100 ओवर्स कराए हैं लेकिन सिर्फ 20 विकेट्स इनके नाम रही हैं और इकॉनमी भी ज़्यादा रही है, एवरेज भी ज़्यादा है, जबकि स्पिनर्स ने ज़्यादा जिम्मेदारी अपने कांधों पे उठाई है और 41 विकेट्स हासिल की हैं। और इससे कुछ देर पहले हमने देखा था लीडिंग विकेट टेकर ना ही सिर्फ KRL के लिए बल्कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट सुफियान मुकीम ही हैं जिन्होंने अब तक 17 विकेट्स ली हैं। अभी उनके मज़ीद ओवर्स आना बाकी है और देखना होगा कि अब कब उनको एक बार फिर मुतारिफ कराया जाता है। और लगता है मेरी भी आवाज़ वहाँ जा रही है और सुफियान मुकीम को अब गेंद दे दी गई है। काफ़ी क्रूशल होंगे सुफियान मुकीम के अगले 5 ओवर्स। मेरा अगला सवाल एमन आपसे, आप अभी भी वुमेंस क्रिकेट को फॉलो करती होंगी ज़रूर, तो आपके नज़र में कौन ऐसी वुमेंस क्रिकेटर हैं जो उभरती हुई आ रही हैं एज अ फास्ट बॉलर? फास्ट बॉलिंग में हम बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं। बहुत टाइम हो गया कि हमने कोई अच्छा फास्ट बॉलर नहीं देखा जो आके रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सके। राइट नाउ हमारे पास 2 ही फास्ट बॉलर हैं, डियाना बेग और फातिमा सना। तो वो जो थर्ड पेसर है वो हम मिसिंग है। तो अभी मैंने रिसेंटली अंडर 19 के साथ वैसे ही मैचेस खेले थे, प्रैक्टिस मैचेस खेले थे, तो वहाँ पे 1-2 यंगस्टर्स थे मुझे बहुत अच्छी लगी और उन्होंने जाके बांग्लादेश में भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। तो आई एम श्योर कि जो अपकमिंग बैच है बहुत अच्छा होगा। तो अनकरीब हम देख सकते हैं आपको बॉलिंग करते हुए एक बार फिर वुमेंस टीम के लिए? कोशिश तो पूरी है लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी इंजरी की वजह से मैंने फास्ट बॉलिंग जो है वो छोड़ दी है। अब लेग स्पिनर खेलना चाहती हूँ। हमने बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स को माजी में देखा जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ एक मुख्तलिफ रोल से किया था लेकिन बाद में उसको तब्दील किया। अज़हर अली एक ऐसे प्लेयर हैं जो एज अ लेग स्पिनर अपना लोहा मनवाना चाहते थे लेकिन उसके बाद एक मुस्तनद बैटर बन के सामने आए और काफ़ी हद तक रन्स बनाए पाकिस्तान के लिए अपने टेस्ट करियर में। लेकिन अभी जो हमने स्टैट्स देखे थे जिसमें स्पिनर्स की 40 विकेट्स थी, लेकिन उसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिसेबल थी कि स्पिनर्स के ओवर्स भी बहुत ज़्यादा थे। 178 स्पिनर्स के ओवर थे और फास्ट बॉलर के 90 ओवर्स थे। तो ये भी एक ह्यूज डिफरेंस है। मे बी हम अपने फास्ट बॉलर्स को उस तरह से बिलीव नहीं करते उनके ऊपर कि हम उनको क्रंच सिचुएशन में दें। हम स्पिनर्स पर ज़्यादा रिलाई करते हैं। स्पेशली KRL की टीम तो बहुत ज़्यादा स्पिन डोमिनेंट लग रही है हमें। यहाँ आपने सही फरमाया, जितने ओवर्स लगभग पेसर्स ने किए हैं 97.3 ओवर, उससे दुगने ओवर्स कराए हैं स्पिनर्स ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट, जिसकी बदौलत उनको विकेट्स भी हासिल हुई हैं। और आज भी हमने देखा सिर्फ 2 ही फास्ट बॉलर्स का इंतखाब किया था KRL की टीम ने। अहमद इतना मुतासर कुन साबित ना हो सके, ऑल्दो अरशद इकबाल ने अच्छी लाइन लेंथ पे गेंदबाजी की थी, लेकिन अब कंडीशंस इतनी आइडियल है बैटिंग के लिए कि कहीं से भी किसी भी एंड से मुश्किलात नहीं आ रही। और ये वो बॉलिंग कार्ड अब तक 5 बॉलर्स आजमाए हैं इफ्तिखार अहमद ने। वो खुद और अरशद इकबाल 1 विकेट हासिल कर चुके हैं, जबकि 1 विकेट रनआउट के जरिए हासिल की। इस दौरान पैडल किया साथ ने, मौका नहीं फाइन लेग के फील्डर के पास, आसानी से एक और 4 रन हासिल हो सकेंगे। लूज डिलीवरी थी इफ्तिखार अहमद की तरफ से, बहुत ज़्यादा लेग साइड पे थी, इजी स्वीप शॉट था फॉर एनी बैटर। बहुत ज़्यादा फ्लाइट दे रहे हैं अपनी बॉल में, बैटर को बहुत ज़्यादा लालच देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बॉल 4 रन के लिए चली गई। अच्छी एग्जीक्यूशन थी। आखिरी ओवर है इनके कोटे का। इफ्तिखार अहमद काफ़ी पीछे कर गेंद कर बैठे, इस दौरान 1 रन मजीद हासिल हो सकेगा। सिर्फ 78 रन दरकार हैं अब SNGPL को। 7 विकेट्स अब तक इनके पास मौजूद। आने वाले बैटर्स का जिक्र करें तो उसमें मोहम्मद शहजाद एक उभरते हुए ऑलराउंडर जो इनकी टीम का हिस्सा है, जो अब तक रन्स हासिल कर चुके हैं इस प्रेसिडेंट्स कप वनडे टूर्नामेंट में। ख़ास तौर पर अगर हम उन मैचेस का जिक्र करें जो SNGPL ने इस वेन्यू पे खेले हैं, उसमें भी एक 19 सेंचुरी शामिल थी जब एक बड़ा स्कोर चेस कर रही थी SNGPL की टीम। आज ऑल्दो इतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं की शहजाद ने, लेकिन फील्डिंग में अच्छी कारकर्दगी दिखाई, कैचेस अच्छे पकड़े, कट किया, गैप तलाश किया, काफ़ी फासला तय करना है डीप में कवर के फील्डर को। कामयाब भी हुए यहाँ पे अहमद, लेकिन इस दौरान मौका मिला साथ को मजीद 2 रन हासिल करने का। बिल्कुल पेस ऑफर नहीं कर रहे इफ्तिखार अहमद। बहुत आसान हो रहा है बैटर्स के लिए उनको पिक करना। इनकी पुरानी बॉल थोड़ी सी लो रही थी, लेकिन उसको कामरान गुलाम ने बहुत अच्छे से खेला था। वो जज कर चुके हैं कि क्या नेक्स्ट बॉल आ रही है इफ्तिखार की जानिब से। फिर अरशद इकबाल की जानिब खेले थे, डायरेक्ट हिट हुई है स्ट्राइकर्स एंड पे।
अपील करते हुए नजर आ रहे हैं विकेट कीपर और अरशद इकबाल। इस दौरान बॉल रिकोशे होके गई मिड ऑफ की जानिब। देखना होगा कि क्या अंपायर इसको थर्ड अंपायर की जानिब भेजते हैं, और ऐसा लग रहा है कि इन्होंने थर्ड अंपायर से रजू भी कर लिया है। क्या ये वो वक्त है, क्या ये वो मौका है जहां KRL को विकेट हासिल हो सकेगी और उनको मौका मिलेगा मैच में वापसी आने का? बिल्कुल ये मैच चेंजिंग सिचुएशन हो सकती है KRL की टीम के लिए, लेकिन कामरान गुलाम काफ़ी क्विक लग रहे हैं। करीबी मामला हो सकता है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि शायद उनका बैट हवा में हो। फील्डर भी यही कह रहे थे कि बैट ऊपर था, लेकिन ऐसा लगता है कि एमन एक बात होता है कि थर्ड अंपायर इसको हर एंगल से और मुकम्मल वक्त लेके फैसला सुनाना चाहेंगे, क्योंकि जो बेसिक्स होती हैं क्रिकेट की, जब आप रन मुकम्मल करते हैं तो आपको कोशिश करना होती है अपना बैट स्लाइड करते हुए क्रीज के अंदर लेके जाएं। लेकिन कामरान गुलाम काफ़ी कैजुअली आए और बिल्कुल स्ट्रेच नहीं किया, बिल्कुल बल्ला ला के रखा, और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल उसी मौके पे गेंद स्टंप्स को टकराई थी। अमूमन जहाँ कहीं ना कहीं शक व शुबात होते हैं तो बेनिफिट ऑफ द डाउट बैटर को दिया जाता है, लेकिन देखना होगा कि थर्ड अंपायर क्या फैसला सुनाते हैं। अब इस एंगल से देखना होगा कि क्या बैट हवा में है। जब बॉल स्टंप्स को टकराई थी, जो आवाज़ आई थी, उस दौरान अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि बैट शायद हवा में हो, लेकिन थर्ड अंपायर ही इसका बेहतर फैसला सुना सकते हैं। कामरान गुलाम ज़रूर कैजुअल हुए, लेकिन फील्डर कैजुअल नहीं हुए। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त थ्रो की और डायरेक्ट हिट की, इसलिए इतना करीबी मामला हो गया है। जब गेंद स्टंप्स के पास मौजूद है उस फ्रेम में आपको ऐसा लगता है कि शायद कुछ फासला है ग्राउंड और बैट के दरमियान। डायरेक्ट हिट की कोशिश थी, कामयाब भी हुए अरशद इकबाल। और कामरान गुलाम काफ़ी गौर से गेंद को देख रहे थे, उनको अंदाज़ा था कि क्या हो रहा है, उसके बावजूद उन्होंने इस बात को तरजीह ना दी कि वो बैट को स्लाइड करते। ऐसा लगता है कि फैसला बड़ी स्क्रीन पे आ ही जाता है और थर्ड अंपायर ने इसको नॉट आउट करार दिया। तो क्योंकि ये नॉट आउट करार दिया है और इस दौरान हमने देखा कि बैटर ने रन भी मुकम्मल किया, तो 2 मजीद रन यहाँ पे हासिल होंगे SNGPL को और कामरान गुलाम को। लेकिन अब थोड़ा सा मोहतात होना होगा कामरान गुलाम को, क्योंकि हमने देखा है इस इनिंग्स में पहले ही 1 विकेट गंवा चुके हैं रनआउट के जरिए। अभी भी मैच में वापस आ सकती है KRL की टीम अगर एक के बाद एक विकेट हासिल करें। बहुत मोहतात रहना होगा यहाँ पे साद को और कामरान को। एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड कर ली है उन्होंने, काफ़ी मेहनत कर ली है अपनी टीम के लिए स्टेज पर पहुँचाने के लिए। इस तरह से अगर कैजुअल रन आउट्स हो जाएंगे तो आखिर में सिर्फ अफसोस ही होगा उनको। इफ्तिखार अहमद क्या अपनी आखिरी गेंद पे कुछ जादू कर सकेंगे अपनी टीम के लिए? स्लो गेंद थी, इसको दिफाई अंदाज से खेला, कोई रन हासिल ना हो सकेगा, लेकिन एक अच्छा और मुस्बित ओवर मुख्ताम पसीर हुआ SNGPL के लिए। 10 रन समेटे 33 के बाद SNGPL 183 3 विकेट्स के नुकसान पे। इधर आ
73 रन की ज़रूरत है सिर्फ यहाँ पे SNGPL को फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए, और 7 विकेटें दरकार हैं KRL की टीम को फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। तो एमन, अगर हम ऐसा कहें कि KRL के लिए अभी नाजुक सूरत हाल है तो गलत ना होगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों बैटर इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नज़र आ रहे हैं, लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग स्पेल्स भी हमें नज़र नहीं आ रहे कि कोई मुश्किलात क्रिएट करें। ना हमें पिच पे ब्रेक नज़र आ रहा है, ना हमें कोई ऐसी वेरिएशंस नज़र आ रही हैं बॉलर्स की तरफ से। कुछ मैजिक चाहिए होगा यहाँ पे KRL को। अच्छी गेंद तेज की थी और स्किट करी, और हमने देखा बाहरी किनारे की काफ़ी नज़दीक से होती हुई पहुंची साथ बेग के हाथ में। कुछ किस्मत भी साथ देती हुई नज़र नहीं आ रही अभी KRL का। बिल्कुल ब्रेक खेलने गए थे इस बॉल पे, लेकिन बॉल बिल्कुल सीधा रहा। आज सुफियान मुकीब से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता थी KRL को कि अच्छी लाइन और लेंथ पे गेंद कराएंगे। ये वो पहली गेंद जिसको अगले कदम पे आके खेलना चाहते थे, लेकिन बीट हुए, और अगली गेंद जो पीछे गिरी थी कट करना चाहते थे, लेकिन एक बार फिर बीट हुए साथ। यहाँ पे कुछ कोशिश करना होगी KRL को कि मज़ीद एक आधा फील्डर अंदर लेके आए, कुछ दावत दी जाए बैटर को कि वो कदमों का इस्तेमाल करें, कुछ मुख्तलिफ करें और अपने जाल में फंसा सकें स्पिनर्स। बैकवर्ड पे गए, एक बार फिर मिसफील्ड। आज फील्डिंग का मायार इतना अच्छा नहीं रहा है KRL का। 2 रन आसानी हासिल किए इस मिसफील्ड के जरिए और अपनी निस सेंचुरी मुकम्मल की साथ ने। इनके लिस्ट करियर की तीसरी निस सेंचुरी, लेकिन काफ़ी कीमती इस लिहाज से कि आज सेमीफाइनल है, बड़ा मौका है और अपनी टीम के लिए कीमती रन हासिल किए। शानदार बैटिंग की है साथ ने, यहाँ पे मेरिट पे खेले हैं कम्प्लीटली और अपनी टीम को लेके चले हैं साथ। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि ये फॉर्म में नहीं है या अच्छी पोजीशन में नहीं है। अच्छा साथ निभाया है उन्होंने अपनी टीम का इस क्रूशल मौके पे। रिस्पेक्ट देते हुए नजर आ रहे हैं सुफियान मुकीम को कि ये वाहिद थ्रेट हैं KRL के लिए। सुफियान मुकीम का एक और ओवर यहाँ हुआ मुकम्मल 34 के बाद। SNGPL 186 3 विकेट्स के नुकसान पे। चौंतीस ओवर्स यहाँ मुकम्मल हो चुके हैं और यहाँ पे अब एक ही गेंद का इंतखाब करना होगा, जिससे मज़ीद 16 ओवर्स डालने होंगे KRL की टीम को। और देखना होगा कि इस इक्वेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं या नहीं, क्योंकि बज़ाहिर तो काफ़ी आसान मालूम होती है। सिर्फ 70 रन दरकार हैं और दोनों ही बैटर्स काफ़ी सेट हैं। कामरान गुलाम ने टाइम लिया और अब सेट हो चुके हैं और दूसरी जानिब साथ अपनी निफ सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं। अब देखना होगा कि साथ, क्योंकि उमूमन हमने देखा है यंगस्टर्स को जब अपना पर्सनल माइलस्टोन अबूर कर लेते हैं तो उसके बाद कुछ रैश स्ट्रोक खेलते हैं, कुछ बड़ी हिट्स की जानिब जाते हैं। क्या वो इसी हिकमत अमली के साथ जाएंगे या गेंद को मज़ीद डीप लेके जाएंगे? अच्छी बॉल थी हमजा की तरफ से और बहुत ही उम्दा फील्डिंग, सिर्फ 1 रन पे रिस्ट्रिक्ट किया। बिल्कुल अब मैच सिचुएशन तो उनसे यही डिमांड कर रही है कि वो आखिर तक अपने इस मैच को लेके जाएं और फिनिश कर कर आएँ। और जैसे जैसे ये स्कोर कम होता जाएगा और आसानी होती जाएगी SNGPL की टीम के लिए। भरपूर तजुर्बा मौजूद कामरान गुलाम के पास और अच्छे साइन भी है। एक एंड पे आपके पास इतने तजुर्बेकार बैटर हैं कामरान गुलाम और दूसरी जानिब नई नौजवान खिलाड़ी साथ
दोनों ही के बीच में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री नज़र आई। वक्त लिया आगाज़ में, लेकिन उसके बाद अब देखा आसानी सिंगल भी हासिल कर रहे हैं, ख़राब गेंदों पे फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड करना होगा हमजा को। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ दोनों फील्डर रिंग के बाहर हैं, बहुत इजी सर्कल है जिसके लिए जिस लेंथ पे वो बॉलिंग कर रहे हैं, इन दोनों बैटर्स के लिए स्ट्राइक रोटेशन बहुत इजी है। थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप करना होगा, अटैकिंग फील्ड लेनी होगी ताकि बैटर को इनवाइट करें कि वो कोई रैश शॉट खेल सकें। इस दौरान 2 कदम आगे आए, इसको फुल टॉस बना के ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ की जानिब। एक्शन में एक बार फिर दिखाई दिए सुफियान मुकीम, काफ़ी दूर से नज़र आ जाते हैं सुफियान मुकीम, जिस अंदाज का इनका हेयर स्टाइल है, और काफ़ी मुश्किल होती होगी इनको कैप पहनने में भी। खर्चा भी बचता होगा हेयर ब्रश का। उमूमन आपको फुटबॉलर्स ऐसे हेयर स्टाइल्स डॉन करते हुए नज़र आते हैं, तो काफ़ी मुनफरद हेयर स्टाइल सुफियान मुकीम का, और आई एम प्रीटी श्योर कि आने वाले कमेंटेटर्स भी इस बात पे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि वक्त हुआ जाता है। सात जो आज एक अहम वक्त पे बैटिंग करने आए, और जब वो आए थे तो कुछ गफलत के ज़रिए हमने देखा उमैर बिन यूसुफ रन आउट हुए, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी इस इनिंग्स का भरपूर फ़ायदा उठाया, ज़्यादातर रन्स सिंगल्स और डबल्स के ज़रिए हासिल किए, और जहां मौका मिला वहां चौके भी लगाए। तो एक अच्छी पोजीशन पे अब पहुंच चुकी है SNGPL की टीम इस मैच को जीत के फाइनल तक रसाई हासिल करने के लिए, और सुफियान मुकीम एक बार फिर एक्शन में दिखाई देंगे। ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर लो फुल टॉस, जिसको ड्राइव किया और 1 रन बासानी हासिल किया। इसी के साथ साथ वक्त हुआ जाता है कॉम बॉक्स में चेंज का, जहां पे आपको ज्वाइन करेंगे फारूक रियाज। Thank you very much, Lishan Khalid. The Neyman's 36th over has just begun. His partnership is threatening, and the match is slipping away from KRL. Very good batsmanship from Saad. Very mature, very watchful, and is built up in his innings in style, that's for sure. Sufyan Mukim is one of the go-to bowlers for KRL. He hasn't picked up a wicket yet, but he has been so economical. But the kind of total they are defending at the moment, 256, not a big score, so they need to be economical. They need to pick up wickets on regular basis. Just one of the overs so far. No chance, no chance. Was anxious to pick up a run. It's good tight bowling. It's going through his overs very quickly. Sufyan. Once again, no chance. Sent back by his partner. That's good bowling. And Is this the last chance? 36 overs gone, 192 for 3.
They need 66 of 14 overs, SNGPL, to reach the final. It's Hamza once again in action. Well, a bit disappointing performance by KRL. First, they're batting when they lost 7 wickets for just 22 runs in the end. At one stage, they were going very strongly. Then now the bowling. There's nothing, no venom in their bowling at all. So it's very easy and simple for SNGPL. Down the track, inside out, lovely shot. Pick the spot, 4 runs. As I said, there is nothing in the pitch, and the bowlers, they're not that impressive. Hamza bowled pretty well. He was bowling to a very tight length, but now they're opening up. Saad using his feet. Good to see somebody using his feet over the extra cover. Good. Now, in my days, if somebody used to play in the air, you know, the big players used to say, "Oh, you're playing in the air." Now it's a tradition. Everybody plays in the air. It's such a go-to shot for the left-handers, inside-out drive. And Saad took on the bowler in style. A very safe shot, well calculated. Down the pitch, just changes length. Slightly quicker through the air. Just saw the batsman coming down the track. 6 or 7 runs are enough per over from here for the batting side. Gone this time, clean bowled. Kamran Ghulam missed it altogether. He must be dejected with himself, and Hamza has got his first breakthrough. I'm really surprised which kind of shot he played. The ball was within the stump, a little bit quicker. He went for a cut shot to a ball which was on the middle and off stump. Let me have a look. Was it a low ball, kept low, or what? Legal ball, and let's go and have a look. Yes, a little bit low. Though the ball was within the stump, but he went for a cut shot and is out. Lost their 4th wicket, SNGPL. 34 of 47 balls. 198 for 4. Kamran Ghulam is the latest departure, and that brought Shahzad in the middle. Slightly quicker through the air, and he missed it. Mohammad Shahzad. Are we going to see another collapse? Is it possible? Is it possible? It's just a game of cricket. Suddenly something will happen. 3-4 wickets they're going to lose. Once again, he bowled a bit quicker, like the previous one. Yes, but quicker, but down the leg side, and easy pickings. So he's off the mark, Shahzad. 199 for 4 on the board. And that is how Kamran Ghulam departed. Quicker through the air. Wanted to play the cut shot with the open face of the blade. Surprised with the pace and missed it altogether. Comprehensively bowled in the end. Not the best of short selections. 57 runs they need, and that's the bar chart. We have just 4 red dots. No tall buildings, but still they have paced their innings very well. So you're looking for the more red dots? Yes, Mr. Farooq? And quite a few, but I think they are well placed. They will go over the line with at least 4 wickets in hand. KRL were 233 for 3. So anything can happen in cricket. Let's see and wait. Sufyan is bowling his last. This is 9th over.
Let's do it, Mr. Sufyan. Something extraordinary. Well driven. Stunning shot from Saad. Drives along the carpet. He doesn't need to run for that. Wonderful batting continues from the left-hander. He's into the 60s now. Well, I'm really surprised. A good batting track. That was a bit flatted ball, but good cover drive through the covers. Lovely timing. So nothing is there for the bowlers, and feel sorry for them. But what happened to KRL, I don't know. They lost 7 wickets for just 22 runs. Amazing. What a collapse. Goes to the offside once again. There is a man for protection. He has been so impressive to the offside. Saad, he has played some lovely shots, inside-out drives. The cover drive before that delivery. He has placed the ball well, has opened the face of the blade quite nicely. And that is why his side is in the driving seat. Yes, yes. Chance of a run out, chance of a run out, and the throw is on. I think the batsman has made it. Half appeal from Sufyan Mukim. And the ball deflected the stumps, and that allowed the batsman to go back for 2. Well, it's not, I think, it's not Saad, I think. So it's Mohammad Shahzad who is at the danger end, isn't it? I think so. He's the one who drove the ball. Yeah, Shahzad. So it doesn't matter if it's dangerous. The fielders are not excited, so there's a side-on angle. Where is the ball? Where is the ball? The batsman is well in. Good technique by Shahzad. The bat was perfectly grounded. Well, though it's grounded, but they must learn from Rizwan how he dives to save his wicket. It's very important. Your own wicket is very important all the time. They got 2 runs, but Shahzad should just take singles. Leave everything to Saad, who's batting at 62. But that was a risky single, and nevertheless the batsman survived. That's for sure. They won't take any chance against Sufyan Mukim. Just 7 balls, 7 legitimate balls are left from Sufyan. They just want to see him off. Going for the quick single again. Chance of a run out at the bowling end. Quite comfortably made it. .208 for 4. The last ball single. The batsman wasn't in the frame, so that could have been gone, but they should be careful. Shahzad and Saad, they can't afford to lose wicket from this end, because it's a semi-final, it's a knockout situation, and you don't need to do anything silly. .48 of 12 overs. They need 4 runs per over from here. Hamza is into his 9th over, who just removed Kamran Ghulam. He has been very tidy. He has bowled wicket to wicket. He is not a big spinner of the ball, but he has been impressive. But his captain wants quite a few wickets at this stage. So will they pull up their socks, KRL? They can't contain the batting side, SNGPL. They have to provide the breakthroughs, especially this man on screen, Saad. And he's still busy out there, milking singles. Well, as you can see, there is nothing on the pitch, no difficulty for the batsman to pick a single. Only if they really become adventurous, they want to go for a quick finish, then we might see some collapse. Otherwise, everything seems to be very cool. This kind of adventure. He was trying to play that cross-bat shot towards the long on and mid-wicket area. Yes, quite right. He should be careful. If he gets out while playing the glamorous shot, obviously he will be scolded big time by his
coach Mohammad Hafiz and mentor Misbah-ul-Haq. So they just need to play a conventional cricket from here. 5 or 6 runs per over can take them home. They can afford to smile. Chance for long off, drop short. Sufyan Mukim was aiming towards the extra cover region. Saad. Well, it's getting easier and easier for the SNGPL. They're going towards their target. Just 44 runs needed right now. They still have almost 11 overs. Wide. It's a wide. Hamza apologized with the keeper. Very well kept by Asad. Good keeping there. Chance, certainly chance, gone. Short third man takes the catch. It's Arshad. Makes no mistake, and Hamza has got the breakthrough. Shahzad went for the big shot, and this could be the moment. This could be the turning point. What do you suggest? Well, as told you, not to become adventurous. Everything is very easy and calm, so just don't take chances. He took a chance trying to hit towards it's a legal ball. Yes, it is. He wanted to hit towards let's see. Okay, I don't know, towards the long off area. Got the edge straight to short third man. So he's gone back to the pavilion. Mohammad Shahzad 7 for in 9 balls, 213 for 5. Awais is the next man in, who has joined Saad after the departure of Shahzad. The good thing is Saad is still out there. Awais Zafar. Just a brief job required from him. A decent 20s or 30s, or maybe the 20s will be enough. Arshad Iqbal, who just took the catch, is into his over number 7 now from the far end. Well, Awais has a good score to his credit. Awais Zafar, if he's the same guy, 7 matches, 244 runs, and his highest is 100. And this is the way Shahzad lost his wicket, straight towards short third man, and he's gone. And I was talking about Awais Zafar, and he has 100 and a 50 in this present cup, coming a bit late. He has a very good record, and he's the 3rd highest run getter for SNGPL. Saad must try and stay there till the end. It's very important, as we were talking about the guy who scored 88 runs. What's his name? 92 runs in the first inning. Yes, we were saying the same thing to Waqas. Please don't hit. Waqar, I think so. Turned away to the onside. That should be 2. They don't need to do anything silly. Just play proper cricketing shots. Asad is still out there. A few dot balls as asking rate is pretty much in control. No, it's up to Saad. He must give a finishing touch to his 66.
And Uwais seems to be a very good batsman. He has a very good record. This is the way Sufyan stopped the ball. Enjoying the green grass of Karachi. Very good save by Sufyan Mukim. The body was right behind the line. Covered the ground to his right. Chance gone! Goodness me! Goodness me! Huge moment of the game. Saad found the fielder and Arshad Iqbal has got the breakthrough. He just cannot believe it. Is it going to be the same thing as RCL? Are they going to check the no ball? What happened here? Everybody's looking at the umpire, and I think he wants to check the no ball. He's a bit doubtful, is he? No, it's safe. Pretty safe. Almost 3-4 inches behind the line, so it's safe. Good breakthrough, short ball. He tried to pull it straight to the mid-wicket area. Simple and easy catch. And is it the turning point? 2 quick wickets. It's going to happen the same way? I don't know. Might be. Saad Khan played very well for 66 off 81 balls, 215 for 6. Sajid Khan, the off spinner, is not a bad batsman and is a big strike of the cricket ball. 2 wickets fell and both the batsmen have to get off the mark now. Both are on note, both haven't faced any delivery, and we might have a close finish from here. Arshad Iqbal, who's just provided a massive breakthrough. No timing at all from Saad, who was batting quite beautifully. Well, is it going to be a little collapse like we saw it in the first inning? And Sajid is a very keen cricketer. I don't know what's his favorite shot, Sajid. Khurram, you are the current cricketer. Mid-on, mid-wicket, typical tail-ender. That's the last wicket. Short ball pulled straight to the fielder. Saad was batting very well, and it's a very good breakthrough for KRL. A good breakthrough. Wakar, who picked up a catch, the top run getter. Extra bounce from Arshad did the trick. No timing from Saad, and now the players are very excited. They are pumped now because they feel themselves in the game. Is he gone? Is he gone? Appeal from Arshad, half appeal. He hasn't been joined by his colleagues. It was close to the upper edge, and Saad is not excited behind the stumps. That was a very good bouncer, very good bouncer. Straight towards his face. 40 overs gone. Look at this. A very good bouncer. And Sajid didn't know anything about it. There were 2 fielders over there, fine leg and a square leg, so he was lucky. 40 gone, 215 for 6. Don't leave the television sets, don't leave your mobile screens, wherever you are watching. It's going to be a dramatic finish. Sometimes Hamza into his last over, bowled really well, 2 for 46 to his name. Well, Khurram Manzoor is very upset that there is no slip over there, and I agree with him. I totally agree with you, Khurram. There should be a slip. There is no harm. Just put pressure on him. Why don't you bring a square leg just for
you know, just to scare him up. Let him hit. Send a mid-on right on the boundary. Oh, no, it's already there. Well bowled. Let him hit. Mid-off and mid-on is right on the boundary line. There is a mid-wicket. So they have the fielders over there. Just tease them. Tease him. Give him a flighted one. Well bowled. Within the stumps. 4 dots in a row now. The pressure building up. Is he going for the big one? Do you think so? Always. He has a very good record. I am really surprised he's coming down low in the batting order. He looks very confident. He's just playing very coolly. Don't look nervous. Just a nervous start from Awais. He's feeling the pressure. He's just hitting the ball straight to the fielder. 5 dots in a row. It's going to be a maiden. The final over of Hamza. Maiden, that's for sure. Great effort. And very well played. 41 gone. 215 for 6. So Sajid Khan and Awais, they both are on note. Awais was slightly uncomfortable against the spinner Hamza, and he just played all the dot balls, blocked every delivery. Well, I totally agree with Khurram Manzoor that he must put pressure on the batsman, bring a slip in, and wait and see what happens. Sajid is the man. He's going to hit towards the long on or towards the mid wicket. He has bowled well, Sajid Khan, the off spinner, and now it's time for him to play some big shots, play some quality shots to take his side home. No, I don't think he should play big shots. Just let him play straight. Always has a very good record. They can do it with singles and doubles. How many? 41. Still 41 runs to go. Not bad. 53 balls are left, so Sajid Khan, if he takes his side over the line, he can be a hero. Will he convert his performance into an all-round performance? Going for the quick single, Sajid Khan is halfway down, sent back, dot ball again. 8 dots in a row. Oh, that's the pressure. He wants to just change the strike. He said, okay, don't worry, we're not going to run. It was a little bit dangerous call from Sajid. He wanted to take a single. No from the non-striker end. So very interesting situation right now. The SNGPL seems to be under pressure. No slip yet. No smiles. Everyone is so serious, very anxious. And he's still blocking the ball. The runs have been dried up. Sajid Khan and Awais both are feeling the pressure. Sajid bowled really well, certainly has got the confidence. He can bat well, but he's afraid to take chances. He wants some loosener, some short deliveries or anything outside the off stump. Is he going to bat like Jahadat as he did yesterday? Stay there, dot balls, and suddenly he will start hitting? Do you think so? Mr. Khurram, you are the current cricketer. No, he said no. But the problem is Jahadat was, when he was batting, it was the first innings, and this is second innings. There is a pressure of the run chase. Oh, what kind of shot he was attempting. Is he gone? Oh, finger goes up straight away off the bat. Arshad strike, and Sajid Khan has to walk back. He goes without scoring. SNGPL sliding. Well, same thing. So much excitement in our dressing room, in the commentary box right now. Looks like they are all from KRL. SNGPL is struggling now. 7 wickets are gone. Very good short ball.
It's a legal ball. It was shot coming towards his face. And he tried to play towards the third man area. See, he was trying to play towards the third man area, got the edge of his gloves, I think so. And he's gone. Another wicket gone, 7 wicket down. Sajid Khan is gone for what? How many runs? 0 of 6 balls and 215 for 7. Dramatic scenes here in National Bank Stadium, Karachi. Second semi-final is nearing its climax, and what a turnaround. Sajid Khan, the latest man who got out, he got out without troubling the scorers. That brought Mohammad Salman in the middle. Is it going to be an action replay of KRL batting? I just want to have a look how many wickets they have lost. And this is the dismissal of Sajid Khan. A good quick ball. And he was trying to play towards the third man area, but it was a good height. Salman is the man who took 6 wickets. That was a plan. Extra bounce, test him with the bouncer, and that worked perfectly in the favor of Arshad Iqbal. Good take by Saad Beg behind the stumps. Big shot for leg before, finger and goes up, leg before, would you believe it? Arshad strikes again. Salman goes without troubling the scorers. 8 down now. Well, it's the action replay of the first inning. Just typical action replay. I just want to know the follow wickets. Please give us the follow wickets, and we will know how many wickets are down now. The same thing happened with KRL. It's a legal ball. It's a legal ball, and the ball came in a little bit, a bit quicker for Salman. Ball came in. It's straight in front of the stumps. There's no doubt about it. Another wicket, it's gone. It's the action replay of the KRL innings. 215 for 8. Salman gone for another knot. So 42 overs have been bowled. They need just a couple of wickets. What a turnaround. Absolutely dramatic. Magnificent bowling by Arshad. 4 for 39 is Athar Mahmood, the next man in. They are just 2 wickets away, KRL, to reach the final. So away is another out there, so KRL need a couple of wickets. So time for the change in voices. The last pair of the contest is Khurram Manzoor and Zishan Khalid will pick up the commentary now. बहुत बहुत शुक्रिया फर्रुख और सिकंदर बख्त। प्रेसिडेंट्स कप वनडे टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल दिलचस्प मराहिल में अब दाखिल होता हुआ, और जैसा सिकंदर बख्त जिक्र कर रहे थे, मिनी कोलैप्स हमको देखने को मिला पहली इनिंग्स में, और वही कोलैप्स को फॉलो करते हुए अब SNGPL की टीम 17 रन्स के फ़र्क में उन्होंने 5 विकेट्स गंवाई हैं। बॉलिंग में तब्दीली भी की गई है और अहमद को लाया गया है कॉम बॉक्स एंड से, और पहली गेंद पे सिंगल लेने से ग्रेस किया अवेस ने। खुर्रम जी बिल्कुल, और आपने अगर देखा हो हल्का सा रिवर्स स्विंग भी दिखने में आया और बॉल नीचे रहा है अहमद का, और ये थोड़ा सा मुश्किल पैदा कर सकता है। ये वो बॉल थी, ये लेग बिफोर,
थोड़ा सा डिप हुआ बॉल और बिल्कुल मिस जज लगे वो, और लेग भी 4। यहाँ काफ़ी स्लो रिएक्शन था सलमान का, दराज कद के हैं, काफ़ी देर से बैट नीचे लेके आए और कोई शक नहीं था अंपायर के जहन में इसको आउट करार देने पे, और यही हुआ। फैसल आफरीदी ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद की। 198 पे 3 खिलाड़ी आउट थे अब से कुछ देर कबल, और अब आप देखें पलक झपकते ही सिर्फ 17 रन के फासले पे और 5 विकेट्स गंवाई हैं। लेकिन अवेश का अभी भी खड़े रहना काफ़ी ज़रूरी, और उनको इस बात का इल्म है कि यहाँ वो अत्थर को एक्सपोज नहीं कर सकते। खुर्रम जी बिल्कुल, और कोशिश करेंगे वो ज़्यादातर स्ट्राइक अपने हाथ में रखें, और एकदम से मैच में एनर्जी आ गई है, केआरएल की टीम एक्साइटेड हो गई है। और अभी उनके डगआउट की तरफ जब कैमरा गया था तो उनके कोच भी डगआउट में खड़े होकर बैक कर रहे थे अपनी टीम को, और इफ्तिकार को चाहिए, नए बैट्समैन हैं, अगर वो स्लिप ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। रन पड़ने के बाद अंदर की जानिब आया, पहला रन तेजी के साथ निकला है अवेज ने, दूसरा रन भी चाहते थे लेकिन गेंद की तरफ फौरन पहुंचे यहाँ पे फील्डर, और इस बात को यकीनी बनाया कि दूसरा रन हासिल करने का मौका ना देंगे। और ये अच्छी साइन है अब केआरएल के लिए, क्योंकि अब प्रॉपर टेल एंडर अथर क्रीज पे मौजूद है, और अहमद जिनका आज दिन इतना अच्छा नहीं गुजरा है उनके पास मौका है विकेट हासिल करने का। कहीं ना कहीं अहमद का बॉल में थोड़ा सा रिवर्स स्विंग दिखने में आ रहा है, और बॉल जिस एरिया में पिच कर रहे हैं वो थोड़ा सा टीज कर रही है बैट्समैन को, और इस सिचुएशन में अहमद ज़्यादा ख़तरनाक लग रहे हैं। जब एकदम से 2 आउट हुए हैं, बॉल रिवर्स होना शुरू हुआ है, और कोशिश कर रहे हैं विद इन स्टम्प बॉल करें, और एक्चुअली पाँव पे मारने की कोशिश है कि किस तरह लेग भी 4 का चांस क्रिएट हो। और महमूद अख्तर जो थोड़ी बहुत बैटिंग करते हैं, और एक सिंगल आउटसाइड एज लगा और सिंगल बना थर्ड मैन पे। और हम आप अभी रिवर्स स्विंग का जिक्र कर रहे थे, हमने पिछली इनिंग्स में भी देखा जब 7 विकेट्स गंवाई थी सिर्फ 22 रन जोड़ के अपने इख्तिताम पे केआरएल की टीम ने, और अब आप देखें कि जैसे ही गेंद पुराना हुआ है और मजीद 5 विकेट्स गंवाई हैं, तो कुल मिला के 12 विकेट्स आज गिरी हैं जब गेंद पुराना हुआ है। और ये हम उस फैक्टर का बार बार जिक्र करते हैं कि जब 34-35 ओवर्स के बाद अंपायर सिर्फ एक बॉल का इंतखाब करते हैं और वो उसी गेंद से मजीद 16 ओवर्स कराने होते हैं, तो यहाँ फास्ट बॉलर्स ने दोनों ही इनिंग्स में इस बात का फ़ायदा उठाया है। जी बिल्कुल, इस बॉल के बाद मैं जवाब देता हूँ, और सीधे बैट से खेला है, सिंगल रन लिया है, स्ट्राइक रोटेट हुई है। इस तरह के सिंगल्स को ब्लॉक करना पड़ेगा। इफ्तिकार खुद थे एज ए कैप्टन, एग्जाम्पल बनना होगा, और 7 बेग जो आए हैं वो कीपिंग में पीछे से ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि किस एरिया में बॉल होगी तो बैट्समैन को प्रॉब्लम होगी। वो आए, अहमद से बात की है, कोई प्लान दिया है उनको, और कहीं ना कहीं इफ्तिकार ने भी उन्हें बोला है कि यही मौका है, और अथर अब फेस करेंगे लास्ट बॉल इस ओवर का। तो देखते हैं अहमद विकेट लेने में कामयाब होते हैं या सरवाइव करते हैं अथर महमूद। या मेक और ब्रेक पॉइंट है यहाँ केआरएल के लिए। सनान अच्छी गेंद, दिफाई अंदाज से इसको खेला, कोई रन हासिल ना हो सकेगा। मजीद दिलचस्पी अब बढ़ती हुई है इस सेमीफाइनल में, क्योंकि 43 ओवर्स के बाद SNGPL 218 8 विकेट के नुकसान पे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अवेज को ज़्यादातर गेंदों का सामना करना पड़ेगा, और अभी एक ओवर मजीद बाकी है सुफियान मुकीम का, जिनका आप जिक्र भी कर रहे थे। और एक एंड पे जब आपके पास टेल एंडर मौजूद हो और आपके पास मिस्ट्री स्पिनर मौजूद हो, तो आप कोशिश करते हैं कि उनके उस एक ओवर का भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए। जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, और मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर सुफियान मुकीम को लाया जाए और वहाँ पे उनको ये बोल के दिया जाए कि हमें आपसे विकेट चाहिए, तो पॉसिबिलिटी है शायद आपको वो, क्योंकि टॉप विकेट टेकर है, बेस्ट बॉलर चल रहे हैं इस टूर्नामेंट में, और ऐसे टाइम पे आपका आपके पॉकेट में उनका एक ओवर मौजूद है। मगर कहीं ना कहीं रिवर्स स्विंग के ऊपर चांस लेते हुए इफ्तिकार, जिस तरह अरशद इकबाल की तारीफ़ करनी पड़ेगी, जिस तरह का वो केआरएल को मैच में वापसी कराया है। एक्चुअली अरशद इकबाल मैच में वापस आए हैं लेके केआरएल को 4 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं, 39 रन 8 ओवर का फिनिश कर चुके हैं। ये अपना 9वां ओवर फेंकने आए, और कहीं ना कहीं प्लान में थोड़ी सी मुझे चेंजिंग लगी है
क्योंकि उनको आइडिया है कि बड़ी हिट पे चांस लेंगे। वो डीप स्क्वायर लेग, मिड ऑन डीप है, मिड विकेट डीप है और फाइन लेग भी डीप है। थर्ड मैन, वाइड कवर और एक्स्ट्रा कवर। सीधी गेंद जिसको खेलने में कामयाब हुए फाइन लेग के बाएं जानिब। अहमद थे वहां पे मौजूद और मौका मिलेगा अवेश को 2 रन हासिल करने का। थोड़ा सा फील्डर लेजी हुए जिसकी 2 रन हासिल किए और अवेज वही काम कर रहे हैं जो एक मैच्योर बैट्समैन को ऐसे सिचुएशन में करना चाहिए और टीम की जिम्मेदारियां संभालते हुए बड़े तरीके से ग्लाइड किया डीप स्क्वायर लेग और फाइन लेग के फील्डर के बीच में और 2 रन हासिल किए। अरशद इकबाल और इफ्तिकार की मुस्तकिल कन्वर्सेशन चल रही है हर बॉल से पहले। टेंस सिचुएशन हो गई है, एकदम से मैच के अंदर एनर्जी आ गई है। हाँ बिल्कुल, हालात बदल चुके हैं, जज्बात बदल चुके हैं। इस दौरान हवा में खेले हैं लेकिन फील्डर मौजूद हैं डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट पे। सिर्फ 1 रन लेने का मौका ज़रूर था लेकिन ग्रेस किया इस दौरान अवेज ने। और जी हाँ खुर्रम, बिल्कुल आपने सही फरमाया, अरशद इकबाल अपने स्पेल के ज़रिए ही KRL को मैच में वापस लेके आए हैं जब इन्होंने 7 की विकेट हासिल की थी एक शॉर्ट पिच गेंद पे। अब थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रहे थे कि इतनी विकेटें एकदम से गिरी हैं और मैच में दोनों बैटिंग साइड में देखने में आया। कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा गलत शॉट सिलेक्शन भी शामिल है। सारा आप क्रेडिट जो है वो बॉलर्स को नहीं दे सकते। गलत शॉट सिलेक्शन के ऊपर विकेटें लूज़ हुई हैं ज़्यादातर, मगर जिस तरह अभी अरशद इकबाल का स्पेल चल रहा है इनकी तारीफ करनी पड़ेगी। अगले कदम पे जाके इसको पंच किया लेकिन कप्तान खुद मौजूद है मिड ऑफ पे, रन बनाने नहीं देंगे। जी हाँ, आपने शॉट सिलेक्शन का जिक्र किया, जिस अंदाज से कामरान गुलाम ने अपनी विकेट गंवाई या शहजाद बड़ी हिट लगाने गए और कैच आउट हुए। और आप अगर देखें तो 7 की भी वो शॉट उस टाइम बनती नहीं थी क्योंकि ऑलमोस्ट 50 रन थे बाकी और 7 लीडिंग स्कोरर थे अपनी इनिंग में और उनको चाहिए था कि ये मौका था अपनी सेंचुरी के साथ या एटलीस्ट 90s में आके नॉट आउट की सूरत में जाते और मैच को फिनिश करते। तो यही सिचुएशन होती है जहाँ पे आप लीड करते हैं फ्रंट से, आप सीज़न प्लेयर हैं, सीज़न में आपकी अच्छी फॉर्म है, जिस तरह अरशद ने अभी टीम को लीड किया है फ्रंट से। शॉर्ट पिच गेंद पुल किया है लेकिन फील्डर मौजूद है डीप स्क्वायर लेग पे। इस दौरान 1 रन जरूर हासिल किया अवेश ने। एक रन काफी कीमती दोनों ही टीम्स के लिए। अभी देखना पड़ेगा ये अगली 2 बॉलें जो हैं वो अतहर महमूद किस तरह खेलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है उनको कम से कम बॉलें दे के और ये बोला जा रहा है कि आपने वो जो बॉलें आप फेस करेंगे उनको डॉट बॉल्स कर लें, कोई मसला नहीं है, आपका विकेट पे रहना ज़रूरी है। तो एक पार्टनरशिप लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो मैच को फिनिश करे, क्योंकि 35 रन रह गए जीतने के लिए। ऑलमोस्ट इस ओवर के बाद 6 ओवर रह जाएंगे। जहाँ रिक्वायर्ड रन रेट का भी अब जिक्र करें तो वो लगभग 6 के करीब आ पहुंची है क्योंकि 38 गेंदें बाकी हैं और 35 रन दरकार हैं। और पिछले कुछ ओवर से तो ऐसा लगता है रन बनाने का सिलसिला बिल्कुल ही थम चुका है। जी बिल्कुल। एक और अच्छी बॉल इन स्विंग पर था और अच्छा मैनेज किया अतहर महमूद ने। कहीं ना कहीं एफर्ट दिख रही है, अरशद एक्स्ट्रा जोर लगा रहे हैं, टीम के लिए एक एक्स्ट्रा जोर दिख रही, उनकी एक्स्ट्रा एफर्ट दिख रही है। ये वो बॉल जिसमें पहला आउट हुआ था, ये दूसरी विकेट, 7 की कीमती विकेट हासिल की थी ये साजिद, मैच का सही मानों में टर्निंग, और ये 4थी विकेट। बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा, चैनल बॉलिंग, राइट ऑन टारगेट, बैट्समैन को जो चाह रहे थे करवाना वही किया है और अभी भी हंगर दिख रहे हैं कि वो फाइफर लगा के अपनी टीम को जितवाएं। कहीं ना कहीं वो इस बॉल पे चांस लेंगे। ऐसा लग रहा है बैटर्स की कमजोरियों को खाते में लाते हुए गेंदबाजी की और नताइज अपने हक में लिए आज अरशद इकबाल ने। एक और अच्छी गेंद दिफाई अंदाज से खेले, सरवाइव किया आखिरी 2 गेंदों को। 44 ओवर्स यहाँ हुए मुकम्मल। SNGPL 221 8 विकेट्स के नुकसान पे। आपसे 6 ओवर्स कबल का जिक्र करें, खुर्रम तो काफ़ी मुस्कुराहट नज़र आ रही थी अगर आप डगआउट का जिक्र करें SNGPL का, लेकिन अब काफ़ी हद तक टेंस फेसेस नज़र आते हैं आपको। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मिसबा भाई भी बाहर आ गए थे डगआउट में, कहीं ना कहीं उनको एज ए हेड कोच या
मेंटोर, उनको भी ये रियलाइज़ हुआ कि सेट प्लेयर जब आउट हो जाते हैं तो नए प्लेयर का जाके थ्रू द लाइन शॉट्स खेलना इतना इजी नहीं है इस पिच के ऊपर, और प्रेशर में वो चीज़ ज़्यादा वाजे होती है। हसीबुल्ला आज इतने बड़े रन ना बना सके, 57 रन की शानदार इनिंग्स खेली उमैर यूसुफ ने। एक अच्छी पार्टनरशिप जारी थी उनके और शान मसूद के दरमियान, दोनों ही एक ही ओवर में अपनी विकेट गंवा बैठे। फिर साद और कामरान के दरमियान एक शानदार पार्टनरशिप लगी और दोनों ही आउट होने के बाद हमने देखा कोई भी बैटर जिम्मेदारी का मुजाहिरा ना कर सका। और अब हम देख रहे हैं कि 35 रन दरकार है, सिर्फ 36 गेंदें बाकी। और बच गए हैं, बड़ी हिट का चांस लिया था अननेसेसरी। ये समझ नहीं आई है इतना प्रेशर वाला शॉट इन्होंने खेला क्यों, क्योंकि अतर महमूद दूसरे एंड से सही बैटिंग कर रहे हैं। ये देखें, अच्छी बॉल थी, स्लो वन थी, बोल्ड होते होते बच गए हैं। और जबकि डीप स्क्वायर लेग, मिड ऑन पीछे, डीप मिड विकेट पीछे है, अगर ये मिस टाइम भी होता तो कैच होने के चांसेस थे। काफ़ी एनिमेटेड नजर आए अहमद, काफ़ी करीब आ गए थे, जिस तरह आपने जिक्र किया कि स्टंप्स के काफ़ी नज़दीक से होते हुई गेंद पहुंची सात बेग के दस्तानों तक। एक और अच्छी बॉल, सेंसिबल खेलते हुए, इस शॉट की जरूरत नहीं थी। किस्मत आप पे मेहरबान है, बार बार मौका नहीं देगी, एक दफा आप बच गए हैं तो कोशिश इनकी यही होनी चाहिए कि इस मैच को अच्छा था फिनिश करके जाएं। पिछले 5 ओवर्स का जिक्र करें तो सिर्फ 8 ही रन जोड़े हैं कुल मिला के SNGPL के बैटर्स ने। और एक बात कहना चाहूँगा, अतर महमूद डिसेंट बैट्समैन है, ऐसे हैं कि एटलीस्ट सिंगल कर सकते हैं, या ऐसा नहीं है कि जो अमूमन फास्ट बॉलों में देखना आता है डर खौफ से खेलते हैं। तो ट्रस्ट करना पड़ेगा ओवेस को अतर पे। इस दौरान इसको विकेट मिड विकेट की जानिब खेला, गैप तलाश किया, पहला रन तेजी के साथ निकले हैं और एक ही रन तक महदूद रखा यहाँ पे फील्डर ने, और इस बात को यकीनी बनाया कि अब एक बार फिर अतर को सामना करना पड़ेगा अहमद का। बिल्कुल ही अतर महमूद को उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि आपने डॉट बॉल ही खेलनी है, जितनी भी बॉल्स मिले। ऐसा नहीं है, बैटिंग करते हैं हल्की फुल्की, जैसे अमूमन फास्ट बॉलर्स बिल्कुल बैटिंग करने से गुरेज करते हैं, ऐसा उनको पाया नहीं गया है जब भी देखा गया बैटिंग करते हुए। तो उम्मीद यही है कि स्ट्राइक को रोटेट करें, डॉट बॉल प्रेशर बढ़ा रही है। अच्छी बाउंसर, इसको डक करके जाने दिया विकेट कीपर के पास। कोशिश करना होगी कि यहाँ पे स्टंप्स को टारगेट करें, और जिस अंदाज से शाहनवाज धानी या सलमान गेंदबाजी कर रहे थे, यॉर्कर्स का इंतखाब कर रहे थे, यहाँ पे वहाँ उस चीज़ की कोशिश की जाए। ये वो बॉल थी, शॉर्ट पिच बॉल, और 1 ऑफ द ओवर हुआ। अतर महमूद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एम्पायर वाइड बॉल देगा ओवर दी हेड, और कहीं ना कहीं टाइट होती हुई सिचुएशन दिख रही है SNGPL के लिए। 8 विकेटें गिर चुकी हैं और ओवेस पे जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अतर महमूद बॉल को फेस करेंगे। इस दौरान आहिस्ते के साथ इसको स्टेयर किया, थर्ड मैन के जाने मौजूद थे वहाँ पे अरशद इकबाल, और जैसा आप जिक्र कर रहे हैं इतना ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आ रही अथर को एज़ कम्पेयर टू सलमान, जो बिल्कुल ही हमें देखा टाइम ना कर सके और मुश्किल हो रही थी उनको बल्ले को बैट बॉल के पास लेके आने का। लेकिन अथर एक ऐसे बैटर हैं जिन पर रिलाई किया जा सकता है। जी बिल्कुल, इनको ट्रस्ट करना पड़ेगा, उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा ओवेस को कि हमें एक स्ट्राइक रोटेट पॉलिसी पे चलना पड़ेगा। अगर डॉट बॉल ज़्यादा करेंगे तो विकेट गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे आपने ओवर की पहली बॉल पे देखा था, अननेसेसरी ओवेस ने चांस लिया था, और किस्मत की देवी मेहरबान थी SNGPL पे, जो वो बोल्ड होते होते बच गए। ऑलमोस्ट बेल्स के पास से बॉल गई थी, और इफ्तिकार फील्ड प्लेसमेंट सोचते हुए डीप फाइन लेग गया है, स्क्वायर लेग है, मिड विकेट है, मिड ऑन है। लेग साइड का जिक्र करें तो मैदान पूरा खाली, शॉर्ट पिच गेंद पुल किया, लेकिन इसको नीचे रखने में कामयाब हुए ओवेस। डीप स्क्वायर लेग की जानिब खेल के एक कीमती रन हासिल किया अपने और अपनी टीम के लिए। तो 45 ओवर्स यहाँ हुए मुकम्मल SNGPL 224 8 विकेट्स के नुकसान पे। काफ़ी टेंस भरा माहौल हुआ है, दोनों तरफ टीमें एकदम से एक्टिव हुए हैं, ऑफिशियल्स भी, डगआउट में भी हलचल मची है दोनों टीमों के। एक्साइटमेंट आई है मैच में एकदम से। 32 रन बाकी हैं 5 ओवर में। एक टाइम में रन्स कम थे और बॉलें ज़्यादा थीं, और अब इसका अपोजिट हो गया है, रन ज़्यादा हो गए हैं और बॉलें कम हो गई हैं। कुछ
इसी अंदाज के आप मुकाबले की तवक्को भी रखते हैं बड़े मुकाबले में, खासतौर पे जब सेमीफाइनल का जिक्र करें और प्रेसिडेंट्स कप वनडे टूर्नामेंट जिसमें हमने पिछले मैच में भी देखा एक शानदार फतह हासिल की आउट ऑफ नोवेयर। पीटीवी ने एक बड़ी टीम को शिकस्त दिया जो अब तक टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रही थी, ओजीडीसीएल की टीम का अगर हम जिक्र करें, जिसका था इंतज़ार। फाइनली इफ्तिकार उनको लेके आ गए हैं, सुफियान मुकीम को, अपने मेन बॉलर को। और ये वो टाइम है जब आप डिलीवर कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। एक ओवर में अगर यहाँ इनको 1 से 2 आउट करके दे दें सुफियान मुकीम, तो आज के दिन की इनकी जो बॉलिंग है वो काबिल तारीफ़ होगी, क्योंकि टाइम पे करने वाले को ही बोलते हैं हीरो। ये वो टाइम है केआरएल के लिए, सुफियान मुकीम डिलीवर कर सकते हैं। यहाँ सुफियान मुकीम को भी इस बात का बखूबी इल्म होगा कि उनके पिछले 9 ओवर्स एक तरफ और ये आखिरी ओवर एक तरफ। जी बिल्कुल। पहला बॉल दिफाई अंदाज से खेलते हुए, और अवेस पे कहीं ना कहीं ये जहन में होगा कि इस ओवर में विकेट भी नहीं देनी है और रन भी बनाने हैं। बड़ी हिट की जानिब गए, इसको स्वीप किया लेकिन मिड विकेट पे फील्डर मौजूद हैं और एक रन लेने का फैसला किया। देखने वाली बात यह है कि अब अथर महमूद, सुफियान मुकीम जो इस टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर हैं, उनको किस तरह खेलते हैं। और कहीं ना कहीं स्लिप जहन में थी इफ्तिकार की, और स्लिप की प्लेसमेंट पे आ रहे हैं खुद इफ्तिकार एज ए कैप्टन। स्लिप पे खड़े होते हैं, मिड ऑफ को अंदर लाए हैं, मिड विकेट पे फील्ड चेंज की है। मिड ऑफ वापसी पीछे जाते हुए, शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट कवर, शॉर्ट थर्ड मैन, स्लिप। और एक अच्छी बॉल, एज निकला है, बाउंड्री की तरफ बॉल जा रही है। 2 रन लिए बैट्समैन ने, तीसरे के लिए ऑलवेज इंटरेस्टेड थे मगर 2 रन तक महदूद हुए। यहाँ तेज गेंद की थी और पढ़ने के बाद शार्पली अंदर की जाने भाई दिफाई अंदाज से खेलना जरूर चाहते थे, लेकिन अंदरूनी किनारे को लेती हुई स्टंप्स के नजदीक से होती हुई गेंद फाइनल की जाने पहुंची, जहां पे डीप स्क्वायर लेग की फील्डर आई। देखें काफी लेट हो गए थे स्ट्रोक पे, लेट हो गए थे, मिस रीड था अथर महमूद। लकी रहे, एज निकला और 2 रन बने। 3 रन आ चुके हैं इस ओवर में। रन आउट का चांस क्रिएट हो रहा है, रन आउट हो सकता है और सुफियान मुकीम स्लिप हो गए। ये रन आउट जरूरी था केआरएल के लिए, और इफ्तिकार भी हैरान परेशान। किस्मत की देवी एसएनजीपीएल पे बेहतरीन तरीके से मेहरबान हुई है, दूसरा चांस मिला है ये। हाँ बिल्कुल, यहाँ भरपूर मौका था अवेस की बड़ी विकेट हासिल करने का। कंप्लीट मिक्सअप, बिल्कुल दिलचस्पी नहीं जाहिर की अथर ने रन लेने में, और अरशद इकबाल की थ्रो जो स्टंप से काफी नजदीक से होती हुई पहुंची, जो बैकअप पे फील्डर मौजूद थे। और सुफियान के पास मौका नहीं था क्योंकि वो स्लिप हो चुके थे, बैलेंस लूज कर चुके थे। क्या ये अहम मौका साबित हो सकता है। एक अच्छी बॉल पाँव पे लगते लगते रह गई, और इस तरह सुफियान मुकीम का ये 10वां ओवर ख़त्म हुआ और उन्होंने 10 ओवर में 44 रन दिए हैं, और 46 ओवर का इख्तिताम हो चुका है। 227 रन पे 8 आउट SNGPL। यहाँ बॉलिंग परफॉर्मेंसेस का जिक्र करें तो 5 ही बॉलर्स आज आजमाए हैं इफ्तिखार अहमद कप्तान ने। अरशद ने शानदार गेंदबाजी की, 4 विकेट्स अब तक समेटी हैं, 1 मेडन इनके स्पेल में शामिल। अहमद थोड़ा महंगे साबित हुए हैं, 7 ओवर में 46 रन दिए। इफ्तिखार अहमद, हमजा और सुफियान अपने कोटे के 10-10 ओवर मुकम्मल कर चुके हैं, और इफ्तिखार कप्तान 1 विकेट जबकि हमजा 2 विकेट्स लेने में कामयाब हुए। अहमद को मुझे लग रहा है इफ्तिखार ने बुलाया है। इफ्तिखार चाहते हैं कि इस टाइम 1 विकेट और मिले तो शाहनवाज धानी आएंगे, जिनको बैटिंग में इतना ख़ास नहीं बॉलर्स रेट करते, तो चांसेस हैं, मगर एक मुस्तहकम पिलर का रोल अदा करते हुए अवेस 20 बॉलें खेल चुके हैं, 8 रन पे खेल रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके जहन में है कि मुझे ही फिनिश करने हैं ये 29 रन। सिचुएशन ये है कि लेग साइड पे कहीं ना कहीं उनको बड़ी हिट मारने का शौक है, और ये कप्तान इफ्तिखार अहमद बहुत भरपूर जानते हैं, जिसकी वजह से प्लेसमेंट की हुई है। बड़ी हिट लगाने का और बहुत ही बड़ा छक्का, बेहतरीन कनेक्शन बैट और बॉल का अवेस की तरफ से। क्या बात है इनकी। इसी अंदाज के स्ट्रोक की जरूरत भी थी यहाँ पे SNGPL को। इतना एतमाद नहीं है
आज अहमद को अपनी बॉलिंग में इतना कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे हैं और इसका फायदा उठाया, अक्रॉस द लाइन इसको स्विंग किया। तमाम फील्डर्स दायरे के बाहर मौजूद थे बाउंड्री लाइन पे, लेकिन इसको खाते में ना लाते हुए स्क्वायर लेग और मिड विकेट के दरमियान से गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंकने में कामयाब हुए अवैस और 6 रन हासिल किए। थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, बड़ी हिट आ चुकी है, 23 रन बाकी हैं टोटल और इस ओवर के बाद 3 ओवर का गेम और है। चांस है आप फिनिश इजीली करके जा सकते हैं, जिम्मेदारियां बड़ी हुई हैं, बड़ी बाउंड्री आ चुकी है, बॉलर अंडर प्रेशर है। एक बार फिर लेग साइड पे खेले हैं, दूसरा रन लेना जरूर चाहते हैं लेकिन एक ही रन तक महदूद रखा। खुर्रम काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन अब इसलिए भी आ पहुंची है कि अगर ये मैच आखिरी ओवर तक जाता है तो कहीं ना कहीं इफ्तिखार अहमद को छठे बॉलिंग ऑप्शन को ढूंढना होगा, क्योंकि अहमद का ये 8वां ओवर है। अगर इनसे ही इनका ही बॉलिंग का सिलसिला जारी रखें तो ये अभी 47वां और 49वां ओवर कराते हैं। अरशद इकबाल का 1 ओवर बाकी, जो गालिबन वो इसके बाद गेंदबाजी करने आएंगे, तो 50वां ओवर वो कहाँ से तलाश करेंगे? कोई ना कोई प्लान तो होगा जहन में इफ्तिखार के। और जो सबसे क्रूशल ओवर है, मुझे ऐसा लगता था यहाँ से इनको अरशद इकबाल को कराना चाहिए था। थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन हुई है, देखते हैं अहमद इकबाल कामयाब होते हैं कि नहीं होते हैं। बॉल की और अच्छा दिफाई अंदाज से खेला है, रन आउट का चांस हो सकता है मगर फील्डर ने थ्रो मारने से गुरेज किया। एतमाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अब अतहर का और कुछ जान में जान आई अब SNGPL के डगआउट में भी। जी बिल्कुल, थोड़ी टेंस सिचुएशन, थोड़ी रिलीज हुआ है प्रेशर छक्के के बाद, मगर इन दी एंड अभी भी 21 रन बाकी हैं जब तक फिनिश ना कर लें, क्योंकि एक स्टेप की दूरी पे फाइनल से SNGPL। सीधा सीधा मैच चल रहा था, सडन एकदम से 2 से 3 प्लेयर आउट हुए और एकदम मैच में एनर्जी आई। कहीं ना कहीं ये बॉल बड़ी इंपॉर्टेंट होगी ओवेस के लिए। सुरान कदमों का इस्तेमाल किया, गैप तलाश किया, मौका नहीं फाइनल लेग के पास, कीमती 4 रन मिले यहाँ ओवेस को। क्या बात है, दिलेरो का साथ देती है लक। फीट यूज की है और गैप में बॉल गई है जबकि मिडिल नहीं हुआ था, एज लगा था, इनसाइड एज हुआ, थिक एज था, बॉल टर्न हुई अंदर की तरफ, स्क्वायर लेग और फाइन लेग फील्डर के बिटवीन बॉल गई है और 4 रन हासिल किए। वैल्यूएबल 4 रन थे ये। 17 रन बाकी हैं और इस ओवर की 2 बॉलें बाकी हैं। अहमद इकबाल एक बार फिर शॉर्ट पिच गेंद, कुव्वत भरा पुल स्ट्रोक, लेकिन स्क्वायर लेग पे फील्डर मौजूद, बाएं जानिब डाइव की, इस बात को यकीनी बनाया कि सिर्फ एक ही रन हासिल हो सकेगा। इनकी ओवर की ये आखिरी गेंद काफी कीमती, क्योंकि यहाँ विकेट लेनी चाहिए KRL को। कहीं ना कहीं इफ्तिखार बोल रहे होंगे कि अरशद इकबाल को मुझे यहाँ से बॉल करवा लेनी चाहिए थी। एक ही ओवर में बड़ी हिट लगी, पहले छक्का, फिर दूसरी पे चौका, फिर सिंगल बना है। 16 रन दरकार हैं SNGPL को फाइनल में जाने के लिए। और बाउंसर अटेम्प्ट की, जिसको जाने दिया विकेट कीपर के पास। एक बार फिर स्क्वायर लेग की जानिब देखा कि शायद इसको वाइड करार दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो एक महंगा ओवर इख्तिताम पजीर हुआ अहमद का। 47 के बाद SNGPL अब सिर्फ 16 रन की दूरी पे पहुंच चुका है, 240, 8 विकेट्स का नुकसान उठा के। ओवेस को चाहिए ये वो गलती ना दोहराएं जो 7 से हुई। उससे पहले सेट बैट्समैन थे, उमर बिन यूसुफ से हुई जो एक सॉफ्ट बैट सिंगल ले रहे थे। फिर वो अब ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जो फिनिश करके जा सकते हैं। ओवेस और अतहर दोनों में कॉम्बिनेशन भी सही बना हुआ है, बात करके खेल रहे हैं, स्ट्राइक कम दे रहे हैं अतहर को, और अतहर भी अच्छा जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। काफ़ी हद तक फैसला हो जाएगा इस ओवर में इस मैच का खुर्रम, क्योंकि अरशद ही एक ऐसे वाहिद बॉलर हैं जिन्होंने मुश्किलात से 2-4 किया है बैटर्स को। 4 विकेट्स अब तक अपने नाम कर चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब जो दूसरे फास्ट बॉलर हैं अहमद, वो काफ़ी महंगे साबित हुए हैं और स्लाइटली शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंट भी नज़र आ रहे हैं। आज काफ़ी खुली हुई फील है लेग साइड पे, जबकि थर्ड मैन दायरे के अंदर मौजूद और मिड ऑफ पे कप्तान खुद मौजूद इफ्तिखार अहमद। बॉल कर दिया और इस तरह मैच में वापसी आ गई है KRL और 5 विकेटें कंप्लीट कर ली अरशद इकबाल ने। जितनी तारीफ कर ली जाए कम है अरशद इकबाल की। KRL को मैच में वापसी लाने के लिए शानदार बॉलिंग, बेहतरीन बॉलिंग।
और इस शॉट की जरूरत नहीं थी। ओवर से पहले मैंने कहा था आई होप कि ये नो बॉल ना हो, और पांव लकीर के अंदर था। अरशद मैच में वापसी लाते हुए 5 आउट कर लिए हैं। ये शॉट पे पिछले ओवर में भी इन्होंने ट्राई किया था, बच गए थे। मैंने ये बोला था कि किस्मत की देवी बार बार मेहरबान नहीं होती है। 16 रन बाकी थे और वो अधूरा छोड़ के टीम को चले गए हैं। 25 बॉलें खेली हैं, 20 रन किए हैं। लास्ट विकेट शाहनवाज धानी। और कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा ये कसूर टोटल बैट्समैनों का है। डिसिप्लिन बॉलिंग को अननेसेसरी शॉट खेले और विकेट थ्रो करके गए हैं। अरशद इकबाल की डिसिप्लिन बॉलिंग बैट्समैनों को मजबूर किया बड़ी शॉट्स खेलने के लिए कि वो गलती करें, और इसी तरह वो कामयाब हुए केआरएल मैच में वापसी आते हुए। शाहनवाज दानी नंबर 11 मुस्कुराते हुए आ रहे हैं कि अब प्रेशर जो है वो फील नहीं कर रहे। 16 रन दरकार है और एक मौजाती 16 रन चाहिए। शाहनवाज दानी बॉलिंग बहुत अच्छी की। क्या लगता है खुर्रम आपको, कुछ लकी चार्म साबित होंगे ये? हो भी सकते हैं, मगर जिस रिदम में बॉल कर रहे हैं, जो परफॉर्मेंस दी है अरशद इकबाल ने, आउटस्टैंडिंग। बड़े मैच में बड़े प्लेयर ने बताया कि मेरी मौजूदगी क्या होती है। अरशद इकबाल जो काफ़ी अरसे से इंजरी के बाद रीहैब के प्रोसेस से गुजरे, फिर वो वापस आए, इस तरह का एक बड़ा मैच ढूंढ रहे थे अपने आप को बताने के लिए कि अरशद इकबाल की वापसी हुई है, और वो उन्होंने बड़े मैच में साबित किया है। इस सिचुएशन में जब मैच निकल गया था, 5 आउट करके 42 रन दिए हैं और अभी 5 बॉलें बाकी हैं। आखिरी विकेट, SNGPL 10 सिचुएशन। ये बॉल बड़ी वाइटल होगी शाहनवाज धानी के लिए। बहुत दिफाई अंदाज से खेला है, अच्छा इन स्विंग बॉल था, और केआरएल के डगआउट में एकदम से जान आ गई है। 16 बॉल पर 16 दरकार। ये रिप्ले जैसा क्रॉस बैटेड शॉट अक्रॉस द लाइन, ऑफ स्टंप की बॉल लगी और बड़े शानदार अंदाज में 5 विकेट हॉल कंप्लीट किया अरशद इकबाल ने। एक इंतहाई शानदार स्पेल एक बड़े ओकेजन पर, और यकीनन एक यादगार परफॉर्मेंस इनकी अब तक की करियर की। और अब आस्किंग रेट की बात नहीं कर रहे थे हम इससे पहले, क्योंकि काफ़ी हद तक कंट्रोल में था, लेकिन जिस तरह से कमबैक हुआ है, अब रन बॉल सिचुएशन आ गई और 1 विकेट दरकार है। इंपॉर्टेंट बॉल होगी ये, इन स्विंग पे चांस लेंगे। वेल प्लेड शाहनवाज धानी, बल्ले को बॉल से खेलते हुए कहीं ना कहीं जहन में है शाहनवाज धानी के कि 16 रन किसी तरह मैं करके हीरो बनूं। इस सिचुएशन में जो भी इस 16 रन को कंप्लीट करके जाएगा वो हीरो बनेंगे। वो अतर महमूद भी हो सकते हैं, शाहनवाज धानी भी हो सकते हैं। अतर महमूद को मैं बार बार कह रहा हूँ, वो डिसेंट बैटिंग कर लेते हैं, उन पर ट्रस्ट किया जाए। और कहीं ना कहीं शाहनवाज धानी ने उनसे बात की। अरशद इकबाल की ये 3 बॉलें जो इस टाइम अपने फुल रिदम में है, मूड में है, और आखिरी विकेट लेने के इरादे में है। बाउंसर कर सकते हैं, टेल एंडर हैं शाहनवाज धानी। दिफाई अंदाज से खेला, एक दफा फिर वही बॉल वही अंदाज, एक और डॉट बॉल। कमाल बॉलिंग, अरशद इकबाल की तारीफ करनी पड़ेगी, काबिले तारीफ बॉलिंग की है। और मैच में केआरएल ऑलमोस्ट बाहर हो गई थी, अरशद इकबाल के एक गजबनाक स्पेल की वजह से वापस आई है। बेहतरीन बॉलिंग, ये वही देखने में मंजर आया है जिस तरह कल एक टाइम पे पीटीवी मैच में थोड़ा पीछे हुई थी। जहांदाद ने फ्रंट से लीड किया था बैटिंग में, उसके बाद बॉलिंग में। नेवर गिव अप एटीट्यूड कहते हैं इसको। बाउंसर ट्राई की, शाहनवाज दानी ने बड़े जबरदस्त तरीके से उसको डक किया। शाहनवाज दानी एम्पायर से पूछते हुए कि 1 ऑफ दी ओवर है कि नहीं है। आपसे बात कर रहे थे कि बाउंसर कर सकते हैं, टेल एंडर हैं, सरप्राइज करेंगे, लेकिन शाहनवाज धानी की अच्छी है विंडनेस, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे और आखिरी लम्हात में उन्होंने डक किया। लेकिन बहरहाल खुशकिस्मत रहे, थोड़ी सी अगर डायरेक्शन और स्ट्रेट रहती तो बहुत मुश्किल में आ सकते थे शाहनवाज धानी। आप सही कह रहे हैं कि थोड़ा सा अगर वेल डायरेक्टेड होती तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती, मगर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बॉल पे इनको स्लिप लेनी चाहिए शाहनवाज धानी के लिए, इफ्तिकार को। और इफ्तिकार ने फील्डर्स को सर्किल से बाहर से आने से कहा है कि सब फिर सर्किल के बाहर से फिनिश करेंगे सर्किल के ऊपर। आखिरी बॉल अरशद के स्पेल की, सरप्राइज हो सकता है।
एक्स्ट्रा एफर्ट, वाइट बॉल, कोशिश कर रहे हैं इन स्विंग करके लेग भी फोर करने की विद इन चैनल, एक्स्ट्रा जोर लगा रहे हैं अरशद इकबाल, काबिल तारीफ बॉलिंग की है, ये वो वाइट बॉल थी। थोड़ा मतात होना पड़ेगा और टिकल करके डाउन द लेग साइड फाइन लेग पे 4 रन में निकल सकते हैं। बहुत ही उम्दा डिसिप्लिन बॉलिंग की और अब एक बॉल के साथ इनको जो है अपना स्पेल खत्म करना और परफेक्ट एंडिंग होगी अगर ये आउट करते हैं अपनी आखिरी बॉल पे। एंडिंग कहेंगे सर, सुपर एंडिंग इसको, क्योंकि जिस तरह का स्पेल इन्होंने लगाया बहुत कम देखने में आया कि मैच आपके हाथ से जा चुका और आप अपनी टीम को अपनी परफॉर्मेंस से मैच को जितवा दें, ये कहा जाए तो सही होगा। और एक और मिस, फाइनली अरशद का स्पेल खत्म हुआ। 10 ओवर में 43 रन देके 5 आउट किए हैं, काबिल तारीफ बॉलिंग। 48 ओवर्स का इख्तिताम हुआ है और 241 फॉर 9 SNGPL। 12 बॉलों का गेम बाकी है, 15 रन दरकार हैं SNGPL को। अतर महमूद फेस करेंगे, क्या प्लानिंग है देखते हैं अभी। दो ओवर्स रह गए खुर्रम, हमारे पास बॉलिंग कार्ड है, अहमद के 2 ओवर बाकी हैं और एक बॉलर शॉर्ट हो चुके हैं। ये किसी नए बॉलर को लाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती हुई है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ओवर को अगर ये निकाल लेते हैं तो नेक्स्ट ओवर कोई नॉन रेगुलर बॉलर करेगा और वो सरप्राइज होता है। मगर मेन बात ये है कि ये 6 बॉलें विदाउट विकेट सरवाइव कर पाएगी SNGPL। 15 रन दरकार, रन बनाना भी जरूरी है। अहमद की बॉल, अच्छी बॉल, थाई पे लगी है, स्ट्राइक रोटेट हुई है, दानी पहुंच गए क्रीज के अंदर। अथर ने ये नहीं किया कि वो स्ट्राइक रिटेन करते, जरूरत है कि रन जैसे भी आए आ जाएं और अब 14 दरकार हैं डाउन द लेग साइड से। कैलकुलेशन में गलती जरूर हुई और नॉर्मली कप्तान बड़े एक्यूरेट होते हैं, लेकिन इफ्तिखार जो है वो गलती कर बैठे। चाहेंगे कि इसी ओवर में मैच खत्म हो। अब ये देखना होगा नॉन रेगुलर बॉलर्स में किसको आखिरी ओवर दिया जाता है। बहरहाल अभी 5 बॉलें बाकी हैं, क्या पता इससे 5 बॉल के अंदर इस टीम को जो है वो बॉल आउट कर दें। जी बिल्कुल, अहमद के ये 9वां ओवर है और एक्सपेक्टेशन यही होगी कि ये इस ओवर में रैप अप करेंगे। दानी फेस करेंगे, अच्छा बॉल, गुड शॉट, कैच हो सकता है और ये कैच हो गया है। शाहनवाज दानी आउट और अहमद ने वो करके दिखा दिया जिसमें KRL मैच, हारा हुआ मैच जीत गई है SNGPL से। व्हाट अ परफॉर्मेंस अरशद इकबाल। सारा क्रेडिट अरशद इकबाल के उस स्पेल पे जाता है जिसने SNGPL के बैट्समैनों को, जी नो बॉल नहीं है, क्लियर है और KRL थ्रू द फाइनल। क्या बात है, ये वो शॉट था शाहनवाज दानी का, शायद वो चांस ले रहे थे छक्का मारने का मगर मिस टाइम हुआ और कैच हो गया, इजी कैच और बड़ी अचीवमेंट। KRL ने एक मुश्किल मैच जो शुरू से अप एंड डाउन पोजीशन में रहा और फाइनली अपने नाम किया एक अरशद इकबाल के बेहतरीन आउटस्टैंडिंग स्पेल की वजह से। ये वो लम्हात हैं। फेमस विन यहाँ पर KRL की, व्हाट अ कमबैक। और 198 पे जो विकेट गिरी उसके बाद 4 से 5 विकेटें कोई खास रन्स के इजाफे के बगैर गिरती गई और इन दी एंड 13 रन से KRL ने अपने मैच नाम किया। असाब की जंग थी, ना सिर्फ स्किल की बात है बल्कि टेम्परेमेंट का भी बड़ा शानदार मुजाहरा किया अरशद इकबाल ने। मैच विनिंग स्पेल और 242 स्कोर पे SNGPL की टीम बॉल आउट हो गई। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो ओवर द लाइन चले जाएंगे फेवरेट से, लेकिन ये है क्रिकेट और इस तरह से गेम पलट जाता है। एक कमाल की बॉलिंग, कमाल की कप्तानी और SNGPL मायूस उनका सफर इस प्रेसिडेंट कप में इख्तिताम को पहुंचा। 2 दिन में 2 बड़े अपसेट देखने में आए। पहले OGDCL जो अनबीटन थी पूरे टूर्नामेंट में और आज हॉट फेवरेट SNGPL जो ऑलमोस्ट सिंगल हैंड मैच जीत रही थी। सडन 2 से 3 प्लेयर आउट हुए और KRL मैच में वापसी आई और फिर पलट के उन्होंने देखा नहीं और उन्होंने फिर ये फैसला कर लिया था कि अब फाइनल में खेलेंगे PTV के अगेंस्ट। फाइनल खेला जाएगा बरोज जुमरात, एक दिन का वक्फा है और बहुत खुशी के लम्हात KRL के डगआउट में। मिस बॉलर मेंटोर हैं और SNGPL के यकीनन बहुत मायूस मोहम्मद हफीज
वो भी काफ़ी मायूस। शान मसूद अच्छी बैटिंग कर रहे थे, बहुत अच्छी उन्होंने इनिंग्स भी खेली, लेकिन इन दी एंड वेरी गुड विन, वेरी गुड कमबैक, एक ड्रामाई अंदाज में कमबैक किया और 13 रन से सेमीफाइनल अपने नाम किया। और ये वही बात हम करते हैं कि नॉकआउट है, असाब की जंग है, प्रेशर हैंडल करना चाहिए, स्किल के अलावा जो टेम्परामेंट दिखाएगा वो मैच अपने नाम करेगा, और केआरएल ने कर दिखाया। जी बिल्कुल, जिस तरह का सेमीफाइनल ये हुआ है, काफ़ी एक्साइटेड, हर ओवर में चेंज हो रही थी सिचुएशन, कभी एसएनजीपीएल की तरफ, कभी केआरएल की तरफ। असाब में जो थोड़ा से कमज़ोर पड़े वो हार गए, कहीं ना कहीं मिस कैलकुलेशन थी, जो सेट हुए हुए बैट्समैन थे उन्होंने फिनिश नहीं किया। सेम यही गलतियां केआरएल के बैट्समैनों ने की थी, मगर एसएनजीपीएल के बैट्समैनों ने उनसे नहीं सीखा, जिसका खमियाजा हार की सूरत में भुगतना पड़ा है पूरी एसएनजीपीएल की टीम को। इस तरह पीटीवी से फाइनल के लिए केआरएल पहुंच गई है। फॉलो विकेट्स, ये पहले विकेट गिरी हसीबुल्लाह की, प्लेड ऑन हुए, क्लीन बोल्ड हुए शान मसूद स्ट्रेट थ्रू द लाइन, कॉम्प्रिहेंसिवली बोल्ड। ये रन आउट उमैर बिन यूसुफ, एक बड़ा लम्हा था यहाँ पर, सेट बैट्समैन थे, बड़े आराम से रन आउट हुए, मिक्सअप हुआ और कामरान गुलाम क्लीन बोल्ड हुए, अच्छी बैटिंग कर रहे थे और एक और विकेट। शॉर्ट थर्ड मैन पर अरशद इकबाल ने कैच मुकम्मल किया। यहाँ से वो लम्हा था, ये टर्न अराउंड, ये टर्निंग पॉइंट, जब साद आउट हुए, मिस टाइम शॉट, फिर साजिद खान आउट हुए, अपरकट खेलने गए थे, लेग बिफोर अरशद इकबाल की तबाहकुन बॉलिंग, क्लीन बोल्ड किया और ये फाइनल विकेट दहानी, एक अच्छा कैच और वो लम्हा जिसने फतह दिलवाई केआरएल को। कोई गलती नहीं वकार की तरफ से और उन्होंने बैटिंग बड़ी अच्छी की। इन दी एंड 13 रन के मार्जिन से ये मैच जीत गई। ये बैटिंग कार्ड उमैर बिन यूसुफ 57 के साथ नुमाया रहे, 66 बनाए साद ने और इनकी विकेट के बाद ही जो है टीम संभल नहीं पाई। कामरान गुलाम 34-20 बनाए अवेस ने और उसके अलावा कोई खास कंट्रीब्यूशन टेल एंडर्स की तरफ से नहीं आया। इन दी एंड 48.2 ओवर्स में 242 पर ऑल आउट हुई एसएनजीपीएल। जी ये वो तबाकुन स्पेल अगर ना कहें तो ज्यादती होगी। अरशद का 10 ओवर में एक मेडन 43 रन दे के 5 आउट किए हैं, जिसकी वजह से केआरएल फाइनल में पहुंची है, ये कहा जाए तो सही रहेगा। अहमद जो थोड़े भारी रहे अपनी टीम के लिए, 8.2 बॉलों पे 60 रन दे के आउट किए, आखिरी विकेट दे के उन्होंने रैप अप किया टीम को। इफ्तिखार 10 ओवर में 46 रन, 1 आउट। उसके बाद हमजा ने 10 ओवर में 46 रन दिए, 2 आउट। और साथ में सुफियान जो टॉप ऑफ द लाइन जिनसे सबसे ज़्यादा केआरएल को उम्मीदें थी, थोड़ा सा मायूस थे कि उनसे वो बॉल नहीं हो पा रही थी, फिर भी 10 ओवर में 44 रन दिए, कोई उन्होंने मेडन नहीं किया और कोई आउट नहीं किया। इन दी एंड मेन जो चीज़ देखने वाली थी, केआरएल ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है आखिरी 10 ओवर्स में, काबिल तारीफ थी। पहली विकेट गिरी 31 पे, दूसरी गिरी 107 पे, फिर 100, तीसरी गिरी 108 रन पे, फिर 198 पे चौथी, 213 पे पांचवी, 215 पे छठी, 215 पे सातवीं, फिर आठवीं भी 215 रन पे। 4 विकेटें जो गिरी हैं वो 1 रन के ऊपर गिरी हैं और 9वीं विकेट 240 रन के नुकसान पे, 10वीं विकेट 242 के नुकसान पे। इस तरह रैपअप हुई पूरी टीम और केआरएल डिजर्विंग थी, क्योंकि आखिरी टाइम तक उन्होंने होप नहीं छोड़ी थी। स्पेशली सबनी कार्ड केआरएल ने 255 बनाया, इनको दावत दी थी एसएनजीपीएल ने टॉस जीतने के बाद। उन्होंने 4 ओवर्स में 255 बनाया, इनका कोलैप्स ही हुआ था आखिर, लेकिन वकार ने 94 रन बनाए, साथ बेग ने भी बहुत उम्दा बैटिंग की, अहमद ने 43 बनाए, 6 विकेटें हासिल की थी। मोहम्मद सलमान ने जवाब में एसएनजीपीएल की टीम ने अच्छा आगाज हासिल किया था, उसके बाद 66 पे आउट हुए। उमैर बिन यूसुफ 57 पे, शान 37 पर, लेकिन आखिरी 4-5 विकेटें जो हैं बहुत जल्दी गिरी। अरशद इकबाल स्टार परफॉर्मर और बाय फार एक बेस्ट परफॉर्मेंस गिराई, 5 for 43, 2 for 46 फॉर हमजा, 1 for 46 इफ्तिखार। इन दी एंड 242 पर सिमट गई एसएनजीपीएल की टीम और ये मैच अपने नाम किया 13 रन से केआरएल ने। और एक्साइटिंग सेमीफाइनल अपने अख्ताम को पहुंचा। वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे प्रेजेंटेशन सेरेमनी के साथ।
Assalamu alaikum and welcome once again from National Bank Stadium here in Karachi. It was time for the second semi-final between SNGPL and KRL of President's Cup one-day tournament. And what a thrilling encounter we just witnessed. A nail-biter, and in the end, it was KRL who emerged as victorious by 13 runs, and they proceed to the final of this all-important tournament. First of all, before I would like to call upon stage the man of the match of today's game, a night where we witnessed a couple of really good half centuries, couple of fast bowlers who picked up a fifer, but in the end it was that destructive spell of fast bowling that turned out to be the deciding factor. A brilliant spell of bowling from Arshad Iqbal, 5 he got today, and he is the man of the match of today. Arshad Iqbal will come forward and will collect the cash prize of 25,000 rupees and a shield from the representative of child builders and developers. Brilliant with the new ball, even better with the older bowler Arshad Iqbal. 5 in the all-important semi-final. Arshad, मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहूँगा. अरशद, नई गेंद से एक बड़ी विकेट पहले हासिल की थी और फिर एक ऐसे मौके पे कप्तान आपको लेकर आए थे जहाँ पे विकेट्स की शिद्दत से ज़रूरत थी और आपने शानदार गेंदबाजी की. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सेमीफाइनल जीत गए और यही था, ख़ुद पे कॉन्फिडेंट था और सेल्फ बिलीफ था और इसमें क्रेडिट इफ्ती भाई को भी दूंगा क्योंकि उसको मुझ पे बिलीफ था. वो मुझे जा लाते थे, मुझसे कहते थे कि आपने मुझे विकेट दिलानी और इंशाल्लाह उसमें कामयाबी हुई है. लगभग 56 रन दरकार थे जब 7 विकेट्स बाकी थी SNGPL की. क्या गुजर रहा था दिमाग में आपके और कप्तान के? बस यही है कि इफ्ती भाई एंड तक यही बोल रहे थे कि जब तक सिचुएशन से ऐसा लग रहा था कि इजी हो रहा है सब कुछ, लेकिन हमने यह था कि हमने हिम्मत नहीं हारनी और सेल्फ बिलीफ था, तो उसमें कामयाबी हुई है. आज सिर्फ 2 ही फास्ट बॉलर्स है आपकी टीम में, तो भारी जिम्मेदारी थी आपके कांधों पे, और दूसरे एंड पे देखा अहमद थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आए, तो एक्स्ट्रा प्रेशर फील हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. अहमद थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो उसकी वजह से भी जब दूसरे एंड पे अच्छी बॉलिंग हुई आपको सपोर्ट मिलती है. अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अच्छा जा रहा है. Arshad, it was a pleasure watching you play. All the best for the finals. Thank you. And now I would like to call upon stage the losing captain for Shan Masood of SNGPL. शान, a tough pill to swallow, लेकिन काफ़ी हद तक मैच में वापसी आ गए थे पहले इनिंग्स में जब कोलैप्स हमको देखने को मिला KRL की बैटिंग में. नहीं, आई थिंक देखें एंड में सिर्फ एक ही चीज़ है कि कोलैप्स हमारा कैसे हुआ और हमने मैच फिनिश नहीं किया. आई थिंक बाकी हमने बॉलिंग अच्छी की, फील्डिंग अच्छी की, हमने बैटिंग उस वक्त तक अच्छी की, लेकिन मैच फिनिश भी करना होता है और वो अनफॉर्चुनेटली हमने नहीं किया. 2 बड़ी पार्टनरशिप्स आपकी इनिंग्स में शामिल थी जब आप उमैर बिन यूसुफ के साथ बैटिंग कर रहे थे और उसके बाद जब कामरान गुलाम साद के साथ बैटिंग कर रहे थे. कहाँ आपको ऐसा लगा कि कहीं गलती हो गई बैटर्स की? आई थिंक बहुत गलतियाँ हुई हैं. हमने हमारी जो डिसीजन मेकिंग थी, जो चॉइस ऑफ शॉट्स थे उस वक्त, मैच को ख़त्म नहीं करना. आई थिंक ये एविडेंट था, टीवी में सबके सामने था, और ये एक ऐसी चीज़ है जो क्रिकेट आपको सिखाती है कि जब तक मैच ख़त्म नहीं होता दूसरी टीम मैच में होती है और आपकी जॉब होती है टू गो आउट देयर एंड फिनिश द मैच. काफ़ी अच्छा कैंपेन रहा शान मसूद, आप सेमीफाइनल तक आपने रसाई हासिल की, बट अनफॉर्चुनेटली इट वाज योर लास्ट फिक्चर ऑफ दिस टूर्नामेंट, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स. थैंक यू. That was Shan Masood, the losing skipper of SNGPL, and now the winning captain of KRL, Iftikhar Ahmed. इफ्तिखार, काफ़ी मुस्कुराहट थी आपके चेहरे पे टॉस के दौरान और अच्छा लग रहा है आपकी मुस्कुराहट को एक बार फिर देख के आज इस जीत के बाद. जी बिल्कुल, हमेशा अगर आप इतनी बड़ा जो मैच है वो जीत जाते हैं तो खुशी लाजमी होती है. इफ्तिखार, कहाँ ऐसा लगा आपको? ऐसा लग रहा था कि शायद 20 से 25 रन शॉर्ट थे जब हमने देखा कि सिर्फ 22 रन पे आपकी आखिरी 7 विकेट्स गिरी. देखो, मेरे पहले टॉस के बीच में भी कहा था कि जब लास्ट के फिनिशिंग रोल होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है इन जैसे विकेटों पे. जैसे रिवर्स शुरू हो गया बाद में, तो थ्रू आउट मेरे ख्याल में उनके पास था, और जब रिवर्स शुरू हुआ तो मोमेंटम हमारी तरफ आ गई. अब तक के लीडिंग विकेट टेकर सुफियान मुकीम आज अनफॉर्चुनेटली कोई विकेट हासिल न कर सके, लेकिन हमने देखा अरशद ने स्टेप अप किया और 5 विकेट्स हासिल की. देखो, थ्रू आउट टूर्नामेंट सुफियान बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है और अरशद भी बहुत अच्छी बॉलिंग करे, तो मेरे ख्याल में हमारी जो बॉलिंग लाइन और मतलब जो बॉलिंग हमारा लाइन है वो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि हर किसी पे आप ट्रस्ट कर सकते हो. इफ्तिखार, अब एक बड़ा मुकाबला रह गया फाइनल का, जो आपने एक बार फिर मुकाबला करना है PTV से 25 तारीख को, तो तैयार है आपकी टीम? जी बिल्कुल, मेरा हमेशा माइंड होता है चैम्पियन का, और हमेशा सोचता हूँ कि मैं चैम्पियन बनूंगा और टीम को चैम्पियन बनाऊंगा, तो इसी चैम्पियन सोच के साथ अंदर जाएंगे. चलें, इट वाज प्लेजर टू वॉच यू प्ले इफ्तिखार अहमद, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द ऑल इंपॉर्टेंट फाइनल. थैंक यू जी, थैंक यू.
All right, so it was Iftikhar Ahmed, the skipper of KRL, the winning team of today's semi-final, the second semi-final of Champions Impact Presidents Cup one-day tournament. So it's going to be KRL taking on PTV on the 25th of December, where we are going to meet you once again here at National Bank Stadium in Karachi.
एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं नेशनल बैंक स्टेडियम में पोस्ट मैच शो के साथ प्रेसिडेंट कप का सेकंड सेमीफाइनल अपने अख्ताम को पहुंचा और ड्रामाई अंदाज में इसका अख्ताम हुआ और KRL ने ये मैच अपने नाम किया। 13 रन से ये मैच जीत के फाइनल में जगह बनाई, जो कि बरोज़ जुमरात इसी ग्राउंड में खेला जाएगा। मेरे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर। खुर्रम, व्हाट अ मैच! मतलब एक तरफ KRL पहले मैच में थी, उसके बाद SNGPL क्रूज करते हुए जा रही थी, लेकिन इन दी एंड बड़ा अच्छा कमबैक। और क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कमबैक इस अंदाज में होगा इस सेमीफाइनल में? जी बिल्कुल, थ्रू आउट अगर मैच पहली बॉल से देखें टिल आखिरी विकेट तक कहीं ना कहीं वेर एंड टेयर रहा पूरे मैच में। एक पल्ला रहा SNGPL का, एक पल्ला रहा KRL का, फिर वो रिवर्स हुआ, फिर मिस्टेक्स हुई। अच्छा, एक चीज़ देखने को है कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा जो KRL के बैट्समैनों से गलतियाँ हुई हैं वो SNGPL के बैट्समैन ने ज़्यादा की हैं, जिसकी वजह से वो मैच लूज़ कर गए। वरना एक टाइम में ऐसा लग रहा था पूरे मैच से बाहर हो गए। फिर अरशद ने जिस तरह की बॉलिंग की है, वो स्पेल काबिले तारीफ़, रिवर्स स्विंग देखने को मिली और रिवर्स स्विंग जगह से देखने को मिली। काफ़ी अरसे से ये चीज़ मिसिंग थी। और खुशाइन बात ये है कि अरशद जिस तरह क्रिकेट में वापस आया अभी इंजरी के बाद, उन्होंने अपनी रिदम, एक बॉलर जो होता है वो रिदम ढूंढ रहा होता है, उसको चाहिए होता है एक बूस्ट चाहिए था, और ये एग्जैक्ट वही मैच था जिससे उनको बूस्ट मिला। उनका एक ये कह लेना गियर शिफ्टिंग मैच, तो इनकी तारीफ़ करनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह के इनके बैट्समैन हैं, ख़ास तौर साथ, उन्होंने जिस तरह अर्ली 10 ओवर्स खेले और एक बेस बनाने की कोशिश की, क्योंकि वो इस टाइम सीज़न में सबसे ज़्यादा रन्स करने वाले प्लेयर हैं। और उनकी तारीफ़ करनी पड़ेगी, बैटिंग में उनकी तारीफ़ करनी पड़ेगी। फिर कहीं ना कहीं गलतियों को जिस तरह इन लोगों ने ग्रैब किया है KRL ने, ख़ास तौर आखिरी 7 ओवर से 8 ओवर का जो मैच हुआ है, अनबिलीवेबल। बड़े टाइम के बाद इस तरह का मैच देखने को मिला है। अच्छा, कोलैप्स दोनों तरफ से हुआ, पहली इनिंग्स में भी और दूसरी इनिंग्स में भी। लेकिन पहली इनिंग्स आपको लगता होगा कम से कम 300 हमें लग रहा था कि स्कोर जाएगा, लेकिन सेकंड इनिंग्स में ज़ाहिर है चेस करते हुए अलग प्रेशर होता है, उसके बाद वो संभल नहीं पाई SNGPL की टीम। जब उनके पास कोलैप्स हुआ, थोड़ा बहुत टेलेंडर्स ने कोशिश की, लेकिन आपको लगता है कि वो वहाँ पे उनसे फिर वो अपना जो रास्ता भूले तो फिर वापस नहीं आ सके? कहीं ना कहीं काबिल तारीफ बॉलिंग की थी। और ये भी अगर हम ना बोलें तो गलत होगा कि बैट्समैनों ने गलत शॉट्स खेले, गलत टाइम पे खेले। जब आप 50 रन क्रॉस कर जाते हैं, सेट हो जाते हैं, टाइम ले लेते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप अपनी टीम को फिनिश करके दें वो मैच। कहीं ना कहीं वो 7 का शॉट नहीं बनता था। कामरान गुलाम की वो जो बॉल थी वो कट की नहीं थी, जो वो कट खेलने गए, और वो उमैर बिन यूसुफ का रन आउट, वो बेसिकली मैच में KRL को लेके आए। एक वो बोलते हैं मिस जज रन आउट, थोड़ा सा आई कांटेक्ट, जिस तरह शान के साथ वो रनिंग कर रहे थे वही चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे 7 के साथ, और सडन वो चीज़ एकदम हुई और वो KRL मैच में वापस आई। ओके, खुर्रम हमारे साथ मौजूद हैं मैन ऑफ द मैच, द शो स्टॉपर अरशद इकबाल। अरशद, बहुत बहुत मुबारक हो, शानदार परफॉर्मेंस, अब तक की आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस होगी आपके करियर की। हाउ डू यू रेट दिस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ऐसे मैच में और ऐसे टाइम पे अल्लाह ताला ने ऐसे परफॉर्मेंस दिलाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। और परफॉर्मेंस वही होती है जिसकी वजह से आपकी टीम जीती है, और इतने बड़े स्टेज पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। अच्छा, क्या बातचीत आपकी इफ्तिखार अहमद से हो रही थी ड्यूरिंग द मैच? क्योंकि 4 for 198 था, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि बैटिंग साइड हॉट फेवरेट्स है, तो वहाँ पे क्या डिस्कशन थी, क्या प्लान था? स्पेशली साजिद खान का डिसमिसल, वो ऐसा लग रहा था कि प्लान डिस्कशन था, आपने बाउंसर कराई, उसके बारे में कुछ बताएं। जी बिल्कुल, इसका क्रेडिट मैं दूंगा इफ्ती को, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा है कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट जैसे इस टीम को चला रहे। और इस मैच में हमने कहीं पे भी हिम्मत नहीं आ रही। मेरी इफ्ती भाई से अंदर बात हो रही थी, हमने कहा इधर एक आउट करें हम इंशाल्लाह, तो नेक्स्ट जो न्यू बैट्समैन आएगा उसके लिए इतना आसान नहीं है। तो ये है कि हम जो प्लान्स करते रहे उसी में कामयाब भी होते रहे, तो अल्लाह का शुक्र है रिजल्ट आपके सामने। अपने 5 खिलाड़ी आउट किए, एक फाइफर है, किसी भी बॉलर के लिए बड़ी बात होती है। आपका फेवरेट डिसमिसल कौन सा था? अच्छा, इसमें अभी मैं बताऊं कि वो जो अवैस को मैंने आउट किया था ना लास्ट में, उसने जैसे चलाई, क्योंकि वहाँ पे स्टिल लग रहा था कि 15-16 रन रह गए, तो वो था फेवरेट था मेरा। खुर्रम, कुछ पूछना चाहेंगे अरशद? जी बिल्कुल अरशद, कोई ख़ास जहन में प्लानिंग होगी, क्योंकि PTV का मैच आप लोगों ने देखा था और ये मैच आपका उनके मैच के बाद हुआ था, तो कहीं ना कहीं अब उनकी बैटिंग को देखते हुए कोई ख़ास प्लान या कोई नई स्ट्रेटेजी, ऑब्वियसली बात है स्ट्रेटेजी तो करेंगे कि यही रिवर्स स्विंग के साथ कोई अपने बॉलर्स को गाइड करने की कोशिश करेंगे जो आपके दूसरे फास्ट बॉलर पार्टनर हैं? देखिए खुर्रम भाई, इंशाल्लाह सिंपल जो हमारे प्लान्स है उसी के साथ जाएंगे, जो जैसे थ्रू आउट चलाते आ रहे हैं, जिस प्लान्स के साथ जिसके साथ आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसी के साथ सिंपल प्लान के साथ फाइनल में जाएंगे, और इंशाल्लाह अपने आप पे बिलीव रखेंगे और इंशाल्लाह फाइनल
जीतेंगे कहीं ना इंशाल्लाह। कहीं कुछ ना कुछ चेंजिंग की तवक्को कर सकते हैं हम कि इस टीम में आपको लगता है कि थोड़ा सा इफ एंड बट यहाँ पे हम लोग वीक हो रहे थे, हमें ये चीज़ बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि एज ए सीनियर आप टीम मैनेजमेंट से बात करेंगे, इफ्ती से आप बड़े क्लोज हैं। देखिए खुरम भाई, थ्रू आउट द टूर्नामेंट अगर हमारी टीम की आप देखें तो थोड़ा सा हम मिडिल ऑर्डर में, जो जाहिर सी बात है ऑलमोस्ट प्लेयर्स हमारे देखें तो यंग प्लेयर है, इतना एक्सपीरियंस कोई नहीं है। थोड़ा सा उधर हम ले कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर्स में कि जल्दी, जैसे इफ्ती भाई टीम को कहते हैं कि ये 50 ओवर बहुत ज़्यादा ओवर्स होते हैं, तो आप 50 ओवर्स खेलो पूरे, तो जब बैट्समैन खेलते तो अच्छा खासा टोटल होता है, तो उधर मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सा हमें ज़रूरत है कि उस उधर काम करें। चलें, विश यू गुड लक। थैंक यू अरशद, बहुत बहुत मुबारक एक दफ़ा फिर, और आपको बेस्ट ऑफ लक फाइनल के लिए। और पीटीवी से मुकाबला यकीनन एक बहुत ही तगड़ा मुकाबला होगा बरोज़ जुमरात। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। अच्छा खुर्रम, अब है फाइनल पीटीवी वर्सेस केआरएल। क्या ये वो दो टीमें थी जो आपने प्रेडिक्ट की थी, ये आपको अब थोड़े सरप्राइज हुए? नहीं, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा था कि प्रेशर सिचुएशन के मैचेस से और इन गेम्स की एक रिवायत रही है कि जो टीम कम गलती करती है, ज़्यादा फोकस्ड होती है, वो टीम थ्रू करती है। इसमें मैटर नहीं करता, ओजीडीसीएल की एग्जांपल सबसे बड़ी है, वो पूरे टूर्नामेंट में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली और अनबीटन थे। थोड़ी सी गलती की और थोड़ा सा कैजुअल हुए, टोटल को देख के 242 कुछ भी नहीं है, इजीली चेस हो जाएगा। टॉप रन्स गेटर हमारे दोनों ओपनर हैं और कहीं ना कहीं वो उनको रिलैक्सेशन वो हार की सूरत में एक्सेप्ट करनी पड़ी। तो यही वो दो टीमें, आज भी देख ले, एसएनजीपीएल एक टाइम पे लग रही थी 7 से 8 विकेटों को इजीली मैच जीतेगी, मगर एकदम से पासा चेंज हुआ और केआरएल मैच जीत गई। अच्छा खुर्रम, बहुत सारी गलती हुई दोनों तरफ से, कुछ अच्छे कैचेस भी आए, रनआउट्स भी हुए। 3-4 की मोमेंट्स आपको पूरे मैच में अगर आप निकाले तो कौन से होंगे? अरशद के जो आखिरी जो 2 आउट है ना, स्पेशली अवेस का, जिस तरह की वो हिट मारना जा रहे थे और वो हिट कनेक्ट हो जाती तो वो 2 शॉटों की गेम थी। और उसके अलावा 7 को जिन्होंने जो आउट किया, तो ये वो ऐसे थे, क्योंकि देखें एक सेट प्लेयर को आप प्रॉपर ट्रैप करके आउट कर रहे हैं, इसका मतलब आप हाजिर दिमाग हैं प्रेशर सिचुएशन में भी। तो ये 2 वो थे की, और तीसरा जो शॉट कवर पे रन आउट किया है, वो फील्डर की टोटली हाजिर दिमागी थी कि ये टैप करके रन लेंगे और मैं अगर जल्दी बॉल पे आ गया, जो कि दूसरी टीम के फील्डर्स इजीली सिंगल बनवा रहे थे स्क्वायर लेग पे, वो शॉट कवर पे, स्क्वायर लेग पे, पॉइंट पे, वही चीज़ उन्होंने रीड किया और 2 गेंद पहले वहीं से सिंगल मारा था और तीसरे पे जब उन्होंने अटेम्प्ट किया तो वो रन आउट में कन्वर्ट हुआ। ये हाजिर दिमागी है और वही टीमें कामयाब होती हैं जो जल्द से जल्द सीखें। तो वो चीज़ दिखी और गलतियां कम की तो केआरएल के हक में गई सी जीत। अच्छा, फाइनल में आप 2-3 प्लेयर्स किसको हाईलाइट करेंगे जो परफॉर्म करते हुए आपको नजर आ रहे हैं? देखें, दोनों टीमें ऐसी हैं और ये टीमें अपने एक आध प्लेयर पर डिपेंड नहीं कर रही हैं। जो कह सकते हैं कि जिस तरह अभी साद की फॉर्म है, साद ने जिस जिम्मेदारी से बैटिंग की उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। ये साद से मुझे बड़ी उम्मीद है। अरशद है बॉलिंग में, बॉलिंग, और सुफियान मुकीम का अगर मैं नाम ना लूँ तो ज़्यादती होगी। आज मैं उससे बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था, आज का डे ख़त्म हुआ जीत की सूरत में, अच्छी बात है, मगर टॉप विकेट टेकर उससे टीम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी। तो ये 3 मुझे इनकी तरफ से लगते हैं कि ये अच्छा परफॉर्म करेंगे अपनी टीम के लिए। और अगर दूसरी तरफ से पीटीवी को देखा जाए, उनका एक यूनिट है और यूनिट में कोई भी, जिस तरह जहादात ने फ्रंट से आके लीड किया और उस टाइम ऑलमोस्ट मैच छोड़ दिया था, जहादात ने जिस तरह आके 65 रन की इनिंग खेली थी, वो एक काबिले तारीफ थी। इस तरह के उनके पैकेजेस हैं, किसी एक पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, यूनिट होके बंच होके खेल रहे हैं। तो दोनों टीमें अच्छा कंपटीशन खेलने की कोशिश करेंगी। इन दी एंड वही बात आती है, जो टीम कम गलतियां करेगी वो जीतेगी। और फैसल अकरम वर्सेस सुफियान मुकीम होगा फाइनल में। दोनों रिस्ट स्पिनर हैं, दोनों को विकेट सूट करती है, दोनों बड़े परेशान करते हैं बैट्समैनों को। बिल्कुल, और दोनों पाकिस्तान का डोर नॉक कर रहे हैं और दोनों को अपॉर्चुनिटी मिलती भी है, फिर वहाँ से वह स्विच होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। अगर फाइनल में आप फाइफर लगाते हैं या एक आउटस्टैंडिंग अरशद जैसा स्पेल लगाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है क्रिकेट बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी देख रही है और कहीं ना कहीं दरवाजे नॉक होंगे और शायद दरवाज़ा खुले तो आप टीम की शमूलियत भी हासिल करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम मंसूर। और सेकंड सेमीफाइनल का ये पोस्ट मैच शो अख्ताम को पहुंचा। केआरएल ने ये 13 रन से मैच जीत के अपने नाम किया और अब फाइनल अब खेला जाएगा बरोज जुमरात, पीटीवी वर्सेस केआरएल, इसी ग्राउंड नेशनल बैंक स्टेडियम में। मुझे इजाज़त दीजिए अपनी एंटायर प्रोडक्शन टीम के साथ। हमें ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।